ಈಗಾಗಲೇ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿರುವಂತಹ ವೀರ ಮಾರುತಿ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯನಾಥ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ದಯವಿಟ್ಟು ಪಿಚ್ನ ತೆರಳಿ ಪಿಚ್ನ ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಗಳು ಪಿಚ್ ಬಳಿ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ದಯವಿಟ್ಟು ಪಿಚ್ನ ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವೀರ ಮಾರುತಿ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯನಾಥ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶೇಖ್ ಸಮಸ್ತ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಶುಭೋದಯ, ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವರ ಪರವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಾ, ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವಂತಹ ಅಥವರ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 5 ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಅಥವರ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 5 ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ವೈದ್ಯನಾಥ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ವೀರಮಾರುತಿ ತಂಡದ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಆಟವನ್ನು ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಿ ಪಿಚ್ನ ಎರಡು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲಾಗಿ ನಿಂತು ಈ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಾಗಿ ತ್ರಿಕಾಲ್ ಈ ತಂಡದ ಮಾಲಕರಾದಂಥ ಧೀರಜ್ ಇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮಗೆ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇವರ ದಿವ್ಯಾಸ್ತದಿಂದ ಅಮೃತಾಸ್ತದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ
ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೂ 2 ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವವರು ಅಕ್ಷಿತ್ ಅತ್ತಾವರ್ ಹಾಗೂ ಅನಿಲ್ ಅತ್ತಾವರ್. ಇವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಾಗಿ ಸುನೀಲ್ ಮಂಕಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪಂದ್ಯ ಈಗಾಗಲೇ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಗುರು ಹಿರಿಯರ ದೈವ ದೇವರುಗಳ ಅನುಗ್ರಹ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಅತ್ತಾವರ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 5 ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಮೂಡಿಬರಲಿ. ಯಾವುದೇ ವಿಘ್ನವಿಲ್ಲದೆ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ವಿನಾಯಕನ ಅನುಗ್ರಹ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಇರಲಿ. ಈ ಪರಿಸರದ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳಾದಂತಹ ಮಾರಿಗುಡಿ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಿಯ ಅನುಗ್ರಹ, ಹಾಗೆ ಕೊರಗಜ್ಜ ದೈವ ಕೋಟೆದ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನೆನೆಸುತ್ತಾ ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಅತ್ತವರ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 5. So warm welcome, good morning everyone, welcome back for the most prestigious Attavara Premier League season 5, which is proudly organized by Sri Durga Friends in this historical UCG cricket ground. And we have presence of chief guests for this inaugural ceremony, and Dheeraj, the owner of Trikal Cricketers, will going to inaugurate this tournament. We have our chief guest Akshit Attavar, Anil Attavar, Sunil Mankistan, and BJP leader Rupa will go into witness this inaugural ceremony of prestigious Attavara Premier League season 5. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ನಾವು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಾವು ತಿಳಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ಗುರು ಹಿರಿಯರ ಅನುಗ್ರಹ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮಗೆ ಬೇಕು. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಒಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಉದ್ಘಾಟನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಅತ್ತಾವರ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 5 ಈ ಒಂದು 2 ದಿವಸ ನಡೆಯುವಂಥ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಅದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮೂಡಿಬರಲಿ. ಯಾವುದೇ ವಿಘ್ನವಿಲ್ಲದೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೂಡಿಬರಲಿ. ಎಲ್ಲ ಆಡುವ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಿಂದ ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ದಯಮಾಡಿ ಮುಂದುಗಡೆ ಬರಬೇಕು. ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಒಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಧೀರಜ್ ಇವರು ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಒಡೆಯುವ ಮೂಲಕ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಅಂದರೆ ಅದು ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರಲಿ ಎಂದು ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮಂ ಗುರು ವಿಷ್ಣುಂ ಗುರುದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಗಜಾನನಂ ಭೂತಗಣಾದಿ ಸೇವಿತಂ ಕಪಿಕ್ತಜಂಬೋ ಫಲಸಾರ ಭಕ್ಷಿತಂ ಉಮಾಶತಂ ಶೋಕ ವಿನಾಶ ಕಾರಣಂ ನಮಾಮಿ ಶ್ರೀ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಪಾದ ಪಂಕಜಂ. ಓಂ ಗಣಪತಾಯ ನಮಃ. ಉದ್ಘಾಟನವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದಂಥ ಧೀರಜ್ ಇವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.
ಇದೀಗ ಬಂದಂಥ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ನಾವು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿದಂಥ ಆಟಗಾರರ ಪರಿಚಯ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ವೈದ್ಯನಾಥ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ವೀರಮಾರುತಿ ಈ ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಈ ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇನಾಗ್ರಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲೇಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವೈದ್ಯನಾಥ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ವೀರಮಾರುತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್, ಬಂದಂಥ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದಂಥ ಧೀರಜ್ ತ್ರಿಕಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಇದರ ಮಾಲಕರು, ಇವರಿಗೆ ನಾವು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇವರಿಗೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಇವರು ಹೂವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದಯಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದರ ಅಕ್ಷಯ್ ಇವರು ಹೂವನ್ನು ನೀಡಿ ಅವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ವಾರ್ಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜಿಯಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವ ಇನ್ನೂರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಅಕ್ಷಿತ್ ಅಥಾವರ್, ಇವರಿಗೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಇವರು ಹೂವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ವಾರ್ಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಫಾರ್ ಅಕ್ಷಿತ್ ಅಥಾವರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜಿಯಸ್ ಅಥಾವರ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2024. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಅನಿಲ್ ಅಥಾವರ್, ಇವರಿಗೆ ರಾಘು ಇವರು ಹೂವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದೆ. ರಾಘು, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೆಮೆಂಡಸ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಇನ್ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್, ದ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಸೊ ವಾರ್ಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಫಾರ್ ಅನಿಲ್ ಅಥಾವರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜಿಯಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಸುನಿಲ್ ಮಂಕಿಸ್ಟ್ಯಾನ್, ಇವರಿಗೆ ಅವಿನಾಶ್ ಇವರು ಹೂವನ್ನು ನೀಡಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ವಾರ್ಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಫಾರ್ ಸುನಿಲ್ ಮಂಕಿಸ್ಟ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜಿಯಸ್ ಶ್ರೀ ಅಥಾವರ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 5. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಾಗಿ ರೂಪಾ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇವರಿಗೆ DJ ಲಾರಾ ಇವರು ಹೂವನ್ನು ನೀಡಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದ BJP ಲೀಡರ್, ದ ವೆರಿ ಆಕ್ಟಿವ್ BJP ಲೀಡರ್, ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕರ್ ರೂಪಾ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜಿಯಸ್ ಅಥಾವರ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 5. ಎಸ್, ಈಗ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುವಂಥ ವೈದ್ಯನಾಥ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೀರಮಾರುತಿ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ದಯಮಾಡಿ ಮುಂದುಗಡೆ ಬರಬೇಕು, ಪಿಚ್ನ ನಡುವೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟ ಆಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ. ಅಕ್ಷಿತ್ ಇವರು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಲವ್ಲಿ ಲುಕಿಂಗ್ ಡ್ರೈವ್ ದೇರ್ ಫ್ರಮ್ ಸುನಿಲ್ ಮಂಕಿಸ್ಟ್ಯಾನ್. Akshit bowling right arm over the wicket. A lovely shot. Beautifully plays it down to mid-wicket boundary for 4 runs. So very good start here for Attavara Premier League Season 5. So Akshit Attavara will go into bat and Sunil will go into ball. So nicely driven. So thank you very much. Now Trikal will go. Trikal cricketers owner Dheeraj will go into face the delivery, the inaugural delivery. Lofted that one just over the head of the bowler. So ಎರಡು ತಂಡದ ನಾಯಕರು ದಯಮಾಡಿ ಪಿಚ್ನ ನಡುವಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಚಿಮ್ಮಿಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ the two teams captain, please report to the middle of the pitch for the tossing ceremony. I request chief guests, please complete the formalities of tossing ceremony, the inaugural tossing ceremony. Trikal, Rupa madam, ಹಾಗೆ ಅಕ್ಷಿತ್ ಅಥಾವರ್ ದಯಮಾಡಿ ಅವರು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು.
ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯಾಟದ ನಾಣ್ಯಚಿಮ್ಮಿಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ರಘು ಇವರು ನಾಣ್ಯಚಿಮ್ಮಿಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಟೀಮ್ Vaidyanath, the captain of Vaidyanath, Raghu, won the toss of this morning and inaugural match. They elected to field first against team Veera Maruti. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಈ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ, ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ presence in this prestigious Attavara Premier League Season 5 in this inaugural ceremony. We'd like to give special thanks to all the dignitaries, the chief guests. We are thankful and grateful for your presence in this prestigious Attavara Premier League Season 5, and thanks to all the chief guests. Dheeraj, Abjit Attavara, Anil Attavara, Sunil Pakistan, as well as Rupa Madam. Thank you very much for your presence for this prestigious Attavara Premier League 2024 Season 5.
Welcome to the match and welcome to the Attavara Premier League Season 5 2024 and Sri Durga friends presenting this prestigious cricket tournament in this historical UCG cricket ground, APL Season 5. So 8 teams altogether will going to take part in this prestigious cricket tournament. Babagudda Tigers, Gude Bulls, Arasu Warriors, and team Attavara Tigers, Vaidyanath Warriors, Veera Maruti Strikers, and Attavara Warriors are the teams are taking part in this prestigious cricket tournament, and everything is ready for the first match of the day number 1 of Attavara Premier League Season 5. The two teams will going to take each other in the first match of the league stage matches. Vaidyanath Warriors will take Veera Maruti in their first match, and wait and see which team will going to start their journey with the victory. And level of competition is going to be very high. The umpires for this match is walking towards the middle. Umpire Roland Pinto along with him umpire Nasir Bajal, the two very good umpires are walking towards the middle. And umpire Roland Pinto, the so experienced campaigner as far as umpiring is concerned, got 39 years of experience, doing his 40th year in the field of umpiring. Along with him Nasir Bajal, one more experienced umpire. Along with the two umpires, we have Suresh Mudabidre in our commentary box as the third umpire. After winning the toss, captain of Vaidyanath, they elected to field first. So this is the match number 1, the inaugural match, and after this match, a match will be played between Attavara Strikers versus Attavara Tigers. So that I request both the teams please get ready for the next match, because we have a busy schedule, and so that your cooperation is much required for completing the matches in their scheduled time. So please note the match will be of 4 hours. In that 4 hours, first over going to be a mandatory power play, and in that power play, not more than 2 fielders outside the circle, and after that power play, not more than 5 fielders outside the circle. That is the fielding restriction of the power play. And after the power play is concerned, of course 4 overs means 4 bowlers to be used. 1 over will go on, 1 over for each bowlers to be given, and that means 4 overs, 4 bowlers to be used, compulsory. In the league stage matches, if the match will be ended in a tie, the points will be shared, and the net run rate which is going to be implemented in this league stage matches. This is the playing condition of this prestigious cricket tournament, Attavara Premier League Season 5, and everything is ready here for the first match. I request opening batters, please go for bat immediately. Daimadi Veera Maruti ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು.
So good morning everyone, good morning to all the viewers of YouTube channel. Mangalore Media having a live telecast of this cricket tournament under the great leadership of Kamal of Adimeshwari cricketers, and everything is ready here for the live telecast of this cricket tournament, and Mangalore Media having a live telecast, one of the most popular YouTube channel as far as sports and games is concerned. And umpires Roland Pinto, along with him umpire Nasir Bajal. And in our commentary box, as always, in UCG Cricket Ground, in commentary box, myself Sajid Salian, and wishing all cricket teams, 8 teams, best wishes. Good morning to everyone, and welcome for this prestigious cricket tournament. And my friend Mr. Gopi will go into join in commentary box in our national language, Hindi language. And as a scorer, we have Ratish Raj, and one more very popular figure as far as the scoring department is concerned. And Hemachandra in scoreboard will be, of course, scoreboard operator as well as and groundsman for this Attavara Premier League season 5. So everything is ready here for the day number 1, the first match, the inaugural match. So Veera Maruti takes on Vaidyanath Warriors, and Vaidyanath, after winning the toss, Captain Raghu elected to field first, and wait and see how well his team will going to justify the addition of their captain. The opening batters there made their way to the middle of the pitch, Dhanush and Avinash. Dhanush is a striker, the Avinash is a non-striker. And bowler will go into start the proceedings from the commentary box, and Ajay will be the bowler. ದಯಮಾಡಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಆಡುವಂಥ ಅತ್ತಾವರ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅತ್ತಾವರ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರ ಗಮನಕ್ಕೆ, ನಾಯಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ, ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಈ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗುವುದರೊಳಗೆ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಅತ್ತಾವರ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅತ್ತಾವರ ಟೈಗರ್ಸ್, ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ. ಪಂದ್ಯಾಟದ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಒಳಗೆ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. So first man of the tournament, and batter played that one twisted bat down to deep backward point region, and before the fielder from short backward point region to run back towards a deep backward point region to cut it off just inside the boundary line. Ample time for the batter Dhanush to complete that 2 valuable runs. So positive start here from Dhanush, got 2 runs from his bat, and the first run which came from the bat of Dhanush of this tournament. Driven, nice looking drive straight down the ground, down to deep long on region. Protection is given in the deep so that Dhanush have to settle for the single, and with that single, scoreboard moves on to 3 on the board without loss of any wicket. Very good start there from Dhanush, is looking very confident and strikes the ball very well. One is unorthodox cricketing stroke, second one is orthodox cricketing stroke down to deep long on, and that brings left-hand batter Avinash into strike now. Left and right combination for the team of Veera Maruti. Right arm balls outside. Umpire says it's a dead ball. Batsman is not ready in the occasion. Umpire Roland Pinto called immediately it's a dead ball. And the short third man, there is a short cover point, extra cover, short mid off. Fielder down at deep long on, that is offside region. Fielder short fine leg, square leg, short mid wicket, deep mid wicket. The fielders are in the deep for left-hand batter. This time nicely plays it down to extra cover, but couldn't manage to convert that into any run there because of that fielder move towards the ball very quickly, denying this runs from these 2 batter. No runs scored. Score remains on 3 without loss of any wicket. Ajay to continue from the commentary box, and balls are too much across the line after delivery, exposing his leg stump, and ball did the trick around the legs of the batter. Avinash departs for a duck. Ajay strikes with a beautiful delivery, absolutely curving around the legs of the batter, and the batsman misjudging the line of the ball, just exposing his stumps, missed it completely. The great delivery to receive the wicket of Avinash. Lovely piece of bowling from the bowler.
Just have a look at that one in a replay. How well the ball is passed around his legs. That was absolutely a fantastic delivery. Of course, he bowled off cutter, but it's become the leg cutter for left-hand batters. But he couldn't manage to judge that one very well, and pays the penalty for that. And bowler strikes with the beautiful delivery, Ajay. And after complete little correction, first wicket is back into pavilion at the score of 3. The new batter is just number 21, Atul. Is the new batter in. The power play, and probably in the 4 overs game, the power play is going to play a big role. And most of the team wanted to capitalize this, the fielding restriction in this first over of the power play. This time went for a drive, couldn't manage to get that one right from the middle of the bat. But still Atul will going to get the single for that before the fielder from short third man region to return the ball. And he completes a single. He got his first run from the bat. Atul is off the mark. Total score now moves on to 4 for the loss of 1 wicket. That brings the batter strike into strike. The opening batter Dhanush will go into face. Across the line, appeal for leg before wicket. In fact, up the line, certainly outside the line of off stump. D1. I think the opportunity is created for the run out, but fielder misfielded that one, so that what the batters completed single in the form of leg by. So first over completed. After completion of first over, searching for the right track, Veera Maruti are 5 for the loss of 1 wicket. The slow start from opening batters. Of course, they lost 1 wicket. The opening batter, Avinash, is back into pavilion without contributing any run from the bat. So next match, Attavara Strikers and Attavara Tigers will go into play. So that I request all the players please complete the formalities of signatures as soon as possible. Raghu brought into attack from the Sri Rama Bhajana Mandira end to bowl that second over. After that power play, the fielding restriction is over. So that the spread out field, the 5 fielders outside the circle, just I want to see. For the field set here for the right-hand batsman Dhanush, there is a fielder at wideish long on, 1 fielder down at mid-wicket and 1 down at deep square leg, and the mid-wicket coming almost in front of square. Okay, now mid-on going back to deep long on, there is a wideish long on, deep square leg, deep extra cover and deep backward point region. So Raghu will go into operate it. He is a birthday boy today. He is celebrating his birthday, so that on behalf of all cricket lovers, wishing him a very happy birthday for Raghu, one of the most popular cricketer as far as underarm cricket is concerned. But he starts with the white signal umpire, and on behalf of all officials, wishing him a very happy birthday to Raghu. Absolutely fantastic all-rounder, and one who represented for KCCR Kadri. And more than anything else, is a very good fielder. And second wide of this over, and the birthday boy starts this over with the 2 warm-up delivery of the morning. The 7 for the loss of 1 wicket. Raghu to continue from the far end. 7 for the loss of 1 wicket. The captain of the side. This time a very interesting cricketing stroke across the line. He plays it down to mid-wicket region. Before the fielder from mid-wicket to run across to his right to field the ball. Ample time for Dhanush to complete that 2 valuable runs. Dhanush played some interesting cricketing stroke, improvising cricketing stroke, just moving to his off stump across the line. Not from the middle of the bat, but good enough because of that nature of the ball which is used for this particular tournament is pretty hard. The training ball which is used, so that ball which is coming nicely to the bat. What I'm talking about, the nature of the ball is always going to create the problem for the bowlers, like even the bowlers like Raghu will not going to survive from that tremendous strike coming from the blade of the batter Dhanush there. I've already mentioned it's a little margin for error. And what a great hitting that one coming from the blade of Dhanush. I've already mentioned this is a training ball. The ball which is coming very nicely to the bat. Any small mistake, the batter will go into punish. Absolutely magnificent struck
The first sixer of this tournament, Attavara Premier League Season 5. Registered there by Dhanush for his team. Very important 6. And scoreboard jumps into 15 on the board. This time ball him, clean him up. Good comeback here by Raghu. I don't know why the batter tried for that unorthodox cricketing stroke. After you are getting that very good cricketing stroke to get that distance, to get the 6. It's not a good shot selection when you are absolutely right in the track of hitting the strokes in the kind of the orthodox cricketing stroke. He's just wanted to go for unorthodox reverse stroke, and Raghu is knowing for the comeback. He knows exactly what to do in this situation. After that, he's punished badly. He came back very strongly with that fantastic bowling, which is leg cutter, off cutter, in fact, and he bowled a leg cutter, and ball hits leg stump of the right-hand batter Dhanush back into pavilion. It's 15 for the loss of 2 wicket. New batter Madhu came into bat, and he will go into face Raghu. Even though a little bit expensive in this over so far, Raghu conceded 10 runs in that 2 wides and 1 6, and couple of runs which is taken in this over. Raghu to continue. Beautiful leg cutter in dedication. Defeats the bat. Misfield there by the fielder. The short third man fielder. The grabbing the opportunity to go for the single, to win the single. Bicycle umpire Nasir. And with that extra scoreboard moves on to 16 for the loss of 2 wicket. And the over number 2 is in progress. Atul to face. 5th time in this over. Raghu to continue. Very nicely played that one. Very interesting. Cricketing stroke there from Atul there. Coming back to the second for that fumble. Lovely running between the wicket. This is what they need to see. Atul just observing that fielder very well. Slight bit of fumble. Grabbing that opportunity. Converting that single into 2. And total score now moves on to 18 for the loss of 2 wicket in the over number 2 is in progress. Raghu to continue from the far end. Right arm over the wicket. Lovely shot. Protection is given in the deep cow point region. The batsman will go in to look for the second. But very good return coming from the fielder from the deep cow point region, so that they're not interested for the second. Only a single. Over number 2 completed. Expensive over from Raghu. The birthday boy is welcomed with some big runs by the opposition team. 14 runs came from that over, even though you got a wicket. But I think the 14 runs is good enough for team Veera Maruti to get that get back into this match. After that slow start in the first over, they got a 5, lost 1. In the second over, of course they lost another wicket, but they got a 14 valuable runs. What the runs they really wanted in the power play, they got that runs after the power play, and against one of the top bowler, and against the captain of the opposition, Vaidyanath. It's 19 for the loss of 2 wicket. Santosh to ball that 3rd over of the innings of team Veera Maruti. The batter are in the middle, Atul and Madhu. The experienced campaigner Madhu is in non-strikers end, and Atul wanted to get eye in and get some good score for the team, because it's a 4 overs match, and only 2 overs remaining now. 12 balls remaining, excluding wides and no balls. Away from us, Santosh to continue. 3rd over of the innings of the team Veera Maruti with the jersey number 8. Short run up, just in one step bowling. That was absolutely flum in front of wicket, no doubt at all. That was a slight leg cutter there from Santosh, and batsman Atul playing across the line of the delivery, and is absolutely no doubt at all. He is a flum in front of wicket. And you can't play that across the line when the ball pitching in a line. And Atul pays the penalty for that. Santosh strikes with a huge wicket. It's 19 for the loss of 3 wicket.
The one-step bowling means, of course, some bowlers are playing their regular 30-yard matches, sevens, 30 yards, where it is no run-up in the bowling. Where you are standing, you need to bowl. This is what we are seeing in the present cricket. The more and more 30-yard matches is playing. The only reason is lack of the grounds available. Something to continue, and Deepak is a new batter and the left-hand batter is in, and wait and see how Santu will go into bowl. He is bowling now round the wicket, changing his angle. Nicely plays it down to short cow pointage and just left of the umpire, and with that single is off the mark. Deepak is off the mark, and technical cricketing stroke in the dedication there from Deepak to open the account from his bat, and scoreboard moves on to 20 for the loss of 3 wicket in the over number 3 is in progress. Left and right combination, little bit of hard work here for the captain of the opposition side to set a field. Altogether 5 fielders in the offside region and 4 fielder in the on. And Santosh wanted 1 fielder in the onside. There is no fielder in the mid on or mid wicket. Only the short fine leg, the fielder inside the ring in the onside region. Santosh, right arm over the wicket balls. It's going to be a punishable from the umpire. Roland Pinto getting his first exercise of the morning. And the warm-up exercise is always required not only for the bowler but even for the some umpires also. It's 21 on the board for the loss of 3 wicket. And umpires are not doing the exercise because knows that they will go and get exercise in the cricket ground. If the bowlers bowl some wides and no balls, leg buys, all the warm-up exercises. Bye, leg bye, wides, no balls. Sometime when they're taking the position, when run out will going to take place, they immediately moving to the direction. All are the exercises for umpires. It's 22 for the loss of 3 wicket. Here is the bowler will going to continue. Santosh too from the commentary box end. But for commentators there is no exercises. And our friend Gopi was always roaming here and there to get some exercises. Commentary box, because we are only sitting and having a mic in the hands. And here is Santosh. Balls. Lovely shot, just up and over, down to deep extra cover, between cover and extra cover. Lovely placement there from Madhu. They're coming back for the second, slight bit of hesitation for the second run. Deepak is not responding for the second run. Quite lately reacted for the second. Madhu almost started his second run. But Deepak, fortunately for him, that throw which is slight bit of wide, otherwise definitely the chance of run out which is created. The 24 for the loss of 3 wicket. Santosh will go into continue. 5th time in this over. Bowling away from us. Round the wicket. Again there's going to be a wide chance of wide there. One more extra. Coming back to the exercise. The one man is not really getting exercise is a scorer. Ratish Raj is not really getting, because scorer need to be there. There's a lot of concentration which is required. Where he was sitting from morning to evening. It's not so easy. And that's why before coming to the scoring, he was having some morning exercises. The 26 for the loss of 3 wicket. Last over is in third over is in progress, and 5th time in this over. Doubly delivering the impact of the line, slight bit of outside the line of off time for the fractionally. Otherwise, the opportunity of leg before wicket here. One more single. With that single score, one moves on to 27 for the loss of 3 wicket. Last delivery remaining. So far, it's a tidy over compared to the previous over. Sandeep, Santosh managed to restrict the runs in the form of boundaries and sixes in this over. Deepak back on strike, left-hand batter. Bowler's back drive, caught and ball opportunity, and run out opportunity is completed. He drops the catch, but he got the same batsman. Not only in the form of a cotton ball, but in fact in the form of run out. After dropping the catch, Madhu wanted to get the runs,
And but there's a very good presence of mind here by Santosh. Even though he drops the catch, but quickly realizing that opportunity to run out, direct hit comes into play. So 27 for the loss of 4 wicket. Good score on the board for the team and Veera Maruti, but unfortunately, and they lost 4 wickets, but they got 9 runs per over. The good run rate maintained by Veera Maruti. But the question raising here is, will it going to be good enough? Because of that nature of the ball I already mentioned. It's a training ball which is used for this particular tournament. And of course, in that training ball, the opportunity for the batters more than the bowlers. The bowlers have to be very stick with their line and length. Little margin for error. You can't do the mistake in this particular the ball which is used for the tournament. Sudhir is a new batter in. He will going to take the strike. Deepak is back into pavilion, the batter in the form of run out. Arish to continue. Driven, not quite getting a hold of the double. Chance of run out, wide throw coming from the fielder, so that both the batter completed that quick single. Sudhir is off the mark with the single. Score but moves on to 28 for the loss of 4 wicket. The last over is in progress. Last 5 deliveries left. Deep cow point to deep long off, long on, mid wicket, deep square leg. Again, I wanted to go for the shot. Chance of run out there. Wicket keeper misses it. Even the fielder had shot that man, missing that 3 wickets. And they completed that single in the form of bye. It's 29 for the loss of 4 wicket. Last 4 deliveries remaining. Ball him, clean him up. Beautiful flighted delivery there from the bowler Harish. Giving some flight in the delivery, inviting the batsman to go for the big shot. But batsman couldn't manage to reach that ball. Couldn't manage to read the turn of the ball. Beaten by the flight and turn of the delivery. And ball hits the stump. Excellent delivery indeed. It's not so easy, I already mentioned. When you are dealing with the last over, the batters are looking for some big shots. They need to be very concentrated over the line and length. And that was an absolutely perfect leg cutter. Umpire signaling here that the fielding team exceeds the time limits, so that they have to bring one fielder inside the ring. That means they need to bowl another 3 balls, having only 4 fielders outside the circle. Not more than that. Arish to continue. Balls, and this time misjudgment by the batter. Just left the ball with that thinking that might be a wide, but well within the reach of the batter. Good bowling there from Arish. 5th time in this over. Ball him, 1 more wicket. Absolutely fantastic leg cutter again there from Arish. He bowling some beautiful deliveries. The flighted one, turning delivery. 1 more wicket is back into pavilion. The batter is back into pavilion is Lauren. Without disturbing the scoreboard, is back into pavilion. It's 29 for the loss of 6 wicket. So last delivery of their innings is coming. What a fantastic last over it is turning out to be for the team Vaidyanath. At one stage they're cruising towards 40 plus runs. Sahir is a new batter in. Last delivery of their innings is coming up. This time dotted delivery. Out is given by umpire. 1 more wicket. 3 wickets in this over. Great last over coming from the hands of the bowler Harish. He restricts the runs. I just want to see how many runs is considered in this over. Just 2 runs. 2 runs in the men's, 1 leg by. Only 1 from the bat. Great over. 1 hour, no maiden, 1 runs, and picked up 3 valuable wickets. Absolutely the great over which is comes to an end, and Veera Maruti just losing that momentum what they got in the 3 overs. They couldn't manage to get the runs in this last over. Just 2 runs and lost 3 wickets. That's it. And Veera Maruti set a target of 30 to win the match for team Vaidyanath to win this match, and wait and see how Vaidyanath will going to get this total of 30 to win this match in stipulated 4 overs, 24 deliveries, 30 runs required for the victory.
and the run rate required is absolutely, we are talking about 7.50 runs per over the required run rate, and wait and see how well they will go to get these runs. And we'll take a short break here in our commentary box. After the short break, my friend Gopi will going to take over the microphone in our national language. And welcome Gopi, good morning to you, and good morning, and as well as welcome for this season 5 of Attavara Premier League, which is proudly organized by Sri Durga Friends in this UCG ground. It's over to Gopi, thank you. धन्यवाद सतीश। तो सारे दर्शकों का मैं यहाँ पर गोपी स्वागत करता हूँ। जहाँ तक सवाल है, इस वक्त अत्तावरा प्रीमियर लीग सीजन 5 2024 की शानदार प्रगति यहाँ पर होते हुए, और श्री दुर्गा फ्रेंड्स ने इस श्रृंखला का आयोजन यहाँ पर किया है। और जहाँ तक सवाल है, पहला मैच वीरा मारुति और वैद्यनाथा के बीच में खेला जाता हुआ, और वीरा मारुति ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 4 ओवर में 29 रन उन्होंने बनाया। 30 रनों का लक्ष्य इस वक्त वैद्यनाथा वॉरियर्स के सामने उन्होंने रखा है। और उनकी पारी की शुरुआत यहाँ पर होते हुए राघु और प्रदीप आरंभिक बल्लेबाज, जबकि धनुष गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए कमेंटेटर बॉक्स एंड की ओर से गेंदबाजी इस वक्त शुरू करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ओवर की पहली गेंद, यह गेंद लेग स्टंप पर आती हुई गेंद को इस वक्त ऑन साइड पर खेलना चाहता, चूंकि गेंद विकेट कीपर अपनी दाईं ओर जाते हुए दूसरे प्रयत्न में गेंद को फील्ड कर लिया। रन बल्लेबाज को नहीं मिला, तो स्कोर रुक चुका है 0 पर, जबकि पहला ओवर उनकी पारी का यहाँ पर शुरू हो चुका है। और गेंदबाज धनुष अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद पहला और एकमात्र पावर प्ले ओवर उनकी पारी का इस वक्त प्रगति पर। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज राघु के लिए ये गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई वाइड का इशारा, और वाइड के इस रन के साथ रनों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है। 1 रन बिना किसी नुकसान के, 1 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर और वैद्यनाथा वॉरियर्स। और फिर से एक बार गेंदबाज धनुष गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद स्वीप करना चाहा। इस वक्त स्लॉग स्वीप शॉट गेंद को खेलना चाहता, फ्रंट फुट पर जाने के बाद चूंकि गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथ में रन नहीं मिला। और एक वाइड गेंद फेंकने के बाद 2 बेहतर गेंद इस वक्त गेंदबाज धनुष इस वक्त फेंक चुके हैं, और अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट इस वक्त करते हुए गेंदबाज धनुष, और अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ
ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस पर बोल्ड आउट, गॉड इज इनसाइड इट ऑन टू द स्टंप्स और इसी के साथ पहला विकेट यहां पर गिर चुका है। राघु ने गेंद को ड्राइव करना चाहता है, ऐसा कहना पड़ेगा, स्टंप्सों पर गेंद को खींच लिया, जस्ट ड्रैग डाउन टू द स्टंप्स एट द लास्ट मोमेंट, जस्ट हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले। और मैं जानना चाहूंगा किस तरीके से यहाँ पर आउट हुए थे। देखिए गेंद सीधी रफ्तार के साथ थी और बल्ले का भीतरी किनारा इस वक्त गेंद सीधे स्टंप्सों पर टकराई और इसी के साथ यहाँ पर राघु की पारी समाप्त हो चुकी है। बेशकीमती विकेट यहाँ पर खो चुका है वैद्यनाथ वॉरियर्स और राघु शून्य पर आउट होने के बाद पवेलियन वापस लौटते हुए 1 रन पर पहला विकेट खो चुका है वैद्यनाथ वॉरियर्स। धनुष विकेट इस वक्त प्राप्त करते हुए बेहतर ऑफ कटर गेंद पर बल्लेबाज के बल्ले का अंदरूनी किनारा टकराने के बाद गेंद स्टंप्सों पर जा टकराई और इसी के साथ पहला विकेट गिर चुका है। नए बल्लेबाज अजय इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर अपना कदम बढ़ाते हुए 7 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर तैनात। मिड ऑफ एक्स्ट्रा कवर पॉइंट और शॉर्ट थर्ड मैच, जबकि ऑन साइड पर शॉर्ट फाइन लेग स्क्वायर लेग और मिड विकेट इस वक्त मौजूद। केवल 2 मात्र क्षेत्र रक्षक इस वक्त 20 गज के दायरे के बाहर तैनात और इस बीच ओवर की अगली गेंद लेकर धनुष इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। ये गेंद इस बार पैरों पर गेंद टकराई, अंतिम क्षण में गेंद लेग स्टंप से कुछ हद तक बाहर की ओर निकलते हुए सही निर्णय अंपायर का और रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। स्कोर रुक चुका है 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 1 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाज धनुष इस वक्त गेंदबाजी करते हुए अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी, गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहा, शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में गेंद पहुंची और इससे पहले की गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता लेग बाई के रूप में 1 रन दोनों बल्लेबाज दौड़कर पूर्ण कर चुके हैं और लेग बाई के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका। कुल मिलाकर 2 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर पहला ओवर इस वक्त प्रगति पर। धनुष इस ओवर में अंतिम बार दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए नए बल्लेबाज इस वक्त अजय ऑफ द स्ट्राइक हो चुके। प्रदीप इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और धनुष यह गेंद उछाला, गेंद को लंगा ऊपर, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद है और इसी के साथ एक और विकेट यहां पर गिर चुका है। गेंद तक पहुंचते हुए गेंद को इस वक्त उछाला था जरूर, लेकिन प्लेसमेंट गलत और लंगा ऊपर जो फील्डर खड़े हुए थे गेंद सीधे उनके हाथों में पहुंची और इसी के साथ ये दूसरा विकेट यहां पर गिर चुका है। आउट होने वाले बल्लेबाज प्रदीप और देखिए किस तरीके से हुआ था, गेंद तक पहुंचते हुए गेंद को उछाला था इस वक्त लॉन्ग ऑफ पर, लेकिन फील्डर को वहां पर प्राप्त करते हुए लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के अंदर और इसी के साथ प्रदीप की पारी समाप्त। दोनों बल्लेबाज राघु और प्रदीप शून्य पर वापस लौट चुके हैं और यहां पर ऐसा कहना पड़ेगा वैद्यनाथ वॉरियर्स आर नाउ लुकिंग इन ट्रबल। 2 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ओवर। एक बेहतर ओवर धनुष का यहां पर समाप्त हो चुका है जिसमें उन्होंने सिर्फ 2 रन प्रदान किए और 2 बेशकीमती विकेट उन्होंने प्राप्त किए और इस वक्त एक लड़खड़ाती हुई शुरुआत, शैकलिंग स्टार्ट जिस अंग्रेजी में कहते हैं, इस वक्त कर चुका है वैद्यनाथ वॉरियर्स। 30 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए सिर्फ 2 रन जोड़ चुका है 2 विकेट के नुकसान पर। हमसे दूर वाले छोर से गेंदबाजी शुरू करते हुए इस वक्त गेंदबाज अविनाश इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलती हुई। पहले ओवर के समाप्ति के बाद फील्डिंग के प्रतिबंध यहां पर हट चुके हैं, पावर प्ले समाप्त हो चुका है और फील्डर इस वक्त मैदान पर छाते हुए और जहां तक सवाल है इस श्रृंखला का, तो पहला मैच इस प्रेस्टिजियस क्रिकेट टूर्नामेंट प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत खेला जाता हुआ अत्तावारा प्रीमियर लीग सीजन 5 2024 जिसका शानदार तरीके से प्रस्तुति की है श्री दुर्गा फ्रेंड्स ने और निश्चित रूप से आज सुबह भव्य उद्घाटन समारोह के बाद ये श्रृंखला यहाँ पर शुरू हुई और एक शानदार प्रगति ये श्रृंखला ये टूर्नामेंट यहाँ पर करते हुए और फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए गेंदबाज अविनाश जो कि नया ओवर इस वक्त प्रारंभ करते हुए। नए बल्लेबाज का आगमन हो चुका है, रक्षक का इस वक्त क्रीज पर मौजूद नॉन स्ट्राइकर एंड पर, जबकि स्ट्राइक इस वक्त लेते हुए अजय और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त अविनाश गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। डीप बैकवर्ड थर्ड मैन पर एक फील्डर जो मौजूद थे इस वक्त डीप कवर पॉइंट पर उन्हें इस वक्त तैनात किया गया है ठीक सीमा रेखा के पास और अविनाश पहली गेंद ये गेंद उछालना चाहा, नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपरली, इन फैक्ट इज गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 3 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। इट्स 3 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द सेकंड ओवर और
अविनाश फिर से एक बार गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए वाइड का इशारा और वाइड के रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है। कुल मिलाकर 4 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर। अविनाश फिर से एक बार तैयार सामना करते हुए रक्षक इस वक्त अविनाश की गेंदों का। यह गेंद लेग स्टंप पर आती हुई और सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन से बल्लेबाज को नहीं मिला तो स्कोर रुक चुका है इस वक्त 4 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर प्रगति पर। लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन इस वक्त मौजूद ठीक सीमा रेखा के पास और इस बीच अविनाश ये गेंद और साइड पर चलना चाहा, बल्ले का भीतर किनारा, रन के लिए दौड़ पड़े। एक रन यहाँ पर पूर्ण कर चुके हैं। इससे पहले कि गेंद को फील्डर फील्ड करे शॉट फाइन लेग पर और निशाना लगा स्टंप से पर उनका निशाना चूकता हुआ। एक रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपना छोड़ यहाँ पर बदल चुके हैं और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 5 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 5 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। रनों के लिए कड़ा संघर्ष यहाँ पर करते हुए बल्लेबाज वैद्यनाथ वॉरियर्स के। और यहाँ पर शायद बल्लेबाज के माफ कीजिए शायद फील्डर के घुटने पर कुछ हद तक चोट आई है, कुछ हद तक दर्द वो महसूस करते हुए और खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है। सुबह का वक्त 10:30 इस वक्त बच चुके हैं। धूप धीरे धीरे अपना कहर मैदान पर ढाता हुआ और इस बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ धूप की तीव्रता भी यहाँ पर बढ़ती हुई। और जहाँ तक सवाल है इस वक्त फर्स्ट एड के लिए इस वक्त मांग की जा रही है पेविलियन की ओर और घुटनों पर कुछ हद तक इस वक्त दर्द महसूस करते हुए खिलाड़ी जो एक्स्ट्रा कवर पर इस वक्त तैनात है। तो जहां तक सवाल है अविनाश गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। ये गेंद पैरों पर गेंद टकराई, शॉट फाइन लेग की दिशा में और मिसअंडरस्टैंडिंग, नॉन स्ट्राइकर पर खतरा, थ्रो पहुंचा लेकिन थ्रो को रिसीव करने में सफल इस वक्त गेंदबाज। आसान सा रन आउट इस वक्त नॉन स्ट्राइकर एंड पर और आखिरकार गेंदबाज के हाथों में पहुंची थी जरूर लेकिन थ्रो को रिसीव करने में सफल। और इस गेंद पर बल्लेबाज बाल बाल बचते हुए जोखिम भरा रन लेकिन सफलतम दोनों बल्लेबाज पूर्ण करते हुए और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 6 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। अविनाश फिर से एक बार गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए ये गेंद टॉप एज लेकिन नॉट क्वाइट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपर्ली, इन फैक्ट इज गॉट अ सिंगल, स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को स्कूप किया था इस वक्त डीप कवर पॉइंट पर और एक रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। 7 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 7 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। अंतिम गेंद इस ओवर में लेकर गेंदबाज अविनाश तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंद को इस वक्त उछाला है मिड विकेट के ऊपर से, गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। और इस छक्के के साथ जो अजय ने इस वक्त ये छक्का लगाया है, इस छक्के के साथ कुछ हद तक कहना पड़ेगा यहां पर वैद्यनाथ वॉरियर्स इस मैच में वापस आ चुका है। फैंटास्टिकली स्ट्रक बाय अजय, just caught that one from the right from the middle of the bat and lofted that one in a style over deep mid wicket fence for a massive one। और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है इस छक्के के साथ 13 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। अब equation seems to be easier a little bit now with that 6। Now 2 overs remaining, that means 12 balls left, 17 runs required, 17 रन चाहिए विजय के लिए। और यहां पर देखते हैं तीसरा ओवर कौन सा गेंदबाज यहां पर प्रारंभ करते हैं। तो अतुल गेंदबाजी इस वक्त प्रारंभ करते हुए और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। रक्षक इस वक्त सामना करते हुए 12 गेंदों में 17 रन चाहिए विजय के लिए। 17 रन टू गेट फ्रॉम रिमेनिंग 12 बॉल्स। स्टिल द मैच इज नाउ इक्वली बैलेंस्ड। और इस बीच गेंदबाज अतुल गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए तीसरा ओवर प्रारंभ होता हुआ वैद्यनाथ वॉरियर्स की पारी में। फील्डिंग में जमावट इस वक्त गेंदबाज करने के बाद अपनी ओर की पहली गेंद लेकर अतुल इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए
दाहिने हाथ ओवर द विकेट, दाहिने हाथ के बल्लेबाज रक्षक जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। तो पहली गेंद अतुल की, दाहिने हाथ ओवर द विकेट। यह गेंद लेग कटर गेंद थी, ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा, स्टंप्स एक्सपोज करते थे, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद को मिडल ऑफ द बैट कनेक्ट करने में सफल। बल्ले का अंदरूनी किनारा टकराने के बाद गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। अगली गेंद अतुल की, लेग स्टंप पर आते हुए वाइड का इशारा, और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 14 रनों पर। 14 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स नाउ। और फ्लाइटेड, फैंटास्टिक डिलीवरी, फ्लाइटेड गेंद थी, लेकिन इस गेंद का फायदा उठाने में सफल, और एक रन बाई के रूप में इस वक्त प्राप्त होता हुआ, और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 15 रनों पर। 15 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट, 15 रन्स स्कोर्ड, 15 रन्स मोर नाउ, स्टिल दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री। और अतुल की ओर की अगली गेंद, ये गेंद इस बार ड्राइव करना चाहा, बैक टू द बॉलर की दिशा में, नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपरली। और जब तक गेंदबाज अपने फॉलो थ्रू में आगे की ओर जाकर गेंद को फील्ड करे, ಅತ್ತಾವರ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಅತ್ತಾವರ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರಿಗೆ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ। बेहतर गेंद इस वक्त, गेंद को इस वक्त उछालने के प्रयास में चूके और रन्स बल्लेबाज को नहीं मिला। बेहतर गेंदबाजी का सिलसिला इस ओवर में जारी रखते हुए गेंदबाज अतुल। अगली गेंद, इस बार गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहा, गेंद गई इस वक्त ऑफ साइड पर, बल्ले के टॉप एज पर टकराने के बाद गेंदबाज के सिर के ऊपर से, और जब तक लॉन्ग ऑफ पर गेंद को फील्ड किया जाता, एक रन का इजाफा हो चुका है। 17 for the loss of 2 wicket, and now last ball remaining, 7 balls left, 13 runs required. Atul, बेहतर गेंद, फैंटास्टिक डिलीवरी, गॉन थ्रू फॉर अ क्विक सिंगल, दिस कुड बी इन ट्रबल, लेकिन अंतिम क्षण में यहां पर ऐसा कहना पड़ेगा, इट्स गोइंग टू बी अ थर्ड अंपायर। तो तीसरा अंपायर का निर्धार यहां पर ले चुके हैं फील्ड अंपायर, और देखते हैं यहां पर तीसरे अंपायर क्या निर्धार देते हैं। क्या विकेट जब उखाड़े गए थे तब क्या बल्लेबाज क्रीज पर अपना बल्ला रख चुके थे, या फिर बल्ला यानी बैट हवे में था? द बैट वाज इन द एयर, जस्ट वी हैव टू वेट फॉर द थर्ड अंपायर डिसीजन। Not out is the call and the batsman survived. तो यहाँ पर बल्लेबाज पहुंच चुके थे जब विकेट यहाँ पर उखाड़े गए थे, तो इस वक्त एक रन उनके खाते में जुड़ता हुआ। 18 now last over remaining, 12 runs required.
ಅಲ್ಲಿ ಅತ್ತಾವರ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಅತ್ತಾವರ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅತ್ತಾವರ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಸೊ 12 runs required from last over and the match deciding over is now going to start from that side end. सुजीर गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार अजय और ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार. 12 रन चाहिए अंतिम ओवर में 6 गेंदों में. ऑफ स्टंप से काफी बाहर. स्टार्ट्स ऑफ विद द वाइड. नाउ 11 रिक्वायर्ड फ्रॉम 6 balls और 19 the score. Again at wide. 10 required from 6 balls now. और 2 लगातार वाइड इस वक्त गेंदबाज सुजीर इस वक्त फेंक चुके हैं. इस बार पैरों पर गेंद टकराई. ऑन साइड पर उछालना चाहा. नॉन स्ट्राइक बल्लेबाज काफी आगे निकल आए लेकिन वापिस भेजा उन्हें स्ट्राइक रन के बल्लेबाज में. अजय स्ट्राइक खुद अपने पास रखना चाहते हैं इस वक्त. 5 गेंदे बाकी 10 रन चाहिए. 10 runs to get from 5 balls. इस बार ऑन साइड पर उछालना चाहा. बेहतर गेंद थी इस वक्त. रन से नहीं मिलेंगे. 10 रन 4 गेंदे. अब इक्वेशन सीम्स टू बी स्टिफर नाउ फॉर द बैटिंग साइड. सुजीर ये गेंद चूके. फैंटास्टिक डिलीवरी and wicketkeeper flicking the wickets very quickly and now once again umpire called it for the third umpire. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಅತ್ತಾವರ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು ಟಾಸ್ಗಾಗಿ. ಅತ್ತಾವರ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅತ್ತಾವರ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಟಾಸ್. No doubt is the call and the batsman survived in this occasion. और 3 गेंदे बाकी 10 रन चाहिए. 10 runs to get from 3 balls. और अजय के पास इस वक्त स्ट्राइक. 2 लगातार वाइड गेंद फेंकने के बाद सुजीर 3 बेहतर गेंदे यहां पर फेंक चुके हैं और अपनी ओर की चौथी गेंद लेकर इस वक्त तैयार. और अजय इस वक्त सामना करते हुए. 10 to get from 3 deliveries. फील्डिंग में जमावट यहां पर चलती हुई. लॉन्ग ऑफ बिल्कुल सीधा जबकि लॉन्ग ऑन थोड़ा सा वाइडर. मिड ऑन इस वक्त 20 के दायरे के अंदर तैनात. और सुजीर गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए अजय के लिए. दाहिने हाथ ओवर द विकेट और इस बीच वाइड का इशारा. इस बार गेंद को उछालना चाहता चूंकि विकेट कीपर ने विकेट जरूर चटकाया लेकिन बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद. वापिस अपना बल्ला क्रीज पर रख चुके थे. 3 balls remaining, 9 runs required. और 8 for tie, 9 for win, and 3 balls remaining in their innings. So Attavara strikers are won the toss and what the decision they will take, just we have to wait and see. तो नो बॉल इस वक्त घोषित एंड अ फ्री हिट डिलीवरी फॉर द बैट्समैन. और गेंद लाइन के बाहर से गुजरी थी तो इस वजह से नो बॉल इस वक्त घोषित किया गया है. और अब 9 रन चाहिए. 3 गेंदें बाकी. फ्री हिट डिलीवरी फॉर द बैट्समैन. और सुजीर गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए अजय के लिए. फील्डिंग में जमावट इस वक्त विकेट कीपर करते हुए और ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार.
दाहिने हाथ ओवर द विकेट, इस बार अगेन को ऑन साइड पर उछाला लेकिन नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपर्ली, इन फैक्ट he completed one, looking for the second, this time he won't survive. Rakshak now departs, 1 run added to the total and a wicket lost, and now 8 required, 2 balls remaining. हालांकि काफी ढीली गेंद थी लेकिन ठीक तरह से गेंद को इस वक्त उछाल नहीं पाए बल्लेबाज, आखिरकार सिर्फ एकमात्र रन उनके और टीम के खाते में प्राप्त होता हुआ और विकेट यहां पर गिर चुका है. 2 boundaries to get in remaining last 2 deliveries. So 2 balls and 8 runs और सुजीर इस वक्त बल्लेबाजी करेगा जय के लिए और दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए तैयार. Flighted, lofted, and this time it's got a distance. So the now 2 runs required from last delivery. And what a fantastic strike after being struggling in the first 4 deliveries in this over. This time he connected that one right from the middle of the bat. तो अंपायर ने इशारा किया कि उनके निगदित समय समाप्त हो चुका, तो एक खिलाड़ी को इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर बुला लिया जाएगा. 1 for tie, 2 for win. तो यहां पर 1 for tie, 2 for win और मैच निर्धारित गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार. सुजीर गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए मैच डिसाइडिंग बॉल काम से गेंद, ढीली गेंद ऑन साइड पर उछाला, मिड विकेट पर, दैट्स गॉन. उछाला था ढीली गेंद पर लेकिन डीप मिड विकेट फील्डर के हाथों में गेंद पहुंची, प्लेसमेंट बिल्कुल गलत और इसी के साथ यह विकेट अंतिम गेंद पर गिर चुका है. सो थ्रिलिंग विक्ट्री बाय अ सिंगल रन फॉर वीरा मारुति अगेंस्ट वैद्यनाथ वॉरियर्स इन द इनॉग्रल मैच ऑफ Attavara Premier League Season 5 2024 and with that a single run thrilling victory, Veera Maruti cricketers back the complete point. So what a fantastic start for this tournament and the first match of this tournament. What a fantastic first match of this tournament has been came to an end, which won by Vaidyanatha by a margin of just a 1 run against Veera Maruti won the match by just a 1 run against Vaidyanatha Warriors, and with that 1 run victory, with that single run victory, Veera Maruti are back the complete points. So match number 1, very fantastic match has been completed. Match number 2 is now going to start between 2 teams of Attavara strikers and Attavara fighters, and that match starts within a short while. और दूसरा मैच शुरू होगा यहाँ पर एक छोटे से अंतराल के बाद. तब तक एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं. छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने एक बार फिर से हाजिर होंगे मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश के साथ, जब यहाँ पर मैच नंबर 2 की शुरुआत होगी. तो अब वक्त है एक ब्रेक का. नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक. थैंक यू, धन्यवाद.
Man of the match of this match award goes to Dhanush of Veera Maruti Cricketers for his all-rounding performance of 11 runs from the bat, and he bowled very well, conceding just 1 run and capturing 2 wickets in his 1 over quota. And because of that all-rounding performance, Dhanush adjudged man of the match. I request Dhanush of Veera Maruti, please come on to the stage and receive the man of the match award from the organizers. Thank you. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂಥ ಧನುಷ್ ವೀರಮಾರುತಿ ತಂಡದ ಧನುಷ್ ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸುನಿಲ್ ಮಂಕಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇವರು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಶ್ರೀಯುತ ಸುನಿಲ್ ಮಂಕಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇವರಿಗಾಗಲೇ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ವಿತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಧನುಷ್ ಇವರಿಗೆ ವೀರಮಾರುತಿ ತಂಡದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you very much and welcome back for the match number 2 of this prestigious Attavara Premier League Season 5. The Tigers versus Strikers of Attavara each other in the first match of their league stage, and second match of the day number 2. First ball outside the line of off stump, and the ball which is just going away from the right-hander batsman. No run scored. Wicket keeper behind the stump did the rest back to bowler. Arun and Shishant are the 2 opening batters for team Tigers are in the middle. Driven straight to the hands of short mid wicket. The first wicket is back into pavilion. Arun, of course, got that one right from the middle of the bat. Very experienced campaigner, Arun. One who played for SNJ cricketers for a long time. He couldn't manage to get that placement right. Ball went straight to the hands of short mid wicket and pays the penalty for that. First wicket is gone, and it's 0 for 1. The shackling start here for the team Attavara Tigers. After winning the toss, the Strikers are elected to field first, and Shreyas is a new batter just walking towards the middle with the jersey number 10. Ram strikes with that second delivery itself. He is right on the money. Got the wicket. Always is good start when you are getting a wicket in the first over, especially in the power play over where the batsmen have to look for some big shots. Definitely they are looking for the big shot. It's not so easy. Ram will go into continue. Second time in this over. Bowls this time. Lovely delivery indeed. Absolutely perfect delivery to ball. The fresh leg. Very good leg cutter in that occasion. Batsman just searching for the ball, and misjudgment. Wicketkeeper behind the stump did the rest back to bowler. 3 very good deliveries. Start with Ram to continue 4 times in this over. Right arm over the wicket. Shreyas, top edge, but ball will go to land it safely between square leg and the mid wicket, and before the ball will go into reach to the fence. Oh my goodness! Of course, the fielder is got the ball in his hand, and after seeing that is a spectator gallery, he thought that I want to sit there. I want to relax. And it's sometimes it's happening in cricket. Sometimes little bit comedy of error, but you can't blame a fielder for that, because after touching that wall, he just lost his balance actually. So he just used that spectator galleries to sit there, but unfortunately boundary which is signaled. The 4 on the board. Slower one, but the batsman again managed to get that one over the square leg fielder. Before that, square leg fielder will go into run back to field the ball. Ample time for the batter to complete the single. With that single, scope moves on to 5 on the board for the loss of 1 wicket. And Shreyas has got all the 5 runs from his bat with that 1 boundary. So slight a bit of lucky boundary for him.
And now opening batter Shishant will going to take the strike. Ram to continue from the commentary box end. Right arm over the wicket delivers. Driven but straight to the hands of Sandeep. But absolutely, even Sandeep is not celebrating, just like never looks like he taken a catch, because immediately he picked that one, he returns the ball. And even batsman is also confused whether it was a catch or not. But because there is no celebration at all. The Sandeep is one of the most experienced campaigner in the side of Attavara strikers. Attavara Tigers in fact, strikers in fact. And the wicket is back into pavilion. And 2 wickets in this over. Good start given by Ram for his team. Just 5 runs conceded and picked up 2 valuable wickets. Very good start here for Attavara strikers. Striking the 2 wickets in the first over itself. So new batter in, the walking towards the middle with the jersey number 11. Very interesting, 10 and 11 together. Jersey number 10 in strikers end, jersey number 11 in non-strikers end. Pradeep, the new batter, but here is a Shreyas. Yes, Shreyas will going to take the strike. The bowler, Pitti. Very interesting name. Sometime... maybe there's sometime the nickname which is given for there are some players that will becomes a permanent. But here is whatever the mention, we are going to read same thing. Pitti will going to start fresh over. Second over, which is nicely balled outside, and next time good thinking there by the bowler, seeing that Shreyas is going for the switch it, just changing the line cleverly, and the fair delivery as far as the rules and regulation is cricket is concerned, because the batter becomes a left-hander. 5 on the board. Pitti to continue from the far end. Balls, oh, that's going to be a huge wide, and that will going to miss the stumps for a long way. Wide call by umpire with that extra score, numbers on to 6 for the loss of 2 wicket in the over number 2 is in progress. Tigers searching for the right track and lost 2 wickets. Got only 6 runs. Short third man, short cow pointer, short extra cover. Long off is there. Deep cow pointer, long on mid wicket and deep square leg. Going to be a fair delivery. Batsman misjudging the line of the ball, and umpire rightly so. Suresh Mudabidri not interested because ball well within the reach of the batter and inside the line. And wicketkeeper behind the stump uprooted the stumps. Just asking question for the square leg umpire. No damage done. Dotted delivery. And next match, just I want to repeat. The next match will be played between Arasu Warriors versus Babu Gudda Tigers. So that I request both Arasu and Babu Gudda Tigers, please be reported immediately in the commentary box to complete their signatures as soon as possible. Oh, that going to be a sloppy, absolutely sloppy fielding there by short fine leg fielder. Ball went to defense for 4 runs in the form of the white plus 4, 5 runs conceded. It's 11 on the board. It's 11 for the loss of 2 wickets. The Pitti to continue from the far end. To Shreyas, again that same line. This time the fielder little bit changed here. That will really works out, and because of that the no run scored. Sachu the fielder there now, it's a short fine leg region and fields the ball, and no run scored. 12 on the board. Oh, he is struggling, absolutely struggling. One more wide. Runs which is coming for the Tigers in the form of extras. 13 for the loss of 2 wickets. It's not a good sign. Already 8 extras which is came from those last 2 deliveries of Pitti. Pitti pretty bit struggling to get his line and length, and well, wait and see how well he's going to get the line and length after that 2 wide deliveries and
Bowling from the far end. Right arm over the wicket. This time appeal. Absolutely flum in front of wicket. No doubt at all. Just playing that one across the line of the delivery. Ball pitched in a line. And the batsman tried to play that across the line of the delivery, finding himself right in front of a middle stump. Have a look at that one in the replay. The bowler is bowling. It's a very good line actually. After that, wide deliveries. Have a look at that one. Pitched in a line. Across the line. You can't do that. Across the line, he plays it down to try to play that one on the onside region. Misses the line completely. And Suresh Mudabidre has got no hesitation in his mind to raise his finger. Wicket number 3 back into pavilion. It's 13 for the loss of 3 wicket. Attavara Tigers. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅರಸು ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಬಾಬುಗುಡ್ಡೆ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡದೆಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಒಳಗೆ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಬೇಕು, ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. Again the wide. This is not a good to see. After getting a wicket, you can't do that mistake of bowling that wide, isn't it? That will give a lot of confidence for the new batters. And the runs are coming very well. It's 14 on the board already, but they lost 3 wickets. This time one more beautiful delivery. Now umpire saying, how can I give the leg before wicket? You are right in front of my eyes. I only see you, not the ball. And no signal came from the umpire because of that bowler coming right in front of umpire. Might be there's a very close one. And that's very important for bowler to come back. Not in front of umpire, but you need to take your left, not the right. And again, automatically done. Umpire asking for the third umpire for the stump out. The batsman looks like he's in trouble. He himself is walking. Thinking that it might be out because it was automatically done. After ball hitting the hands of wicket keeper, ball fell into the stumps. That time I think the batter out of the crease. That's why he knows himself. He's walking without waiting for the umpire signal. But already umpire given the third umpire, so that it's our duty to see whether the batter is safe or not. Umpire Roland Pinto will go into examine to see that whether the batsman is short of his crease or not. It's 16 already on the board. So out is a call from third umpire is gone, and the one more wicket is back into pavilion. 16 for the loss of 4 wicket after the over number 2, which is 2 is in progress. It's a prolonged over, a huge over from Pretty. Still 2 more deliveries left in this over, and he's a little bit struggling to get his line and length. The new batter walking towards the middle, just number 18, Ravi is a new batter coming to the middle for the Tigers. Over number 2 is in progress. Automatic stump which is done by the wicket keeper. Sometime its luck will go into favor wicket keeper and the bowler. Pretty to continue 5th time in this over. All right, oh my goodness. Again he's struggling to get his line and length. One more wide, 17 for the loss of 4 wicket, and take out of 17, 12 runs which is in the form of extras. That absolutely disaster for Attavara strikers.
Beautifully balled, and this time no appeal coming from the bowler, and the wicketkeeper might be ball is stuck him outside the line of off stump, and again the bowler continues. Beautifully balled. Whenever he bowls a good line, he's troubled the batters. But no way, no use at all, because they completed his over with many runs in the form of extras. 12 runs in the form of extras is conceded in this over. And the team still, Attavara Tigers, in a good position. Even they lost 4 wickets, and need to say special thanks. Need to give the special thanks to the extras by Tigers, because of that 12 runs. They are in a good position. It's 17 on the board for the loss of 4 wickets. 2 gone. Prolonged over which is completed, and new bowler will going to start the pressure over from the community box, and the jersey number 84 Charan brought into attack. Dhanush will be the striker. Five man inside the ring. Very interesting. Bowler is in a hurry. Wicketkeeper setting a field, but very interesting. That's after that power play, still they're keeping 5 fielders inside the ring. It's very interesting to find like third man, cover point, extra cover, short mid wicket. Charan ball, stop edge, full toss delivery. The batsman fails to capitalize that delivery, which is a full toss. And the 1 run scored here with that single run score, but moves on to 18 on the board for the loss of 4 wicket in the over. Number 3 is in progress. Driven that one nicely down to mid wicket region, and looking for second, and they completed 2 valuable runs. Umpire straight away asking that new batter Ravi not run in the middle of the pitch. Need to avoid that protected zone. The warning number 1 has been given for the batter. It's 24, the loss of 4 wicket. Charan to continue. To Ravi, wanted to go for the big shot. A slight bit of fumble there from Sanjay. Sanjay, one who represents for SNJ cricketers, the good cricketer, and very good wicketkeeper batter for the side of Attavara strikers. Lofted in the vacant area, mid-wicket fielder won't. Oh, he's just given up. And one of the fielder from mid deep long on will just manage to pull the ball inside that playing area. And otherwise, what the batsman completed 3 valuable runs. Umpire just have to look at whether it was safely saved or not. Umpire will go in to refer the third umpire to see that whether the boundary or not. Because that was a combination fielding. The mid-wicket fielder coming from the far end, and a long-on fielder also coming from the areas. But when the ball is after one ball is going to reach to the fence, one of the fielders here managed to pull the ball inside the ring. By how to see whether it was saved or not. Four declared by umpire, 4 signal. It's not saved. It's a 4 signal by umpire, the boundary. The bowler to continue from the commentary box end. Right arm over the wicket, driven that one down to mid wicket region. The fielder is there in the mid wicket, so that batsman will go in to complete the single. Ravi picked up a single, quarter century for the team Tigers. Even though Tigers lost the wicket, but because of some mistake from the bowlers of strikers, they got some runs in the board. Again, going to be a punishable, not from the batter, but from the umpire, because of that line which is going far away outside the line of leg stump. And with that extra score, moves on to 26 for the loss of 4 wicket in the over. Number 3 is in progress.
Again, this time it's going to be a fair delivery. Over number 3, which is comes to an end. 3 gone. After completion of over number 3, team Attavara Tigers are 26 on the board. Very good run rate they've maintained. Just over 8 runs per over. In fact, it's good going here for the team Tigers. And the last over remaining in their innings. And wait and see how many runs the team Attavara Tigers will going to get against the Strikers. For the latecomers, you are watching match number 2 of the day number 1 of this prestigious Attavara Premier League Season 5, which is proudly organized by Durga Friends, Sri Durga Friends in this Urua Cricket Stadium here in Urua, known to be a lots of on-drum cricket, and you will get plenty of cricketing action in this USG cricket ground. You won't get more than the cricket matches actions here than USG cricket ground. Very, very interesting. Umpire Suresh Mudabidre will going to see that the bowler came in and started his run and delivered. Umpire will going to call this. The batter is not ready in that occasion. The bowler started his run up and dead ball called by umpire. Left arm round the wicket. Balls is a lovely delivery indeed. The ball coming into the batter. In the last moment he got a bat onto that. It's 27 for the loss of 4 wicket. Lovely delivery. Beautifully bowled. Left arm bowler bowling such a good line here. Sachin. The last 2 over. One more experienced campaigner. Man who did a lot of good job in the last season, the edition 4 of the Attavara Premier League with the bowling and the batting. Again, place it down mid wicket with a chance of run out in the strong strikers, and bowler fails to collect the throw from the fielder, so that they completed a quick single. So tidy over is in progress there from the bowler Sachin so far. 28 on the board for the loss of 4 wickets. Sachin to continue. Left arm. This time driven that one straight down the ground, very straight to it area, down to deep long on area. Just a single, one more one is given for Ravi. He need to be very careful. Umpire now just exceeds the time limits, the fielding team. So they have to bring one fielder inside the ring. They have got a 5. They already got a 5. No need to bring one fielder inside the ring. And very interesting. 29 for the loss of 4 wickets. Driven up and over, and he got the bounce, one bounce collected by the fielder, and ample time for the batter to complete that single. Dhanush picked up a couple of runs, and with that couple of runs, Kobana moves on to 31 for the loss of 4 wickets. Last delivery of their innings, which is coming up, of Tigers. Sachin. Balls lofted down to deep long on, and misfielded there by the fielder. The jump of the time which is not right. Of course, it's hard in the nature that we're talking about the ball which is used. It is definitely going to be if you just wait for the bounce, it will going to defeats you, but it can be stoppable from the fielder, and not a good effort there from the fielder. Went into the boundary, but a very welcome boundary coming up in the last delivery of the over for the Tigers, and they got a very good score on the board now. 4 overs they completed and they got a 35 runs. And 36 will go into a target at a required run rate of exactly 9 runs per over for the team Attavara Strikers, and 9 runs per over the required run rate for them. And wait and see how well they will going to get this total, and it's going to be very interesting. And for that interesting innings, I would like to call upon Mr. Gopi to take over the microphone in our national language, Hindi. Thank you.
धन्यवाद सतीश। तो जहां तक सवाल है इस वक्त अत्तावरा स्ट्राइकर्स के लिए, तो लक्ष्य है इस वक्त 36 रनों का लक्ष्य। 36 द टारगेट इन 4 overs फॉर अत्तावरा स्ट्राइकर्स एंड इनिंग्स नाउ गोइंग टू स्टार्ट। और पहली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते इस वक्त श्रेयस, जबकि स्ट्राइक इस वक्त लेने के लिए तैयार संदीप। और पहला और एकमात्र पावर प्ले ओवर उनकी पारी का यहाँ पर शुरू होता हुआ। पहली गेंद लेकर श्रेयस इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को मोड़ा और इस बार मिसफील्ड होते हुए गेंद इस वक्त बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। स्क्वायर लेग फील्डर की दाईं ओर गेंद आई थी, गेंद को फील्ड करना चाहा लेकिन वहां पर अंतिम क्षण में गेंद उनके हाथों से छूटती हुई सीधे उनको वंचित करते हुए निकल गई डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। तो इस चौके के साथ इस वक्त रनों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है अत्तावरा स्ट्राइकर्स के लिए। 4 रन बिना किसी नुकसान के, 4 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर। और गेंदबाज श्रेयस एक बार फिर से गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। ये गेंद लेग स्टंप पर आती हुई गेंद को उछालने के प्रयास में चुके शॉर्ट फाइन लेग पर गेंद जब तक फील्ड हो 1 रन का इजाफा हो चुका है 22 के रूप में। और 22 के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 5 रनों पर बिना किसी नुकसान के, जबकि पहला ओवर उनकी पारी का इस वक्त प्रगति पर। और श्रेयस इस बार संजय के लिए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद बेहतर गेंद इस वक्त गेंद को ऑन साइड पर खेलना चाहता, मोड़ना चाहता, चूंकि शॉर्ट फाइन लेग पर गेंद स्वयं विकेट कीपर द्वारा अपने दूसरे प्रयत्न में जाकर फील्ड होते हुए रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। 5 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के। पहला ओवर इस वक्त प्रगति पर और फिर से एक बार गेंदबाज श्रेयस गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद ड्राइव करते एक्स्ट्रा कवर पर रन के लिए दौड़ पर स्ट्राइक रन पर खतरा, लेकिन काफी वाइड थ्रो इस वक्त पहुंचता हुआ। और वाइड थ्रो की बदौलत बल्लेबाज 1 रन के साथ अपना छोड़ यहाँ पर बदल चुके और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 6 रनों पर। 6 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर फॉर अत्तावरा स्ट्राइकर्स। और जहां तक सवाल है गेंदबाजी का, तो श्रेयस इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए। संदीप इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। 7 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर मौजूद। दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद ऑन साइड पर मिड विकेट पर गेंद को उछाला है खूबसूरती के साथ और गेंद इस वक्त सीमा रेखा को पार कर चुकी है 6 रनों के लिए। Fantastically struck, just shuffling across the line at the last moment, got that one right from the middle of the bat and lofted that one in a style over deep mid wicket fence for a massive one. और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 12 रनों पर। बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त संदीप के बल्ले से लगता हुआ। और एक बार फिर से वो सामना करने के लिए तैयार श्रेयस की गेंदों का। श्रेयस दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा, लेग स्टंप से कुछ हद तक बाहर की ओर निकलती हुई लेग बाय का इशारा और लेग बाय के रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब कुल मिलाकर 13 रनों पर बिना किसी नुकसान। सो फैंटास्टिक स्टार्ट फॉर अत्तावरा स्ट्राइकर्स चेजिंग द विक्ट्री टारगेट ऑफ 36 in 5 overs. They managed to score 13 runs on the board after the completion of first over. That means 23. Now they have to score for victory in remaining 3 overs. That means in remaining 18 deliveries. And the equation seems to be easier a little bit, all because of that first over which caused 13 runs from Shreyas. ಅರಸು ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕನಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ. So back to this game, it's 23 required in 18 deliveries और गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए सुशांत। और पहले ओवर के खेल के पश्चात फील्ड के प्रतिबंध हट चुके हैं, पावर प्ले समाप्त हो चुका है और फील्डर इस वक्त मैदान पर छाते हुए। और गेंदबाज सुशांत ओवर की पहले गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद को इस वक्त खेलना चाह, नॉट करेक्टेड दैट वन प्रॉपरली एट द लास्ट मोमेंट बट ही गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक। और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 14 रनों पर। 14 विदाउट लॉस एट द स्टार्ट ऑफ द सेकंड ओवर। इनफैक्ट 22 रन्स टू गेट फ्रॉम 17 बॉल्स। और सुशांत गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद हल्के से गेंद को स्टीयर कर दिया इस बार शॉर्ट थर्ड मैन फील्डर के हाथों से गेंद चूकी। जब तक गेंद को बैकअप किया जाता बल्लेबाज के पास मौका था इस बीच 1 रन न प्राप्त करने का। थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर दोनों बल्लेबाजों के बीच में, लेकिन आखिरकार 1 रन न पूर्ण करने में सफल और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 15 रनों पर बिना किसी नुकसान के। जबकि दूसरा ओवर उनकी पारी का यहां पर प्रगति पर। और
सुशांत गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट संदीप जो कि काफी आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी करते हुए इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहता, चूंकि गेंद की लाइन पर नहीं आ पाए और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। डॉट गेंद। The scoreboard stays at 15 without loss in the over number second in progress. Or Sushant. Again, balled out, just gone for a loft, not succeeded. And the ball passed below off his bat and stuck to his mid off stump. Bills are disturbed. And that is the end of the innings of Sandeep. First wicket fallen for strikers, Attavara strikers in fact. Sandeep out for 11 after being scoring 11 runs. Well-known 11 runs into his credit, including 1 6 and a boundary. And a first wicket loss for Attavara strikers. It's 15 for 1 with 21 to get from remaining 14 deliveries. So after the departure of Sandeep, one more Sandeep now comes out to the middle. Sandeep number 2 for Attavara strikers. और वो इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए और सामना इस वक्त करेंगे सुशांत की गेंदों का। 14 गेंदें बाकी और रन से चाहिए इस वक्त 21। 21 रन टू गेट रिमाइनिंग 14 डिलीवरीज। और संदीप सामना करते हुए इस वक्त सुशांत की गेंदों का। और सुशांत ये गेंद ड्राइव कर दिया खूबसूरती के साथ वाइश लॉन्ग ऑफ पर, नॉट मोर देन अ सिंगल। और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 17 रनों पर 1 विकेट के अनुसार पर। 17 for the loss of 1 wicket. 20 runs to get from 13 deliveries. Still the match is now equally balanced at the situation. और अंतिम बार इस ओवर में सुशांत गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए इस बार संजय के लिए दाहिना हाथ ओवर द विकेट स्वीप करना चाहा। इस बार शॉट फाइन लेग पर और इस बार रनआउट का खतरा, लेकिन एंड मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींचते हुए सुरक्षित। कोई रिस्पांस नहीं इस वक्त नॉन स्ट्राइक रन बल्लेबाज द्वारा, लेकिन इस वक्त जब तक थ्रो स्ट्राइक रन पर पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में और विकेट कीपर थ्रो को रिसीव करने के बाद विकेटें उखाड़े बल्लेबाज क्रीज पर वापस लौट चुके थे। 2 ओवर की समाप्ति एंड अ फैंटास्टिक ओवर came from Sushant who conceded just 3 runs in this over and got the wicket of Sandeep. And after 2 overs now I must say Attavara strikers just searching for the right track. It's 16 for the loss of 1 wicket. 20 runs to get from 22 overs. That means in 12 deliveries. ಅರಸು ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕನಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ. I request the captain of Arasu Warriors please to be reported here for the toss for the toss procedure. So back to this game and the bowler brought into the attack from the commentator box and is Dion. और वो इस वक्त गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार संदीप। और 20 रन चाहिए बचे हुए 12 गेंदों में। 12 balls and 20 runs required. ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज संदीप बल्लेबाजों के सामना करने के लिए तैयार और डियोन अपने गेंदबाजी के मार्ग पर इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। अपनी ओवर की पहली गेंद 7 प्रतिष्ठित फ्रांचाइजी टीमें इस श्रृंखला में हिस्सा ले रही है। 7 prestigious franchise teams are participating in this tournament. Attavara Premier League Season 5 2024. पहली गेंद को ड्राइव कर दिया सिली मिड विकेट पर, सिली मिड ऑन पर कहना पड़ेगा। 1 रन का इजाफा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 17 रनों पर। 19 रन चाहिए, 11 गेंदें बाकी और डियोन गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए इस बार संजय सामना करने के लिए तैयार। Again, just gone for a slog sweep shot, not succeeded. Wicketkeeper made a quick work, but the batsman got his back foot onto his crease at the last moment, and because of that, he survived. और स्कोर इस वक्त रुक चुका है कुल मिलाकर 17 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। हर डॉट गेंद इस वक्त दबाव को बढ़ाता हुआ बल्लेबाजों के ऊपर और 10 गेंदें बाकी, 18 रन चाहिए विजय के लिए। 18 रन टू गेट फ्रॉम 10 बॉल्स। डियोन एक बार फिर से तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, कटर गेंद टॉप एज और मौका मिड विकेट फील्डर के लिए और इस कैच को बेहतरीन तरीके से लपकने में सफल फील्डर इस वक्त डीप मिड विकेट पर।
काफी देर तक गेंद हवा में रही थी और पीछे की ओर दौड़ते हुए इस कैच को एक बेहतर जजमेंट के साथ लपका। पीछे की ओर दौड़कर कैच लपकना उतना आसान नहीं है और यहाँ पर बिल्कुल सही जजमेंट के साथ पीछे की ओर दौड़ते हुए इस कैच को उन्होंने लपका और इस बेहतरीन कैच की बदौलत ये विकेट यहाँ पर गिर चुका है संजय का। और इस विकेट के पतन के साथ अब ऐसा कहना पड़ेगा समस्याएं और उनके लिए बढ़ चुके थे। प्रॉब्लम्स आर नाउ मोर बिल्डिंग अप फॉर देम। इट्स 21, इट्स द स्कोर इज नाउ 17 for the loss of 2 wickets. 19 runs to get. और नए बल्लेबाज का आगमन होता हुआ निस्संदेह जहां तक चौके और छक्कों का सवाल है इस वक्त ऐसा कहना पड़ेगा अत्तावारा स्ट्राइकर्स के लिए चौके और छक्कों की सख्त जरूरत इस वक्त इस मैच में कमबैक वापसी करने के लिए। सचिन नए बल्लेबाज के रूप में 9 balls remaining, 19 runs to get. डियोन सचिन के लिए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए यह गेंद ऑन साइड पर गेंद को मोड़ना चाहा, पैरों पर गेंद टकराई, तेजी के साथ रन के लिए दौड़ पड़े और एक रन यहां पर पूर्ण करने में सफल लेग पाई के रूप में और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 18 रनों पर। 18 रन बन चुके हैं, 18 रन और बनाने हैं। 18 रन स्कोर्ड, 18 runs more, still they have to score for victory in just 8 deliveries and the asking run rate is not creeping up for them at this situation। जहां तक सवाल इस वक्त गेंदबाजी का तो डियोन इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार संदीप। अंपायर विकेटों को सही करते हुए और इस बीच गेंदबाज डियोन गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए अपने ओर की 5वीं गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस बार just gone for a big one, again a quick piece of work made by the wicket keeper at the last moment, but again the batsman still at the crease and he survived। तो बार बार विकेटों को इस वक्त उछालते हुए विकेट कीपर लेकिन यहाँ पर इस बार भी बल्लेबाज बच चुके हैं। 18 रनों पर स्कोर बोर्ड रुक चुका है 2 विकेट के नुकसान पर। 18 रन चाहिए और विजय के लिए बचे हुए सिर्फ 7 गेंदों पर। और इस ओवर में अंतिम बार डियोन गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए इस वक्त यह गेंद ड्राइव कर दिया खूबसूरती के साथ लॉन्ग ऑन पर, लेकिन फीडर मौजूद, नॉट मोर देन अ सिंगल और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 19 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 19 on the board, 2 wickets lost and 17 runs required from last over and as far as the big strokes are concerned at the situation they badly required couple of boundary or sixes at this stage to get back into this match in this remaining last over। 17 runs to get, 17 रन चाहिए विजय के लिए अंतिम ओवर में और मैच निर्धारित ओवर हमसे दूर वाले छोर से यानी उस छोर से गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए गेंदबाज अरुण और जहां तक अरुण का सवाल है एक वक्त वो SNGT क्रिकेटर्स की ओर से खेला करते थे, एक बेहतर क्रिकेटर के रूप में जाने जाते हैं अरुण। इस वक्त गेंदबाज यहां पर शुरू करते हुए और दूसरे गेंदबाज को इस वक्त गेंदबाजी सौंपी गई है, अरुण को हटा दिया गया है और अरुण की जगह इस वक्त धनुष को तैनात किया गया है और धनुष मैच निर्धारित ओवर लेकर इस वक्त तैयार। 17 रन चाहिए अंतिम ओवर में। 17 रन टू गेट फ्रॉम लास्ट ओवर। संदीप सामना करने के लिए तैयार, फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलते हुए और पहली गेंद धनुष संदीप के लिए। Right arm over the wicket, first ball comes from Dhanush to Sandeep। First ball comes Dhanush। दाहिने हाथ ओवर द विकेट। इस बार शायद कुछ हद तक बाधा इस वक्त बल्लेबाज के लिए, तो बल्लेबाज वहां पर रुक गए थे, गेंद को खेले नहीं और डेड गेंद इस वक्त घोषित और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 19 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। इट्स 19 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। 6 balls लेफ्ट एंड 17 रन रिक्वायर्ड।
driven down to long on. In fact, he's got a single, and they come back for the second run. This could be tried, and this time is gone. So दूसरा रन प्राप्त करते समय रन आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए 20 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका, 20 for the loss of 2 wicket and 16 required of 5 balls now. तो इस वक्त यह गेंद ड्राइव कर दिया इस वक्त लॉन्ग ऑन की दिशा में, और एक रन यहां पर मिल चुका है, और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 21 रनों पर, 21 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। और गेंदें बाकी हैं 4 रन चाहिए 15, 15 रन टू गेट फ्रॉम रिमेनिंग 4 बॉल्स। और धनुष ये गेंद ड्राइव किया, not connected that one properly, but he got a single for that stroke. In fact, they're looking for the second, and this time he made it. Come back for the second run very safely in the end. और 2 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 23 रनों पर, 23 for the loss of 3 wicket, 3 balls remaining, 13 runs required. और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, इस बार ड्राइव कर दिया वाइड लॉन्ग ऑफ पर, एक रन, जस्ट अ सिंगल, 24 द स्कोर, लास्ट चांस, 2 sixes required in the last 2 deliveries, 12 to get from 2 balls, 2 गेंदों में 2 छक्कों की दरकार, अंतिम अवकाश इस वक्त अतावरा स्ट्राइकर्स के बल्लेबाजों के सामने, और देखते हैं बल्लेबाज 2 छक्का लगा पाते हैं या नहीं अंतिम 2 गेंद पर। वाइड 25 and now 11 required, still almost 2 sixes required in the last 2 deliveries. और एक छक्का और एक चौका लगाते हैं तो मैच टाई हो सकता है यहां पर, और अंपायर विकेटों को सही करने के बाद एक बार तैयार, और धनुष इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, 11 रन टू गेट फ्रॉम 2 बॉल्स, लेग स्टंप से बाहर, रन के लिए दौड़ पड़े, निशाना चूका, and it's going to be 1 + 1, 2 runs added, and now the match is now still alive, 9 runs to get from 2 deliveries, 8 for tie, 9 for win. और इस वक्त मैच में कशिश अभी भी बरकरार, अगर ये गेंद भी शायद वाइड होता है तो निस्संदेह यहाँ पर बल्लेबाजों के लिए लक्ष्य और आसान हो सकता है। तो इस वक्त सही गेंद की तलाश में गेंदबाज इस वक्त तैयार, दाहिना हाथ ओवर द विकेट, fantastic, that is the line, that is the line he has to bowl, and this time run out happened at the non-striker end, and now 27 the score, 9 required of last delivery. अब अंतिम गेंद पर गेंदबाज कोई नो बॉल या वाइड ना फेंकते हैं तो यहाँ पर अत्तावारा टाइगर्स की विजय निश्चित है, लेकिन क्रिकेट में ऐसा कुछ कहना मुश्किल है जब तक ना आखिरी गेंद फेंकी जाए। क्रिकेट जो कि अनिश्चितताओं का खेल है, क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टनिटीज, और जहां तक सवाल है अंतिम गेंद का, तो देखते हैं अंतिम गेंद पर गेंदबाज सही गेंद फेंकते हैं या नहीं। Last ball 9 required, and the last ball of the match is now coming up. Dhanush to the right-handed batsman. अंतिम गेंद लेग स्टंप पर, सही गेंद गोचे, that's it, 8 runs victory for Attavara Tigers against Attavara Strikers, and with that 8 runs thrilling victory, they back the complete point. So match number 2 has been came to an end, and match number 3 is now going to start with Jeshut Mile.
Man of the match of this match award goes to Dhanu of Attavara Tigers because of its fantastic batting performance. I request Mr. Dhanu of Attavara Tigers please come on to the stage and receive the man of the match award from the organizers. So match number 2 has been came to and match number 3 is now going to start with the short while. Until then we're taking short break and एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे अंग्रेजी में सतीश के साथ जब उनकी पारी की शुरुआत तीसरे मैच की शुरुआत यहाँ पर होगी. ಅಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಧನು ಅವರು ಶ್ವೇತಾ ಇವರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡು ತಂಡದವರು ಅಣಿಯಾಗಿರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಫಾರ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ರೈಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಧನ್ಯವಾದ. Welcome back for the match number 3 of the day number 1 of prestigious Attavara Premier League Season 3, which is proudly organized by Sri Durga Friends in this historical UCG cricket ground. Everything is set for the match between team Arasu Warriors versus Babagudda Tigers. And here is the first ball. And appeal for leg before wicket. Umpire straight away is just talking about the mistake done by the bowler, that Dikshit came right in front of umpire. That is a protected zone, so that he's just missing the opportunity of getting a wicket in the form of leg before wicket. It's all happening in for some bowlers. Actually, they need to correct when they are having a practice, isn't it? Whenever coming right in front of umpire, it's not so easy for umpire to give the decision, and you are the losers. And I think the batter will go into the beneficiary. Okay, and even if you are doing the same mistakes, so that the bowlers have to get away from that line. When after that follow through, they need to keep your side into your left. You are bowling around the wicket, you need to keep your left, and if you're bowling over the wicket, you need to come over your right side. So now, while changing your angle, bowler have to tell the umpire, I'm going to bowl around the wicket. It's very important for the bowler, because otherwise the umpire will going to call this a no ball. So yes, umpire Roland Pinto just giving some suggestion for the bowler, because you should know that the rules and regulation, of course, it's not only for the umpires. It's actually, it's the players should know that, the rules and regulation. That's a big problem in the present cricket. The players doesn't know anything about the rules and regulation. And whenever the umpire giving the decision, they are very, very upsetting, because of they don't know anything about the rules and regulation. This time, wicket number first, which is back into pavilion. Even though he missed the opportunity of getting a wicket here in the first delivery, but nothing much lose the heart here. He got a wicket in the second delivery itself. The batsman going for the unorthodox cricketing stroke, Manjunath, couldn't manage to keep it down. Ball went straight to the hands of fielder. The wicket number, the first, which is back into pavilion. The fielder down at backward point region, making no mistake at all. And wicket number first, which is gone, and the score of 1. It's 1 without one for the loss of 1 wicket, team Arasu Warriors.
The new batter in is Nazir walking towards the middle. Nazir walking towards the middle with some responsibility. Wait to see how Nazir will go to build the partnership here for the team Arasu. Team Arasu Warriors. Third time in this over. Going to be punishable from the umpire. Pitched in a line which is on the leg stump. Because of he bowled the off cutter. Again, further ball is moving away from the legs of the batter. Going outside the line of leg stump. White signal umpire. 2 for the loss of 1 wicket in the over number. First is in progress. Dikshit. Bowling right arm over the wicket, and the batsman tried to cut that one away from his body, missed it completely. Then wicket keeper behind the stump did the rest. Back to bowler, no runs scored, and score remains on 2 for the loss of 1 wicket. The match between Babu Gudda Tigers versus Arasu Warriors, the match number 3. Both the teams are playing their first match of their league stages. Straight to the answer field. Oh, he drops the catch. Absolutely straightforward catch missed by the mid-wicket fielder. That problem for the fielder is that is little bit urgency as a ball which is came to him, and he couldn't manage to get the ball because of that early into that the ball, the 2 hands which is came too early to that line of the ball, and ball just slipping out of his hand. Driven that one, the wide of that cow point fielder. Before that fielder will go into moving to his left to field the ball. Ample time for the batter to complete the single. With that single, scoreboard moves on to 4 on the board for the loss of 1 wicket in the over number. The first is in progress. Team Arasu Warriors are searching for the right track in the first over. Dikshit from the far end, operating from the Attavara strikers banner end. Balls appeal for leg before wicket. Oh, opportunity of a run out there. A ball just misses the stumps. The batter survived. The first wicket, first over is completed. Good over there from the bowler Dikshit. Bowled a tidy first over. Power play over always going to be a great challenge for the bowlers to restrict the runs, and he restrict the runs for his team. Attavara Tigers and the team Arasu Warriors are 5 for the loss of 1 wicket. Babu Gudda Tigers, little correction, are managed to pull the things back by bowling tidy over. Babu Gudda Tigers. It's 5 for the loss of 1 wicket. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅತ್ತಾವರ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಗುಡ್ ಡೇ ಬುಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಗುಡ್ ಡೇ ಬುಲ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಅತ್ತಾವರ Attavara strikers, please be reported here immediately for the signatures. It's 5 for the loss of 1 wicket in the over number. Second is in progress. Second will go into start from the community box end. The Wilson is a bowler. The very popular name Wilson as far as the tennis ball is concerned. The popular tennis ball used in a present cricket. The Winson. But in this tournament, it's not a Wilson and Winson. It's a training ball is used. Beautifully flicks that on off his legs down to mid-wicket region. 2 fielders behind the ball. And at last, the fielder from a deep mid-wicket, short mid-wicket region, almost running towards deep mid-wicket region to get that ball. Ample time for the batter to complete 2 valuable runs. Nazir picked up his couple of runs by nicely flicks that on off his legs. 7 for the loss of 1 wicket in the over number. Second is in progress. Wilson, right arm over the gate, top edge, but ball still will going to travel, and the fielder will go and get that ball after pitching inside the boundary line, went into the boundary for 4 runs. Total misjudgment by the fielder. What could be the catch there for the fielder? Because of that, fielder reacted very slowly to that catch, misjudging that one. And after that, ball has got a fingertips into that fielder. Ball went into the boundary, 1 bounce for 4 runs.
With that boundary, scoreboard moves on to 11 for the loss of 1 wicket in the over number. Second is in progress. Wilson to continue from the commentary box end. Bowler's back drive. Slight a bit of fumble from bowler on his follow through, so that Nazir will going to grab this opportunity to get the single. With that single, scoreboard moves on to 12 for the loss of 1 wicket. Umpire for this match, umpire Suresh Mudubidre, and at square leg umpire Roland Pinto. This time, catch, it is a call. Catch has been taken. Very low catch taken there by the fielder. The same fielder, I think, who dropped the catch in the first over, is now standing in a different area, that is in the back foot point region. And this time he got taken a very good catch, very low to him, just below his knee level. And just kept the eye on the ball to last moment. And the wicket number 2, which is back into pavilion of team Arasu Warriors. It's 12 for the loss of 2 wicket. Nikhil is a new batter in, slowly walking towards the middle. Just in number 73 and 23. The 2 batters out there in the middle for the team Arasu Warriors. The Wilson has got a very important breakthrough in this particular over. Loose stroke played by the batter, isn't it? The batter Manjunath didn't go at getting that one. Rakshi is the batter. Couldn't manage to judge that flight in the delivery. Pushes that one straight to the answer fielder. Nicely driven down to long on region. Protection is there in the deep long on region. Before the fielder Dikshit will go into run to his friend to field the ball. Ample time for the batter to complete the single. Nikhil picks up his first run. Scoreboard moves on to 13 for the loss of 2 wicket. This time Nazir just half-hearted push. Catch, it is a call, but ball will go to land it safely. And before the throw coming from the deep extra cover fielder, ample time for the batter to complete that 2 valuable runs. Half-hearted stroke there came from the bat of Nazir, and half a push, half a drive. But luckily for him, that ball didn't travel to the fielder. Fielder is not really trying for the catch. And one more over, which comes to an end. After completion of over number 2, Arasu Warriors are going very well in the run rate of 7.5 runs per over. It's 15 for the loss of 2 wicket. You are watching Attavara Premier League Season 5. Meanwhile, bowler will going to start the 3rd over from the Attavara strikers end. Kaushik brought into attack, and for Kaushik there is a fielder at deep cover point, long off. Long on is there, mid wicket, and a little bit fielder is down at the deep fine leg region, little bit fine. And short fine leg, short square leg, short mid wicket, short mid off, short cover point. First ball, and delicately plays it down to backward point region. Good placement there by the batter. And before the fielder will go into return the ball, ample time for the batter Nikhil to complete that 2 valuable runs. Quite deliberately batsman edging it down. We're seeing that there is no fielder in the backward point region. The 3rd man is very fine. The fielder cover point, there's a huge gap between cover point and short fine leg, and delicately played there by the batter. Now one fielder coming towards the backward point region, I think it's rightly so. Because of that huge gap, the batsman will going to get easily that couple of runs if he manages to push the ball in that area. It's 17 for the loss of 2 wicket. Kaushik to Nikhil. This time Nikhil drives that one just for a single, because this time the fielder will going to get the ball very quickly because of that the field placement that is the backward point region. And one more single. With that single, scoreboard moves on to 18 for the loss of 2 wicket in the over number 3 is in progress. Nazir is on strike. Kaushik. Bowled him, cleaned him up after got an inside edge of the bat. The Nazir little bit late to react to that strokes. Half-hearted, because we can see that his bat which is not really coming to the line, and ball which is kept very low is coming very down the track. The bat lift which is a little bit high, after got a little bit inside edge of the bat, ball went into the stumps. Wicket number 3, which is back into pavilion. It's 18 for the loss of a 3 wicket Arasu Warriors.
ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರನ್ನು ವಿನಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಗುಡ್ಡೆ ಬುಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಅಥಾವರ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದಯಮಾಡಿ ಸಂಘಟಕರೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. Sharif is a new batter in. Kaushik to continue. Sharif drives that nicely into mid-wicket region. Protection is there in the mid-wicket region so that he need to settle for the single. The way that single score moves on to 19 for the loss of 3 wicket. And Kaushik will go into ball 5th time in this over to the right-hander batsman Nikhil. Wanted to go for the reverse sweep, didn't got enough bat onto that. Of course, no bat at all in that occasion, just the bat which is missed out by the batter, so that leg by call by umpire with the addition of that single score, but moves on to 20 for the loss of 3 wicket in the over number 3 is in progress. And slowly the fielding team, Babu Gudda Tigers, bowling some very good tidy lines, tidy overs. Oh, wanted to go for the reverse sweep, missed it by the wicket keeper. Even that fumble from the short fine leg fielder, and batter will go in to get a single in the form of bye. One more good over, 3 gone after completion of over number 3. Arasu Warriors are at 21 for the loss of 3 wicket. They're going exactly 7 runs per over. Last over remaining in their innings, and wait and see how many runs they will go into score in this last over. By seeing the nature of the ball, which is very hard, and training ball which is used for this particular tournament, probably it's going to be opportunity for the batters rather than the bowlers. But it's not like that. In the previous 2 matches we can witness some very good bowling performance as well. If you bowl a very good line and length, it can restrict the flow of the runs. Abhiram is a bowler, will go into start the last over of the innings of Arasu Warriors. This time driven down to deep long on revision, and the fielder will go and get there, and just a single. With that single score moves on to 22 for the loss of 3 wicket. Left arm around the wicket. Again, opportunity of little bit hard opportunity for the wicketkeeper behind the stump for the caught behind. They missed it completely, then they got opportunity to complete the singles. Runs are coming in the form of singles in this last over for Arasu Warriors. 23 for the loss of 3 wicket. Last 4 deliveries remaining in their innings. I request again all the players of playing the next game, please be reported. Catch it is a call. Catch which is taken in the mid-wicket region. Excellent catch which is converted by the fielder down at mid-wicket, just charging to the ball, and completed a very good catch. Just kept the eye on the ball till the last moment. The wicket number 4 which is back into pavilion. So jersey number 44, Kishan, the fielder down at the mid-wicket region, completed the catch. It's 23 for the loss of 4 wicket. ಗುಡ್ ಡೇ ಬುಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅತ್ತವರ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. So last 3 deliveries left in their innings, and Akshit is a new batter in, came into middle. Left arm around the wicket. This time, what a shot! Straight down the ground, as straight as an arrow. And he got the distant ball just landing in front of our commentary box. Magnificently struck. The kind of treatment which is required in this last over. And Akshit just came in and delivered. Very, very good looking cricketing stroke. It's not so easy cricketing stroke to play in the books for in the underarm cricket when you're playing over the head of the bowler. Straight over the head of the bowler. Very straight indeed. Glorious shot. 29 for the loss of 4 wicket. Last ball remaining. Last ball,
2 delivery remaining lead to correction. Oh, that might be ball deflected from the leg, or it is from the stumps. Just I want to see by call by umpire. There's something which is deflected, might be. Last delivery remaining, umpire. Last ball remaining. 30 for the loss of 4 wicket. Just I want to see the ball, whether the ball hits the stumps or not, because the ball which is changing the direction, the umpire called it's a bye. That means no bat, but I'd like to see how the ball is changing the direction, whether it's a ball hits the stumps or it's a bat. It's definitely ball hits the stumps. Still, I've got very good eyesight. The ball is just deflected from the stumps, and again the bowler will going to continue, and inside edge of the bat will going to complete the single there. 31 for the loss of 4 wicket, and 32 is going to be a target for the team Babugutta Tigers. So Babugutta Tigers have to get 32 runs in the stipulated 4 overs, 24 ball, 32 runs. The target for the team. Babugutta. Wait and see. Babugutta Bulls how well will going to get this. Babugutta Tigers will going to get this total, and it's going to be very interesting because the fighting total on the board. You cannot underestimate this total, and at the same time, a lot of hard work which is required from the batter as well as from the bowlers of the opposition team to get the victory. Wait and see the strategy from these two teams to get the victory. We'll take a short break here, and after the short break, my friend Mr. Gopi will go to take over the microphone. Meantime, I request some players, Attavara strikers, ಕೆಲವು ಆಟಗಾರರ ಸಹಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. Attavara ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Dhanyavad Satish. So the target is 32 in 4 overs for Babugutta Tigers. That means they have to score 32 runs in the stipulated 4 overs with a required run rate of exactly 8 runs per over, set by Arasu Warriors. जहाँ तक सवाल है बाबूगुड्डा टाइगर्स का, तो 32 रनों की दरकार इस वक्त उन्हें
और दोनों आरंभिक बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर मौजूद अखिलेश और विल्सन, जबकि निखिल इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए 32 रन्स दे हैव टू स्कोर इन द स्टिपुलेटेड 24 dealers with the help of 10 wickets. The present equation shows for them. और उनकी पारी की शुरुआत यहाँ पर होती हुई पहला और एकमात्र पावर प्ले ओवर उनकी पारी का इस वक्त शुरू होता हुआ, और गेंदबाज इस वक्त निखिल गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए, तो अंपायर ने इशारा किया कि उनकी पारी की शुरुआत, तो पहली गेंद लेकर निखिल इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ के बल्लेबाज अखिलेश के लिए। ओवर की पहली गेंद दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार ऑन साइड पर खूबसूरती के साथ गेंद को निकाल दिया, मिड विकेट पर गेंद जाती हुई इस वक्त डीप मिड विकेट पर प्रोटेक्शन मौजूद, और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। ऐसा कहना पड़ेगा, just working about the toss on to a deep backward square, deep mid wicket in fact, he's got a couple run for that stroke, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 2 रनों पर, यानी रनों का सिलसिला इस वक्त शुरू हो चुका है। इट्स 2 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर, और गेंदबाज निखिल इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए, दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद इस बार रिवर्स शॉट खूबसूरती के साथ इंप्रोवाइजेशन करते हुए गेंद को खेल दिया बैकवर्ड थर्ड मैन की दिशा में, और एक बार फिर से 2 रन बल्लेबाज बटोरने में सफल। खूबसूरती के साथ रिवर्स शॉट के जरिए गेंद को इस वक्त रिवर्स शॉट खेला था गली फील्डर की बाईं ओर से, 2 रन बल्लेबाज प्राप्त करने में सफल, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 4 रनों के योग पर बिना किसी नुकसान के। 4 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस, और निखिल फिर से एक बार गेंदबाजी के मार्ग पर तैयार। 2 गेंदों में 4 रन इस वक्त बटोर चुके हैं गेंदबाज अखिलेश, और अपनी अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार। यह गेंद ऑन साइड पर गेंद को मोड़ा इस वक्त बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में, एक बार फिर से 2 रन कम से कम बल्लेबाज को प्राप्त होंगे, और 2 रन इस बीच बल्लेबाज प्राप्त कर चुके हैं। ऑन साइड पर गेंद को मोड़ना चाहते थे, बल्ले का अंदरूनी किनारा इनसाइड एज जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इस वक्त टकराता हुआ, और जब तक गेंद को डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर थोड़ा सा दौड़ लगाने के बाद सीमा रेखा के अंदर फील्ड करे, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। 3 गेंदे 6 रन बन चुके हैं, और निखिल एक बार फिर से गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए, दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ड्राइव कर दिया इस वक्त, नॉट क्वाइट मिडलिंग, ओह इन फैक्ट वंस अगेन अ फंबल एंड द बैट्समैन वंस अगेन अ कपल, इन फैक्ट दे लुकिंग फॉर द थर्ड, लेकिन तीसरा रन यहाँ पर नहीं लेना चाहेंगे। 4 गेंदे 4 कपल रन, और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 8 रनों पर, 8 विदाउट लॉस। इस बार मिसफील्ड की वजह से 2 रन बल्लेबाज प्राप्त करने में सफल, जो एक्स्ट्रा कवर फील्डर ने किया था, और 8 रनों पर स्कोरबोर्ड इस वक्त पहुंच चुका है बिना किसी नुकसान के। और गेंदबाज निखिल एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, बल्लेबाज अखिलेश के लिए, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, लेग स्टंपर डिफ्लेक्टेड फाइन एंड he's got the boundary for that. Fantastically turns it away down to a deep backward square leg, wide of the square leg fielder, and finds the gap as well at last, और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 12 रनों पर। खूबसूरती के साथ गेंद को इस वक्त मोड़ दिया था डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर बल्लेबाज ने, और चौका इस वक्त प्राप्त करते हुए बल्लेबाज अखिलेश। अंतिम गेंद इस ओवर में बाकी, और गेंदबाज निखिल इस वक्त गेंदबाजी के मार्ग पर तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए इस ओवर में अंतिम बार अखिलेश के लिए। Lofted. This time, I think it could be gone all the way. Yes, it does. It hitting to the roof of our commentator box stand, and that is an absolutely perfect strike. A huge 6 came from the bat of Akhilesh, and a fantastic start for him and for बाबूगुड्डा टाइगर्स। It's 18 without loss. Terrific start for them. 18 रन पहले ओवर में बन चुके हैं, और 18 रन अखिलेश ने पहले ओवर में जड़े, और इन 18 रनों की बदौलत अब इक्वेशन बिल्कुल आसान। 18 balls left, 18 runs now they have to score for victory. That means 14 runs now they have to score for victory. 32 the target, 18 runs already scored, 14 runs more now they have to score for victory. ಅಲ್ಲಿ ಅತ್ತಾವರ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ಕೆಲವು ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.
तो पहली बार इस मैच में इस वक्त सामना करने के लिए तैयार बल्लेबाज विल्सन और गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए हमसे दूर वाले छोर से, और दूसरा ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ यहाँ पर बाबूगुड्डा टाइगर्स की पारी में स्वस्तिक का गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए, और फील्डिंग में जमावट इस वक्त करने के बाद अपनी ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए तैयार। ये गेंद बेहतर गेंद, परफेक्ट ऑफ कटर डिलीवरी, और गेंद को खेला तो जरूर लेकिन जगह नहीं बना पाए, और बैक टू द बॉलर की दिशा में गेंद को फील्ड किया जा चुका है। गेंदबाज वाला रन स्पीच नहीं मिला। अगली गेंद लेकर तैयार, लेग कटर गेंद, पैरों पर गेंद टकराई, अपील जरूर लेकिन गेंद लेग स्टंप से कुछ हद तक बाहर की ओर निकलती हुई लेग बाई के रूप में एक रन उनके खाते में जुड़ चुका है, और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 19 रनों पर, 19 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर सेकंड इन प्रोग्रेस। और फिर से एक बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद अंदर की ओर आते हुए गेंद परफेक्ट ऑफ कटर, गेंद को जगह बनाते हुए खेला वाइडिश लॉन्ग ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के दरमियान एक रन मिला, और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 20 रनों पर। बेहतर 3 गेंदें इस ओवर में गेंदबाज स्वस्तिक के इस वक्त फेंक चुके हैं, और अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथों ओवर द विकेट। ये गेंद बेहतर, फैंटास्टिक डिलीवरी, जस्ट गॉन फॉर अ बिग वन, बीट द फाइन लेग फील्डर, इनफैक्ट दे कंप्लीटेड वन, और दूसरा रन इस वक्त बल्लेबाज को मिलेगा, और लेग बाई का इशारा इस बीच, और गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए, और पीछा करने के बावजूद गेंद तक पहुंच नहीं पाए, और आसानी के साथ गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी थी 4 रनों के लिए। तो इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 24 रनों पर। It's 24 without loss in the over number second in progress. और 8 रन सिर्फ चाहिए विजय के लिए, जस्ट 8 टू गेट फॉर विक्ट्री, और स्वस्तिक गेंदबाजी करने के लिए तैयार। यह गेंद बेहतर गेंद थी, परफेक्ट ऑफ कटर, गेटिंग इज इनसाइड एज ऑन दैट एट द लास्ट मोमेंट, और मिड विकेट पर जब तक गेंद को फील्ड किया जाता है 1 रन का इजाफा हो चुका है। 25 रन, 13 गेंदें बाकी, 7 रन चाहिए विजय के लिए। द इक्वेशन सीम्स टू बी मच इजियर नाउ एट दिस सिचुएशन फॉर बाबूगुड्डा टाइगर्स। इस बार लेग स्टंप से बाहर, वाइड, 26 विदाउट लॉस, 6 टू गेट फॉर विक्ट्री। रिवर्स शॉट, इम्प्रोवाइजेशन, लेकिन नॉट मोर देन अ सिंगल। 27 द स्कोर, 2 overs completed, and 2 overs remaining, and 5 runs to get. तो गेंदबाज लकी यानी लकेश इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए 5 runs टू गेट फ्रॉम 20 डिलीवरीज। निस्संदेह घातक गेंदबाजी की जरूरत गेंदबाजों की इस मैच में कमबैक यानी वापसी करने के लिए, और गेंदबाज लकेश के हाथों से फिसल चुकी है इस वक्त गेंदबाजी करते समय। एक बार फिर से गेंद को उठाने के बाद अपने गेंदबाजी के मार्ग पर तैयार, दाहिने हाथ तो ओवर द विकेट, ओवर की पहली गेंद, लेग स्पिन गेंदबाजी, starts off with a wide, 28 now without loss at the start of the 3rd over, और फिर से एक बार लकेश lost it, and just he finished the match in a style with a 6. Comprehensive victory by 10 wickets for Babugudda Tigers against Arasu Warriors, and with that 10 wickets comprehensive victory, they back the complete point. So fantastic victory for Babugudda Tigers against Arasu Warriors, and now the third match of this tournament is now comes to an end. Just short while ago, man of the match of this match award goes to undoubtedly the man who scored
24 runs in just 9 deliveries with a strike rate of over 250. Akhilesh of Babu Gudda Tigers adjudged man of the match. I request Mr. Akhilesh of Babu Gudda Tigers, please come on to the stage and receive the man of the match award from the organizers. Akhilesh of Babu Gudda Tigers, please to be reported here for the toss procedure. Good Day Bulls versus Attavara Strikers will take over the next match. And I request because of that, the captains of Good Day Bulls and Attavara Strikers, please to be reported here for the toss procedure. So man of the match, Akhilesh, adjudged the man of the match. I request Mr. Akhilesh to please come on to the stage and receive the man of the match award. ಅಲ್ಲಿ ಅಖಿಲೇಶ್ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ಆದಂಥ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷಾ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಇವರು ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಶ್ರೀಯುತ ಅಖಿಲೇಶ್ ಇವರಿಗೆ ವಿತರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Akhilesh scored 24 runs unbeaten in just 9 deliveries and received the man of the match award from Mr. Satish. And the third match came to an end just short while ago. Fourth match is now going to start between Good Day Bulls versus Attavara Strikers, and that match starts within just a short while. और तब तक एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं. छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे एक बार फिर से अंग्रेजी में सतीश के साथ, जब यहाँ पर मैच नंबर 4 की शुरुआत होगी. अत्तावरा प्रीमियर लीग सीजन 5 2024 इस मेगा श्रृंखला के अंतर्गत जिसकी शानदार तरीके से प्रस्तुति की है श्री दुर्गा फ्रेंड्स ने. तो अब वक्त है एक ब्रेक का. नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक. थैंक यू, धन्यवाद. So thank you very much, Gopi. Welcome back for the match number 4 of this prestigious Attavara Premier League Season 5, which is proudly presented by Sri Durga Friends in this UCG cricket ground. All set now for the 4th match, and the match will be played between two very good teams in this league stage matches. Team Attavara Strikers takes on team Good Day Bulls, and toss which is completed, and toss which is on by the captain of Attavara Strikers, and elected to field first. Just waiting for the fielders to enter the ground, and opening batters, please get ready. The umpires are waiting for the two teams, and umpire Roland Pinto along with them umpire Nasir Bajal. Two umpires are in the ground. So Good Day Bulls and walking towards the middle. Some good players in the middle. And Attavara Strikers elected to bat first, and very interesting because the last 2-3 results which is came. So after winning the toss, captain of Attavara Strikers are elected to bat first, quite surprisingly. Attavara Strikers in the first match, they lost against team Vaidyanath, correction from Attavara Tigers. So that wait and see how Attavara Strikers will going to strike back in this second match of the league stage matches. Good Day Bulls, they will going to play their first match of the league stage matches
and wait and see how they will going to start their journey in this league stage matches. Akshay is the bowler, the one more very good all-rounder for the side of Good Bulls, will going to start the proceedings from the commentary box. And so power play over, and Sandeep Babagudda is one more very good striker of the ball, and of course didn't got under that much of success in the first match, but in the last edition of the Attavara Premier League, 4th edition, he really batted very well, even though he just didn't got a good start, but he finished well with some very good the batting performance in that season 4 of Attavara Premier League. So very good contest between two very good players, Akshay versus Sandeep. First ball starts with the warm-up delivery of the morning, which is gone far away outside the line of off stump, and white signal by umpire. With the addition of that single, they started their journey one without loss of any wicket. Akshay, left arm over the wicket. This time appeal for leg before wicket. Umpire says not out. It might be the ball just going a little bit outside the line of off stump because of that the direction of the line of the ball when the batsman hitting that line. It's going to be a very, very good shout there from the bowler, and a slight a bit of benefit of doubt which is given for the batter in that occasion because of the direction that ball is moving, and the turn what Akshay has got moving this way. Let's see that ball is going away outside the line of off stump, but quite nicely played there by Sanjay by opening the face of his bat, just getting the direction down to short third man region for a single. He's off the mark with the single. Scoreboard now moves on to 2 on the board without loss, 3 on the board without loss of any wicket. Akshay, ball system again. Sandeep playing against the line of the ball. It's not so easy whenever you are going against the line of the ball, even though it's a power play is on, but need to play the strokes with the merit of the delivery. This time batter Sandeep wanted to go for the reverse sweep, one of his favorite shot, Sandeep, but again fails to get the ball into his bat. Dotted delivery, 3 without loss of any wicket. Akshay balls. Again that ball well within the reach of the batter. It's an opportunity created for Sandeep to get the ball into his bat, but it's too early into the stroke. Ball missed it complete, and Lara behind the stump did the rest back to bowler. This time up and over, just over that infield, but couldn't manage to get that timing behind the stroke, but good enough for him to complete that 2 valuable runs. With that 2 valuable runs, Sandeep got his first run at last, and after completion of first over, searching for the right track. Attavara strikers are 5 without loss of any wicket. Good over there from Akshay, very tidy over indeed. Even though he didn't got that much of success in this over, but he managed to get that very good tidy over in the first over. 5 without loss of any wicket. Bowler Sunil will go into starts his first over and second over of the innings of team of strikers Attavara, and after that slow start, wait and see how well Attavara strikers will go and get some acceleration. After that power play spread out field, the fielder down at deep cow point, one at deep long off, long on is there wideish, and one fielder at mid wicket, that was a little bit squarer between square leg and mid wicket, and one fielder down at deep third man region, I think so. So that there's a short mid wicket, there's a short extra cover, cow point, short third man, short fine leg. This time Sanjay hit the ball pretty well, but lack of placement, ball went straight to the hands of deep mid wicket region, and ample time for Sanjay to complete the single. With that single, scoreboard moves on to 6 on the board without loss of any wicket. Appeal for leg before wicket, but ball just certainly will go into miss the leg stump. Leg by call by umpire Nasir, and with that leg by scoreboard moves on to 7 on the board for the loss of without loss of any wicket. The very good bowling performance here from the bowlers so far. Good Bulls bowler just keeping that tidy line and line. This time again Sanjay wanted to go for that unorthodox switch it, but missed it completely from the bat. Leg by call by umpire. One more addition. Runs are coming in the form of singles, in the form of extras. 8 on the board
without loss of any wicket in the over number second is in progress. This time, lovely shot, plays it down to deep third man boundary. It's going to be a ball running very quickly down to deep third man boundary for 4 runs. This time, the batter Sandeep reaching for that wide delivery outside the line of off time. He's just got a bat onto that in the last moment. And perfect time for Sandeep to get that boundary. Didn't got the runs on the board, that much of runs on the board. And that boundary will going to give some kind of comeback here for the strikers. It's 12 on the board without loss of an wicket. This time again, a lovely and exquisite switch hit comes into play. No one there in the deep third and man region. The back-to-back 2 boundaries coming up here for Sandeep. The one of his favorite shot. The 2 boundaries will going to give a slight a bit of pressure for the bowler. So he's straight away keeping one fielder in that deep third man region. After that 2 boundaries. It's 16 without loss of any wicket. Sunil last time in this over. Now long on brought into inside the ring, and very interesting 5 fielders inside the ring now. Now sending that fielder a deep long on. Now it's a 4 fielders. And after that power play, you can keep 5 fielders outside the circle. Sometime the bowlers doesn't know about that. The captain of the opposition fielding side. This time again he wanted to repeat that shot. This time opportunity to run out there in the non-strikers end. Very good attempt there by the bowler to make that run out, and wait and see whether Sandeep is safe or not. But a very good athletic collection coming from the hands of the bowler Sunil. Diving attempt to make that run out. Umpire Nasir Bajal referring for the third umpire to give the decision whether the batter is safe or not. It's 16 on the board. It's turning out to be a productive over for the team strikers in this over. Sandeep has got 2 boundaries, but now wait and see whether he will going to be a safe or not. Durga friends organizing this cricket tournament. In the last 4 years, they are successfully organizing this cricket tournament, and in this UCG cricket ground. And 2 days of cricket tournament under natural light. It's not a floodlight. It's only the day matches today and tomorrow. That Attavara Premier League season will going to commence in this stadium. Of course, incoming tournaments, just talking about in this UCG cricket ground, the batsman is safe, not out called by a third umpire. Sandeep is safe. And coming March 30th, there will be a Nutan Champions Trophy in this UCG cricket ground. 3rd year Nutan Friends Trophy under the memory of late Astin Mentoro. And in this Urva Cricket Stadium, the match will be starts on 30th, that is on Saturday. And the Masters Trophy will be played. The 8 teams will go into participate in this Masters Trophy. On the 31st and 1st of April, and the 2 days of cricket tournament for local pool and as well as for the Mangalore pool. The winners will going to get the cash prize of rupees 45,555 in that the youngsters, and 25,555 is the runners. Again, it's going to be one more boundary. Sandeep slowly is settled down and started to freeze his arm, and he got that loose delivery outside the line of black stump, and Puneet bowled that wrong line to the wrong person, and the wrong person in the sense one who are really very good player in the onside region, and he definitely will not going to give this opportunity, miss this opportunity to get the boundary. Again, the line is not so good in occasion, plays it nicely down to deep square leg region, just a single, good piece of fielding there by the fielder, and scoreboard moves on to 22 without loss of any wicket. Good going here for the team Attavara strikers. They're playing their second matches of the league stages. They wanted to get their points in this second match after that their loss in the first match. Again, it's going to be punishable from the umpire Roland Pinto. It's going to be a wide, one more extra, 23 on the board without loss of any wicket in the over. Number 3 is in progress. Puneet struggling to get his line and length as they wanted to ball that around midland off stump, but line is just going outside the line of leg stump.
Again, he balls away from us. Right now, over the wicket again. It's going to be not a good line. One more wide. He's a bit struggling. One more extra. Scoreboard numbers on to 24 on the board. Each and every run is going to be a very crucial. Now, Sunil just walking towards Puneet has got some word with him to not to ball that. Just keep the line which is around outside the line of off stump. And here is Sanjay will go into face next delivery. That is a very good line and equally well played by Sanjay. Just steers that one down the short third man region for a easy single. Wicket keeper himself running towards the ball. Not a wicket keeper, in fact, a short third man fielder Sunil. And one more single is added total. Scoreboard numbers on to 25. Quarter century coming up here for Attavara strikers. They got that one in 2.3 overs. That means 15 deliveries. They scored 25 valuable runs. Again, Sandeep wanted to go for the reverse sweep. Didn't got that much of good connection. Just a single for him. With that single, scoreboard numbers on to 26 on the board for the loss without loss of any wicket. Very good partnership is building up for the opening wicket from the opening batters of Attavara strikers. Again, it's going to be a wide, far away outside the line of leg stump. It's going to be a indisciplined performance so far. 3 wides in this over, I think so. And scoreboard numbers on to 27 on the board. Puneet. Bowling away from us. Right arm over the wicket. Again, nothing much to do with the delivery. The batsman first he wanted to go for the big shot. After last moment seeing the line of the ball, he just left the ball, rightly so. Wide call by umpire. 4th wide of this over. It's 28 on the board. Puneet bowls. Lovely delivery. Beautifully bowled. And it's plumb in front of wicket. Sanjay shuffled across the line of the delivery. Slight bit of late appeal coming from bowler Puneet. That's why some late decision coming from umpire Roland Pinto. And because appeal which is certainly required if you wanted to get the result or wicket, need to appeal. Without making any appeal, it's very difficult to get the decision from the umpire. And after that ball hitting on the midland off stump, and Puneet just a late reaction coming from the bowler to appeal that leg before wicket, and given him the partnership which is just broken. 28 runs partnership for the first wicket. The Sanjay is back into pavilion. 29 jersey number walking towards the middle. Sandeep Junior, and last delivery remaining in this over. Puneet bowling last time in this over to Sandeep Junior. To Sandeep out there in the middle for team Attavara strikers. They're in a good position in this particular match, but job which is not yet over. They need to continue the start what they got. Again, against the line, he wanted to go for the big shot. Quite luckily, they got a last moment. He got a bat onto that, inside edge of the bat. Good comeback here by Puneet after that. Some wide deliveries in this over. 3 overs completed, but still Attavara strikers are in a good position. It's 29 on the board for the loss of 1 wicket. Last over remaining. And 29 which is the total score of the team. And 29 which is the jersey number of Sandeep. So quite interesting. The 29 which is a jersey number and 29 which is the score of a team Attavara strikers. And Sandeep Junior will going to take the strike. So last over will going to start from the far end Attavara strikers end. Nelson, the bowler, the very popular name Nelson. When you are hearing that name, we are just remembering the great social reformer Nelson Mandela of South Africa. Again, lovely delivery indeed, but ball just going to miss the leg stump, and ball which is going to miss the leg stump in that occasion. And the scoreboard numbers on to 30 on the board for the loss of 1 wicket. Nelson to continue from the far end. 5 deliveries remaining.
Nelson keeping one fielder in the deep long off. Deep long on, in fact. There is no long off at all. Very interesting. There is a mid off, short cow point, short fine leg, short mid wicket. The deep cow point, which is a very, very defensive field in the onside, but very offensive field in the offside region. There is no long off. This time Sandeep wanted to go for the switch hit, one of his favorite. This is a very lucky indeed. Last moment ball missed it inside edge of the bat. Again misses the wicket keeper's hand. Prasad, of course, popularly known as DJ Lara because of his dedication towards the music, and is converted as a DJ Lara. And as far as a very popular name in the music is concerned, as well as the cricket is concerned. The good cricketer again. Oh, that ball very close to the off stump. Looks like wicket keeper maybe wanted to get the result in the form of caught behind the wicket or a stump out, but nothing has happened here. The good delivery, very good final over is in progress there from Nelson, keeping that line very well, and which is just a little bit outside the line of off time. Nelson again. Sandeep wanted to go for the big shot. This time suicider, absolutely suicider. Just I want to see that I think the Sandeep Junior will be the batter, will be going to be out in the form of run out, so that Sandeep Babu would have to go to the non-strikers end. This is the frustration whenever you're not getting a wicket, not getting a runs, and Sandeep desperately wanted to come to the strikers end. The one more very experienced campaigner, Sachin, walking towards the middle. Sachu with the jersey number 10. The bowler is also jersey number 10. It's definitely the battle between 10s, 10 versus 10. Very, very popular, the number which is jersey number 10. Only the legends are wearing that number, jersey number 10. Sachin Tendulkar, Leon Messi, Maradona, all are wearing that jersey number 10. A very popular, again inside edge of the bat, they're going for the quick single, chance of run, directed and is gone. Excellent piece of fielding there by the fielder at short fine leg region, quickly releasing the ball and getting the stumps, and wicket number 3 back into pavilion. It's 31 for the loss of 3 wicket. Good comeback. Nelson bowled a very, very good over so far. One delivery left in this over, and Kiran, now I got his regular name, which is Kiran. It's not a pity, but just like I mentioned sometime, your nickname is become very popular. Again, nicely plays it down to mid-wicket region. They definitely come back for the second, because the last delivery they will go to try for the best. Oh, DJ, you are making a mistake here, and just you need to collect the ball. He thought it might be direct. Oh, one shot call by umpire, so that slide a bit of relax here for the fielding team. That even all the hard work which is gone in vain in this last ball, they will going to get only a single run in this last delivery. So 32, which is the total score of the team Attavara strikers. Great last over bowled there by the bowler. Very good last over there from Nelson, and just 3 runs came from that over. 32, which is the total score. 33 will be going to be the target. For the next match, I would like to invite 2 teams, please be reported. Arasu Warriors as well as Veera Maruti. Arasu Warriors ಮತ್ತೆ ವೀರ ಮಾರುತಿ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಅರಸು ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅತ್ತಾವರ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಕೋಆಪರೇಟ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ದ ಟೈಮ್. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್. And before the next over going to start, next innings will going to start, it's time to change in commentary box. It's over to Gopi to take over the microphone. Thank you.
धन्यवाद सतीश. So 33 the target for Good Day Bulls, set by Attavara strikers, and as far as the required run rate is concerned, exactly 8.25 runs per they have to score for victory, and they're stipulated 4 overs and their innings now going to start. पहले गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट. ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया खूबसूरती के साथ. वाइड लॉन्ग ऑन पर गेंद पहुंची और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता, एक रन का इजाफा हो चुका और एक रन के इजाफे के साथ गुड डे बुल्स का रनों का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है. एक रन बिलाके से नुकसान के सुनील और अक्षय आरंभिक बल्लेबाज, जबकि राम इस वक्त गेंदबाजी करते हुए और अक्षय इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. और राम अपनी ओर की अगली गेंद दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज अक्षय के लिए ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलती हुई और वाइड का इशारा और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 2 रनों पर बिना किसी नुकसान के. 2 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर. और इस बीच अक्षय सामना करते हुए राम की गेंदों का. ये गेंद इस बार ड्राइव कर दिया स्ट्राइट इनटू द हैंड्स ऑफ एक्स्ट्रा कवर फील्डर और इसी के साथ पहला विकेट गिर चुका है. ऐसा कहना पड़ेगा. जस्ट चेक द शॉट एट द लास्ट मोमेंट, प्लेड दैट वन इन द एयर and can't find the gap as well, and the ball straight went into the hands of extra cover fielder, and that is the wicket number 1 for Good Day Bulls. Akshay departs for duck, and now it's 2 for the loss of 1 wicket for Good Day Bulls. This is the match number 4 of this prestigious cricket tournament. Attavara Premier League Season 5 2024 is now progressing, which proudly presented by Sri Durga Friends. और जहाँ तक इस श्रृंखला का सवाल है, चौथा मैच इस श्रृंखला का यहाँ पर खेला जाता है. इस लॉट्स ऑफ अंडरआर्म क्रिकेट उर्वा क्रिकेट यूसीजी मैदान पर. और आज और कल 2 दिन ये प्रतिष्ठित श्रृंखला इस मैदान पर चलेगी. 7 प्रतिष्ठित टीमें, 7 फ्रेंचाइजी बेस्ड टीम्स, प्रेस्टिजियस टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस टूर्नामेंट. और जहाँ तक सवाल है इस वक्त इस मैच का, तो गुड डे बुल्स और इस वक्त अत्तावारा स्ट्राइकर्स के बीच में मुकाबला यहां पर जारी है. नए बल्लेबाज ऑलविन, वन मोर लेफ्टी बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल, और वो इस वक्त सामना करते हुए राम की गेंदों का. और राम इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट. ये गेंद फ्लाइटेड इस बार ऑन साइड पर गेंद को खेला मिड विकेट पर तेजी के साथ रन के लिए दौड़ पड़ी. इससे पहले कि मिड विकेट पर गेंद को फील्डर फील्ड करे, बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका. कुल मिलाकर 3 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर दाहिने हाथ के बल्लेबाज सुनील इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. और गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद. ये गेंद इस बार लॉफ्टेड. दिस कुड बी अ चांस फॉर द लॉन्ग ऑफ फील्डर, एंड दिस टाइम ही टुक द कैच सक्सेसफुली. वाइड इस लॉन्ग ऑफ पर इस कैच को लपका गया था और यहां पर जश्न मनाते हुए खिलाड़ी सुनील जो कि इस वक्त उछालना चाहते थे गेंद को वाइडिश लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के ऊपर से, नॉट सक्सीडेड, नॉट क्वाइट गेट दैट वन राइट फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट एट द लास्ट मोमेंट. और लॉन्ग ऑफ वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर जो फील्डर खड़े हुए थे, आखिरकार एक बेहतर जजमेंट के साथ इस कैच को उन्होंने लपका. Second wicket lost for Good Day Bulls, so they are looking in trouble. It's 3 for the loss of 2 wickets. New batsman, number 4 batsman wearing number 090 jersey is now comes out to the middle. Puneet, और वो इस वक्त सामना करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज राम की गेंदों का. राम इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए पहला और एकमात्र पावर प्ले ओवर उनकी पारी का इस वक्त प्रगति पर. 2 विकेट पहले ओवर में गुड डे बुल्स खोने के बाद इस वक्त दबाव उनके बल्लेबाजों के ऊपर इस वक्त नजर आता हुआ. और राम इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट. ये गेंद इस बार गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहा, गेंद पहुंची इस वक्त मिड विकेट पर. कोई फील्डर वहां पर नहीं. डीप मिड विकेट से फील्डर जब तक दौड़कर आकर गेंद को फील्ड करके थ्रो करे स्टंप एंड पर, बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का. ऐसा कहना पड़ेगा नॉट क्वाइट मिडलिंग एट द लास्ट मोमेंट, बट ही गॉट अ कपल रन फॉर दैट स्ट्रोक. और इस 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है. इन 2 रनों के साथ 5 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर. इट्स 5 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट, 2 विकेट्स इन फैक्ट इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस. और गेंदबाज राम गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार. ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को मोड़ा खूबसूरती के साथ इनटू द गैप एज वेल, एंड इज गॉट अ बाउंड्री फॉर दैट. Fantastically turns it away down to a deep backward square leg, just wide of the square leg fielder, and he finds the gap as well. और बेहतर स्ट्रोक इस वक्त पुनीत के बल्ले से लगता हुआ. स्कोर इस चौके के साथ बढ़कर पहुंच चुका है 9 रनों पर.
9 for the loss of 2 wicket. And target is 33. That means 24 runs more. Now they have to score for victory in remaining 18 deliveries. That means in remaining 3 overs with a required run rate of exactly 8 runs per over. Still they got 8 wickets kept intact. 8 wickets they got in their hand. दोपहर का वक्त 12:45 यहाँ पर बज चुके हैं। धूप अपना कहर मैदान पर ढा चुका है और सूरज ठीक आसमान की बुलंदियों को छूने के बाद अपने प्रखर किरणों को मैदान पर फैलाता हुआ और इस बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ धूप की तीव्रता भी इस मैदान पर बढ़ती हुई और भीषण गर्मी का एहसास न सिर्फ खिलाड़ी बल्कि दर्शक जो कि कुछ मात्रा में इस मैदान के इर्द गिर्द मौजूद है वो भी इस भीषण गर्मी का एहसास यहाँ पर करते हुए और इस भीषण गर्मी तले एक प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला अत्तावर प्रीमियर लीग सीजन 5 2024 की शानदार प्रगति यहां पर होते हुए सचिन गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। विकेट कीपर इस वक्त फील्डिंग में जमावट करते हुए 24 रनों की जरूरत, 18 गेंदें बाकी और ओवर की पहली गेंद लेकर सचिन बाएं हाथ राउंड द विकेट लेग स्टंप पर आती हुई गेंद को मोटा चाहा शॉट फाइन लेग पर मिसफील्ड लेकिन बैकअप होता हुआ वहां पर रन इस वक्त नहीं मिलेंगे। गेंद पैर से लगकर इस वक्त निकली थी शॉट फाइन लेग की दिशा में लेकिन सीधे फील्डर के हाथों में पहुंची और रन इस बीच नहीं मिला। मिसफील्ड लेकिन बैकअप होता हुआ वहां पर दूसरे फील्डर द्वारा और फिर से एक बार गेंदबाज सचिन यह गेंद ड्राइव किया गेंदबाज के सिर के ऊपर से गेंद पहुंची मिड ऑन पर नॉट मोर देन अ सिंगल और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 10 रनों पर। 23 रन चाहिए, 16 गेंदें बाकी, 16 balls left, 23 runs required. Still the match is now equally balanced. और सचिन इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करते हुए लॉन्ग ऑफ फील्डर ब्रॉट लिटिल बिट ऑफ अ वाइडर, इनफैक्ट लॉन्ग ऑन फील्डर गॉन आल्सो अ वाइडर और एक्स्ट्रा कवर पर एक फील्डर को इस वक्त तैनात किया गया। लॉन्ग ऑफ फील्डर को इस वक्त बिल्कुल सीधे इस वक्त तैनात किया गया है वाइडर से। इस बीच ये गेंद इस बार ऑन साइड पर उछालना चाहा, शॉर्ट थर्ड मैन पर गेंद रन्स नहीं मिलेगा। डॉट गेंद, बेहतर गेंद थी गेंदबाज सचिन की और स्कोर इस वक्त रुक चुका है कुल मिलाकर 2 अंकों पर यानी 10 रन 2 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर और सचिन फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट। यह गेंद ड्राइव करना चाहा, नॉट क्वाइट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपर्ली, इनफैक्ट इज गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 11 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 11 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट in the over number 2nd in progress. Still the equal battle is now on. सचिन गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए यह गेंद उछाला खूबसूरती के साथ into the gap as well and it's crossed over the fence between the 2 fielders for a boundary. Fantastic strike came from the bat of the left-handed batsman. He just picked the gap between long on and mid wicket and hit that one pretty hard into the gap as well. And because of that, he's got a boundary for that stroke. और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 15 रनों पर और बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त ऑलविन के बल्ले से लगता हुआ। अगली गेंद ड्राइव कर दिया मिड ऑफ पर स्ट्रोक्स के साथ ही मिसअंडरस्टैंडिंग कॉस्ट हिम वन ऑफ देम बैक इनटू द पेविलियन। शायद वहां पर रन की संभावनीयता हो सकती थी अगर नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज दौड़ते हैं लेकिन नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज ने कुछ खास दिलचस्पी यहां पर नहीं दिखाई नॉन स्ट्राइकर एंड पर। फलस्वरूप यहां पर स्ट्राइकर एंड पर यह विकेट गिरता हुआ बल्लेबाज ऑलविन का और तीसरा विकेट यहां पर गिर चुका है। 15 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स, 2 overs completed, 18 runs required in remaining last 12 deliveries. That means in last 2 overs. तो गेंदबाज यहां पर शुरू करते हुए किरण और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार पुनीत, जबकि नेल्सन नए बल्लेबाज के रूप में जिनका
आगमन इस वक्त हो चुका है। पुनीत इस वक्त सामना करते हुए किरण की गेंदों का, और किरण ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। 18 रन चाहिए बचे हुए 12 गेंदों में, और पहली गेंद लेकर गेंदबाज किरण इस वक्त तैयार। ओवर की पहली गेंद दाहिने हाथों पर विकेट गेंदबाजी करते हुए पुनीत के लिए। तो पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। Just gone for a mighty heave, not succeeded. Fantastic delivery, much straighter line. And the scoreboard stays at 15 for the loss of 3 wickets. ಅರಸು ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ವೀರ ಮಾರುತಿ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರಿ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. Again a fantastic work. This is an absolutely fantastic work made by wicket keeper behind the stumps. बिटो लेग स्टंप पर गेंद थे, ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा, गेंद टिप्पा खाने के बाद नीचे रहती हुई बल्ले पर नहीं आई, सीधे विकेट कीपर के हाथों में पहुंची, और विकेट कीपर ने तुरंत विकेट इस वक्त उड़ा दिए गेंद को कलेक्ट करने के बाद, और बल्लेबाज इससे पहले कि अपना बल्ला क्रीज पर वापस रख सके। तो इस बेहतरीन स्टंपिंग की बदौलत जो विकेट कीपर ने किया है, एक और विकेट यहां पर गिर चुका है गुड डे बुल्स का, और 15 रनों पर चौथा विकेट खो चुका है। 15 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅರಸು ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ವೀರ ಮಾರುತಿ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಈ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದರೊಳಗಾಗಿ ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ಟೂ ಟೀಮ್ಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್. So back to the game, struggling time continuing here for the batsmen of Good Day Bulls. और जहां तक इस वक्त सवाल है बचे हुए गेंदों का, तो 10 गेंदें बाकी और 18 रन चाहिए. 18 to get from remaining 10 balls. और नए बल्लेबाज इस वक्त निहाल क्रीज पर मौजूद, और गेंदबाज किरण इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार. Lofted, check the shot, chance for the long on fielder, and he dropped the catch. Simplest chance gone in vain. ऐसा कहना पड़ेगा, स्ट्रोक को चेक किया था अंतिम क्षण में बल्लेबाज ने, गेंद काफी देर तक हवा में थी, लॉन्ग ऑफ फील्डर दौड़ कर आया है, लॉन्ग ऑन फील्डर दौड़ कर आया, लेकिन सबसे पहले पहुंचे लॉन्ग ऑफ फील्डर, उन्होंने इस कैच को लपकना चाहा, लपक भी सकते थे, लेकिन अंतिम क्षण में थोड़ा सा मिस जजमेंट और गेंद उनके हाथों से छूटता हुआ. आसान सा मौका यहाँ पर लॉन्ग ऑन के फील्डर गवाते हुए, और यहाँ पर बल्लेबाज न सिर्फ जीवदान उन्होंने प्राप्त किया, बल्कि चौका भी वो यहाँ पर उन्हें मिल चुका है. 19 for the loss of 4 wickets. 9 balls remaining, 14 runs required. Still the battle is now on. और गेंदबाज किरण इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट. दाहिने हाथ के बल्लेबाज निहाल इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. ये deliberate. This is an absolutely deliberate. No run added to the total. No strokes offered. और बिल्कुल सही तरीके से अंपायर रोलैंड पिंटो ने इसे इस वक्त डेलिबरेट घोषित किया, और यहाँ पर डॉट गेंद उनके खाते में जुड़ता हुआ. 8 balls remaining, 14 runs required. Still the battle is now on. और गेंदबाज किरण गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए निहाल सामना करने के लिए तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट. ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को मोड़ना चाहा, पैरों पर गेंद टकराई, शॉर्ट फाइन लेग पर. 1 run added, leg by declared by umpire. 20 for the loss of 4 wicket. 13 runs required. 7 balls remaining. और अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार. इस ओवर में अंतिम बार किरण इस बार उछालना चाहा, not connected that one properly. In fact, he's got a single for that stroke. So the score is 21 for the loss of 4 wicket, and 3 overs have been bowled. 12 runs to get from last over. 12 रन चाहिए अंतिम 6 गेंदों में विजय के लिए गुड डे बुल्स को.
I request once again the captains, all the players of Veera Maruti as well as Arasu Warriors, please to be reported here to make a sign in the official chart. So Charan will going to start the fresh proceedings from that side, and 12 runs required from last over in fact. And the match deciding over is now going to start. नेल्सन जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, निहाल ऑफ द स्ट्राइक हो चुके हैं और नेल्सन जो कि 1 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, सिर्फ 1 गेंद का अब तक वो सामना कर चुके हैं। 12 रन चाहिए, 6 गेंदें बाकी। 12 of 6, here we go। पहली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार, दाहिना over the wicket, lofted, this time I think it could be taken just inside the fence and taken comfortably, not quite get that one right from the middle of the bat, और गेंद सीधे पहुंची इस वक्त लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के फील्डर के हाथों में, और एक बेहतर जजमेंट के साथ इस वक्त लॉन्ग ऑफ पर फील्डर ने लपका इस कैच को, और इसी के साथ 5 गेंदें अब बाकी, रन से चाहिए 12। 12 required from 5 deliveries. The things getting much tighter now for the batsmen of Good Day Bulls at the situation. So the new batsman Prasad is now comes out to the middle. और निश्चित रूप से यहाँ पर ऐसा कहना पड़ेगा गुड डे बुल्स को इस वक्त जरूरत है छक्के और चौके की इस मैच में कमबैक वापसी करने के लिए। They badly required at least 1 6 or boundary to get back into this match. और प्रसाद इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। 12 to get from 5 deliveries. चरण गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए प्रसाद के लिए, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। Lofted, this time one more catch for the long off fielder and he took the catch successfully inside the fence. First ball golden duck dismissal for Prasad and second consecutive catch for the long off fielder and second consecutive wickets for the bowler Charan also. And now equation seems to be stiffer now. 12 to get from 4 deliveries. And the bowler Charan is on a hat trick. We're just waiting for the number 8 batsman at the situation. Dhanu, the number 8 batsman, is now comes out to the middle wearing number 07 jersey. और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। 4 गेंदें बाकी, 12 रन चाहिए विजय के लिए और हैट्रिक गेंद लेकर इस वक्त चरण तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, 12 टू गेट फ्रॉम 4। बल्ले का बाहरी किनारा, शॉर्ट थर्ड मैन पर, नॉट मोर देन अ सिंगल, एंड विद दैट सिंगल द स्कोर बोर्ड मूविंग अप टू 22 now for the loss of 6 wickets. 3 balls 11 runs required. अब ऐसा कहना पड़ेगा सिर्फ छक्के या चौके ही इस मैच में गुड डे बुल्स के बल्लेबाजों को वापस ला सकते हैं। Driven down to mid wicket, fumble, just a single. 23, the last chance now in front of the batsmen. 10 required from 2 deliveries. 6 and a 4 required. 10 रनों की दरकार बचे हुए 2 गेंदों में और चरण अपने ओवर की 5वीं गेंद लेकर तैयार। लेग स्टंप से बाहर, रन के लिए दौड़ पड़े और 1+1, 2 runs added to their total. The things getting much little bit of easier now. 8 to get from 2 balls. 2 गेंदें 8 रन चाहिए और चरण इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद misses. And now it's going to be a all over for the batsman if the bowler cannot bowl no ball or wide in this final delivery. 8 runs to get from last delivery. 8 रन अंतिम गेंद पर चरण तैयार, अंतिम गेंद लेकर मैच की अंतिम गेंद misses. That's it. 7 runs thrilling victory for Attavara strikers against Good Day Bulls, and with that 7 runs victory they registered
their first victory in this tournament. They opened their points account in the points table. So match number 4 of this prestigious cricket tournament, Attavara Premier League season 5 2024 is now came to an end. Now fifth match of this tournament is now going to start within just a short while. So man of the match of this match, undoubtedly, the award goes to Sandeep of Attavara strikers, who scored 18 runs, a valuable 18 runs in just 13 deliveries. And because of this fantastic batting knock of 18 runs, Sandeep of Attavara strikers adjudged man of the match. I request Mr. Sandeep to please come on to the stage and receive the man of the match award from the organizer. Sandeep of Attavara strikers, please to be reported here to receive the man of the match award from the organizers. And we'll be back right after this short break with my friend Satish in English, when the next match we're going to start within a short while. And now it's time for break. वक्त है एक break का. धन्यवाद. Thank you. So Veera Maruti cricketers, after one toss, they elected to field first in the match number 5 against Arasu Warriors. So Veera Maruti cricketers elected to field after one toss, and I request the both teams players to please start the match within a just short while. And I also request Sandeep of Attavara strikers, please come on to the stage and receive the man of the match award from the organizer. Now Sandeep receiving the man of the match award from our most experienced umpire, Mr. Roland Pinto, distributing the award, the man of the match award for Mr. Sandeep for his outstanding batting knock of 18 runs in just 13 deliveries. So congratulations for Sandeep and best of luck for the rest of the matches of the tournament. और एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे अंग्रेजी में सतीश के साथ, जब अगले मैच की शुरुआत यहाँ पर होगी. एंड नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक. थैंक यू. धन्यवाद.
Welcome back for the match number 5 of the day number 1 of this prestigious Attavara Premier League Season 5, and which is proudly presented by Sri Durga friends in this ECG cricket ground, and umpires walking towards the middle along with the umpires. Two opening batters of Arasu Warriors are walking towards the middle. After winning the toss, captain of Veera Maruti, they elected to field first. Veera Maruti, they are playing their second match and they won their first match and first league day stage matches, so that they wanted to continue their winning streaks in the second league stage matches. Coming back to the team Arasu, they lost their first match in the league stage matches, so that they wanted to get their first victory of the league stage matches. And wait to see how well these two, winner as well as a loser, will go into battle for the victory in this fifth match of the day, number the 1. So jersey number 5 will go into start the proceedings. Dhanush. The left-hand batter is on strike. The first ball lofted high up in there. Fielder is underneath it and he completes a catch. Absolutely good start there from Dhanush, but left-hand batter absolutely not really able to get that one from the middle of the bat. First ball he wanted to get over the deep mid-wicket, but didn't got enough bat onto that. Pays the penalty for that and he's back into pavilion. Disappointment finish here for the left-hand batter. So Manjunath out for golden duck, and first ball is back into pavilion. Try to get over the mid-wicket fielder in the first ball, and he pays the penalty for that. Akshit is a new batter in. Dhanush to continue from the commentary box end. Right arm over the wicket balls. This time around the leg stump, within the reach of the bat. He couldn't manage to read the turn of the ball. Pitched in the middle stump and off cutter. Just passing the leg of the batter outside the line of leg stump. Wicket keeper did the rest, back to bowler. Third time in this over. Dhanush. Short run off. Right arm over the wicket balls. Again the same delivery. Identical mirror display of previous delivery. The line which is the same. The turn which is the same. Then wicket keeper behind the stump did the rest, back to bowler. So good start there from Dhanush. 3 balls, no runs, and he picked up one valuable wicket of Manjunath. This time nice looking drive, copybook style, driven that one down to deep long off region by Rakshi, and he off the mark with the single and is just to open the account as well. In the 4th delivery of the over number first, it's 1 for the loss of 1 wicket. That brings one more opening batter, Akshit, into strike now. Oh, doubly delivery, cleaned him up, ball got inside edge of the bat. He just wanted to go for the expansive drive. Missed it completely, and too much room he made to play that expansive drive. Pays the penalty for that. Wicket number 2 which is gone. And there once again Arasu Warriors are in a worries. 2 wickets back into pavilion for just a 1 run. 1 for loss of 2 wicket. A shackling start from Arasu Warriors again. And a very good start here for the team. They got a victory in the first stage, league stage matches. Veera Maruti are looking in a great position. Dhanush providing that vital breakthrough for the team. 2 wickets for him. And Nazir is a new batter walking towards the middle. The experienced campaigner needed some experience here for the team Arasu to get back from their the shackling start. 2 wickets which is back into pavilion for just a single run. Patience which is key to everything. Of course, even though you are playing a 4 overs format of the games, needed some big shot, but losing a wicket means you are losing a very important delivery out of that 24 deliveries. That's very important here for the team performing, and from the bat they need to keep it in the mind that losing 6 or 7 wickets means is always missing your important deliveries, not to throw the wicket cheaply for the opposition.
But here is the bowler so far has got a very good start. Dhanush, 2 wickets, just a single run, and final time he is bowling right arm over the wicket to Nazir. Again, plays it down to mid-wicket region for a easy single. With that single, scorer moves on to 2 on the board. So, what a great over there from Dhanush. Absolutely perfect over. Just 2 runs and 2 wickets he conceded. Great over there from Dhanush, and good start here for Veera Maruti. So, need to come back very strongly, Arasu Warriors. The worries for the Warriors is that they lost 2 wickets at the same time. They didn't got enough runs on the board. But still, they can back in the game by playing some good knocks here. 3 overs remaining, 18 balls remaining. And wait and see how well Arasu Warriors back in the game. Nazir will going to take the strike of the first delivery of the over number 2nd. Avinash will going to start his fresh over after that power play. And then spread out field here for Nazir. The fielder now 1 at deep backward point for the reverse stroke or switch it. 1 fielder down at deep cow point. No fielder in the long off. Is inside the ring at mid off. There is a fieldsman down at deep long on. 1 at mid wicket and between mid wicket and square leg. That is 4 fielders in fact inside outside the ring. Now mid on fielder going back to mid wicket and the square leg fielder coming little bit squarer. The behind the square or in front of the square. Let's wait and see. It's in front of square. Short fire leg, short mid wicket, short mid off, short third man. First ball, lovely delivery indeed. The start with a beautiful flighted delivery there from Avinash, giving some air into that ball and just try to get some extra deviation to turn in that flighted delivery. But he got a single for that. 3 for the loss of 2 wicket. Avinash to Rakshi, little correction. Plays it down to mid wicket, not really coming from the middle of the bat. He picked up a single for that. With that single, the score moves on to 4 for the loss of 2 wicket in the over number 2nd is in progress. Avinash with a short run up. Right arm over the wicket to the right arm batter. This time swings at one bound to mid-wicket region. Protection is given in the way. Oh, the fielder in the deep mid-wicket region. Little bit misjudgment and tried to get that one. But couldn't manage to judge that one properly. Just have a look at that one, a replay. Flicks that one off his legs and down to deep mid-wicket region. Couldn't manage to judge the bounce of the delivery. Total misjudgment. And welcome bounty coming up here for the team Arasu Warriors. It's 8 for the loss of 2 wicket. Avinash to continue. This time driven nicely down to deep long on region. Just for a single. Excellent piece of fielding there by the fielder. One more addition. With the addition of that single, score but numbers on to 9 for the loss of 2 wicket. In the over number 2nd is in progress. Again nicely driven that one down to deep whitish long on region. Whitish long on region for a single. 10 for the loss of 2 wicket in the over number 2nd is in progress. Avinash. Right arm over. Lovely delivery. Appeal for leg before wicket. Umpire not really convinced with the appeal. The ball going to miss the leg stump and tidy over. But one boundary which came from that over. And so that good slight a bit of comeback here for Arasu Warriors. The 11 for the loss of 2 wicket. Meantime, I request the 2 teams please be reported for the signatures. The Babugudda Tigers as well as Attavara Tigers. So it is a battle between 2 Tigers of Attavara as well as Babugudda. So that I request all the Tigers of both the teams please be reported here immediately to sign the official chart. ದಯಮಾಡಿ 2 ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಅಥಾವರ ಟೈಗರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಬಾಬುಗಡ್ಡ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು
ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ ಬಂದ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ 2 overs gone, it's 11 for the loss of 2 wicket, and Prithvi will going to start the over number 3 from the commentary box, and Nazir will going to face first delivery of the over number 3. Round the wicket, over the wicket, left arm. Lovely delivery to start with the opportunities created for the stump out. Nazir just coming down the track, tried to use his feet but missed it completely. Then wicket keeper behind the stump and did the rest, and there is no chance at all for any run. Again, lovely piece of work this time from the wicket keeper behind the stump, and he missed it in the first attempt, first previous delivery. Then the next delivery immediately, he not really missing the opportunity to make that stump out. Wicket number 3 gone, it's 11 for the loss of 3 wicket. Nikhil is a new batter in, and the previous match also he played some responsible knock. Here also needed some responsibility. The wicketkeeper Bhagwan has got a stumping here, and a very experienced campaigner for the side of Veera Maruti. Prithvi to continue, left arm round the wicket. Over the wicket, lofted, up in there. Will it go into opportunity for the fielder? Yes, it does. And long off fielder completes the catch. Nikhil departs. One more huge wicket here for Prithvi. He picked up 2 wickets in 2 consecutive deliveries. That means he's on hat-trick. It's 11 for the loss of 4 wicket. Arasu Warriors worries which is continues here for the Warriors. Prithvi to continue, is on a hat-trick now, hat-trick delivery. This time wanted to go for the reverse sweep, ball is in there for a while, but it's from the bat, one more single. With that single score, numbers on to 12 for the loss of 4 wicket. Kiran, the new batter, is off the mark with a single, and which is denied. It's 12 for the loss of 4 wicket. Over number 3 is in progress. Prithvi to continue. Left arm round the wicket, balls. Lovely delivery indeed. Ball deflected from the legs, so that one more single. With that single, score moves on to 13 on the board. From the commentary box, and Prithvi balls left arm over the wicket, and a lovely delivery indeed. Wanted to go for the switch, it missed it complete. Then short fine leg fielder fields the ball, no run scored. A very good performance continues here from Veera Maruti. 3 gone, searching for the right track. Still Arasu Warriors are struggling in the middle. It's 14 for the loss of 4 wicket. Last over remaining. The tidy over ball there by the Veera Maruti so far. And Arasu Warriors have to come back with some positive batting in this last over. Both the batters have to look for some good runs in this last over if they wanted to put any kind of pressure for the Veera Maruti when they're going to chase the runs.
At least 10 to 15 runs, which is badly required in the last over. Atul brought into attack to ball that last over, and in front of him, Rakshit will go into face. Atul from the far end. The leg spinner is in action. That's time wanted to go for the big shot, and didn't quite getting hold of that one properly, but it's good enough for him to get that placement right over the mid fielder's head, down to deep long of boundary for 4 runs. Didn't control it properly, but there is no long off, so that he easily got the placement right towards the longer boundary for 4 runs. With that boundary score numbers on to 18 for the loss of 4 wicket. Good start for the over number last from the batter Rakshi. Second time in this over, Atul bowls. Full toss delivery, driven that one down to deep, extra coverage, and excellent piece of fielding there by the fielder. Returns the ball very quickly to the hands of the bowler. Just a single. With that single, scored numbers on to 19 for the loss of 4 wicket. Last 4 delivery remaining. Kiran back on strike. Long off cover point and a deep backward point. 3 fielders outside the ring in the offside region. Only 2 outside the ring in the on. That is a mid wicket, long on, and a deep mid wicket. They wanted to go for the big shot. Wicket keeper Bhagwan slide, a bit of fumble from him. And this time batsman is gone. A very lazy running bit in the wicket there from Rakshi. There could be a very, very easy single, but Bhagwan just moving towards the ball very quickly, being the wicket keeper, and returns the ball quickly to the hands of the bowler. And bowler complete the formalities of run out. 1 more wicket is gone. It's 19 for the loss of 5 wicket of Arasu Warriors. Last 3 balls remaining in their innings. Lakesh is the new batter in. Wait and see, can he become lucky for their team? 2 balls remaining, but he is going to be out of the strike. And walking towards the non-striker's end. 3 balls remaining. 3 balls remaining in the last over. Wanted to go for the switch it, but didn't got that one from the middle of the bat. Just a single here for the batter Rakshi, and scoreboard now moves out to 20 for the loss of 5 wicket. Last 2 balls remaining. A lucky back on strike. Lofted, missed time. Opportunities created for the catch. Very interesting. The extra cover fielder thought it might be a catch of deep long off, but suddenly is a catch of is. But misjudgment, ball landed safely, and couple of runs is completed. Then 22 for the loss of 5 wicket. Last 2 balls remaining. Last ball, repeat aggression. Last delivery of their innings coming up. Wanted to go for the big shot. Good collection there from Bhagwan. Absolutely perfect. And a run out taken place in the last ball. And that's it. They finished their innings with just 22. One more disappointment performance from the batters of Arasu Warriors in this match also. They didn't got enough runs on the board, but just a 22. The wait and say, will it going to be good enough for them to restrict their opposition? And wait and see. Both the teams has got almost the similarity in their jersey, the blue colors. And wait and see which blue will going to win this year. The Veera Maruti looks like their captain satisfied with the performance of their bowlers. Veera Maruti strikers are bowled well and restricting their opposition for just 22 runs and 23, which is going to be a target for team Arasu Warriors. And wait and see how Arasu Warriors will go into restrict these runs. We'll take a short break here, and after the short break, my friend Gopi will going to take over the microphone in our national language, Hindi. Thank you. Thanks a lot.
धन्यवाद सतीश. So 22-23 the target for Veera Maruti, set by Arasu Warriors. At batting first, Veera Maruti bowlers bowled very well and restrict the batsmen of Arasu Warriors for just 22 runs in 4 overs. And now the target for them is 23, and the innings now going to start. The openers Avinash and Dhanush are the crease. Meantime, the bowler is Rakshit, who starts a fresh proceedings from that side. And the first ball of the innings is now coming up. और पहली गेंद लेकर रक्षित इस वक्त गेंदबाजी करते हुए 7 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर मौजूद. दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा. अपील इस वक्त सिर्फ विकेट कीपर करते हुए, और जब तक गेंद को वहां पर गली पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा हो चुका है लेग बाई के रूप में. और लेग बाई के इस रन के साथ रनों का सिलसिला इस वक्त शुरू हो चुका है. इस वक्त वीरा मारुति के लिए 1 रन बिना किसी नुकसान के. निस्संदेह एक बेहतर शुरुआत की जरूरत तब वीरा मारुति को, अगर उन्हें 23 रनों के लक्ष्य तक पहुंचना है तो 4 निर्धारित ओवर में. और रक्षित अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार. पहला और एकमात्र पावर प्ले ओवर उनकी पारी का यहां पर प्रगति पर. और फील्डिंग में जमावट करने के बाद ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार. ये गेंद बेहतर गेंद थी, इन कटर गेंद थी. गेंद कौन साइड पर उछालना चाहा, शॉर्ट स्क्वायर की दिशा में गेंद पहुंची. और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा हो चुका है. और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 2 रनों पर बिना किसी नुकसान के. इट्स 2 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर. 2 बेहतर गेंदें इस ओवर में गेंदबाज रक्षित इस वक्त फेंक चुके हैं. और इस वक्त बाएं हाथ के बल्लेबाज अविनाश सामना करने के लिए तैयार. और गेंदबाज इस वक्त रक्षित अपनी ओवर की अगली गेंद. ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा, कनेक्ट ठीक तरह से कर नहीं पाए, लेकिन 1 रन न उन्हें जरूर मिला. इससे पहले कि मिड विकेट पर गेंद को फील्ड करके फील्डर थ्रो करे विकेट कीपर के हाथों में. बल्लेबाज के पास समय था कि 1 रन के साथ वो अपना छोड़ यहाँ पर बदल सके. और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 3 रनों पर बिना किसी नुकसान के. अगली गेंद इस बार गेंद को उछाला है लंगोल पर, लेकिन सीधे आउट. ड्रॉप्ड स्ट्रेट फॉरवर्ड. चांस इज नाउ गॉन इन वेन. गेंद तक पहुंच गए थे, गेंद तक को जैसे ही उन्होंने लपकना चाहा गेंद उनके हाथों से छूटी और सीधे सीमा रेखा को पार कर चुकी है. देखिए किस तरीके से यहां पर हुआ था. गेंद तक पहुंच गए थे लेकिन अंतिम क्षण में गेंद को अपने दोनों हाथों में दबोचने में असफल. और इसी के साथ बल्लेबाज न सिर्फ जीवदान उन्होंने प्राप्त किया बल्कि छक्का भी वो प्राप्त कर चुके हैं. और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 9 रनों पर. इट्स 9 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस. And 6 added into the account of Dhanush. Next match, the 2 Tigers will clash each other, Attavara Tigers and Babu Gude Tigers, and because of that I request all the players of these 2 teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. तो इस वक्त गेंद को तराशने के बाद इस वक्त वापस दिया गया गेंदबाज के हाथों में. और गेंदबाज रक्षित इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार. फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट इस वक्त जारी है. वाइड लॉन्ग ऑन पर थोड़ा सा फीडर को स्क्वायर इस वक्त तैनात किया गया है. और गेंदबाज रक्षित इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार. यह गेंद बॉल्ड आउट, जस्ट गॉन फॉर अ बिग वन, नॉट सक्सीडेड एंड द बॉल स्ट्रक टू हिज मिड लेग स्टंप. शफल होते हुए गेंद कौन साइड पर उछालना चाहा था लेकिन गेंद टिप्पा खाने के बाद नीचे रहती हुई धीमी लेग कटर गेंद थी और बल्ले पर नहीं आई. गेंद सीधे जा टकराए मिड लेग स्टंप पर. गिलिया बेल्स डिस्टर्ब होते हुए और इसी के साथ पहला विकेट गिर चुका है. 9 for 1. धनुष डिपार्ट्स for 7. दीपक द न्यू बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल. और एक गेंद अभी भी बाकी है इस ओवर में. और गेंदबाज रक्षित इस वक्त गेंदबाजी में फील्डिंग में इस वक्त जमावट करते हुए. और गेंदबाज रक्षित इस वक्त यहाँ तो बाएं हाथ के बल्लेबाज नए बल्लेबाज दीपक इस वक्त सामना करते हुए.
और ओवर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज रक्षित तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज दीपक के लिए ये गेंद अच्छी गेंद, बेहतर गेंद, एक्स्ट्रा क्विकर थी, गेंद को खेलना चाहा चुके। ओवर की समाप्ति, फर्स्ट ओवर कंप्लीटेड, 9 ऑन द बोर्ड फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। धनुष द मैन डिपार्टेड and now just 14 runs more. Now they have to score for victory in remaining 18 delivers. That means in remaining 3 overs, and the situation, the asking run rate looking to be a much easier now for them. Exactly 4.66 runs required at this situation for Veera Maruti. तो मैच इस पर इस बीच नई ओवर की पहली गेंद थी। इस वक्त मत स्ट्राइट लाइन गेंद को ड्राइव करने के प्रयास में चूके और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। तो अगली गेंद लेकर तैयार था इनायत ओवर द विकेट। ये गेंद लॉफ्टेड, दिस टाइम दिस कुड बी अ चांस फॉर द लॉन्ग ऑफ फील्डर एंड ही टुक द कैच सक्सेसफुली। Just wanted to loft the ball, not succeeded, not quite get that one from the middle of the bat, and finally long off fielder made no mistake. So second wicket gone, and the man Avinash departs. It's 9 for the loss of 2 wicket. What a fantastic live coverage we are watching here from Mangalore Media YouTube channel. निश्चित रूप से एक बेहतरीन लाइव टेलीकास्ट, एक्सक्विजिट लाइव टेलीकास्ट इस वक्त किया जा रहा है मैंगलोर मीडिया चैनल द्वारा इस प्रेस्टिजियस क्रिकेट श्रृंखला अत्तावरा प्रीमियर लीग सीजन 5 2024। और जहां तक सवाल अगले मैच में बाबू गुड्डा टाइगर्स ने टॉस जीता और देखते हैं क्या निर्धार वो लेते हैं। तो यहां पर दूसरा विकेट खो चुका है। वीरा मारुति और किरण इस वक्त अपने दूसरे ओवर की तीसरी गेंद लेकर तैयार। मधु नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त मौजूद और इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार गेंद को उछाल दिया, लॉन्ग ऑन मिड विकेट फील्डर के सिर के ऊपर से गेंद निकलते हुए इस वक्त डीप मिड विकेट पर जब तक गेंद को फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। 10 रन 2 विकेट के नुकसान पर 10 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। बोथ ओपनर्स आर नाउ बैक इनटू द पेविलियन। और किरण गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ पहले 3 गेंदें वो फेंक चुके हैं। अपनी ओवर की चौथी गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए कुल मिलाकर गेंदें बाकी हैं 15, रन से चाहिए 13 रन टू गेट इन रिमेनिंग 15 बॉल्स। इस बार डिफ्लेक्टेड, गॉड इज इनसाइड इट, डाउन टू अ शॉर्ट फाइन लेग। 1 रन मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 11 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। और कुल मिलाकर 12 रन और चाहिए विजय के लिए। किरण एक बार फिर से अपने गेंदबाजी के मार्ग पर तैयार। इस बार दाहिने हाथ के बल्लेबाज मधु सामना करते हुए किरण की गेंदों का। किरण बेहतर गेंद ऑफ साइड पर खेलना चाहा, एक बार फिर से बल्ले का भीतरी किनारा, अंदरूनी किनारा, गेंद गई ऑन साइड पर, शॉर्ट मिड विकेट पर। 1 रन का इजाफा फिर से हो चुका है, स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 12 रनों पर। 12 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 2 wickets in the over number 2 in progress. So fine over progressing here from Kiran. Last time in this over, अंतिम बार इस ओवर में दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार लेग स्टंप से बाहर, विकेट कीपर चूके रन के लिए दौड़ पड़े। 1 + 1 2 runs now added to the total. 14 the score, 9 runs required, 13 balls remaining. किरण अंतिम बार इस ओवर में दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। Oh, fantastic delivery. This is an outstanding delivery. In fact, they gone through for a single and get it comfortably.
Absolutely fantastic delivery from the bowler, but wicketkeeper unable to collect that ball, and because of that, the batsman got a single in the face of bye. So fantastic delivery to end the over. "15 for the loss of 2 wicket, and 2 overs completed. So 8 runs to get, and 12 balls remaining in overall calculation in their innings. निखिल गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए, तीसरा ओवर शुरू होता हुआ यहाँ पर वीरा मारुति की पारी में, और पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, दाहिने हाथ के बल्लेबाज मधु इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। पहली गेंद, बल्ले का बाहरी किनारा, शॉट थर्ड मैन पर, रनआउट का खतरा, लेकिन निशाना यहां पर चूकता हुआ, और बल्लेबाज 1 रन के साथ अपना छोड़ बदल चुके हैं। 16 रन बन चुके 2 विकेट के नुकसान पर। 7 रन टू गेट फ्रॉम 11 बॉल्स नाउ। और इस बीच गेंदबाज राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, बाएं हाथ के बल्लेबाज दीपक के लिए फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार रहा। दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए, यह गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए 1+1, 2 रन नाउ एडेड टू द टोटल। नो बॉल का इशारा। 18 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट, 5 रिक्वायर्ड, फ्री हिट डिलीवरी फॉर द बैट्समैन एट द सिचुएशन फॉर मधु। और गेंदबाज निखिल एक बार फिर से तैयार। तो फ्री हिट गेंद इस वक्त बल्लेबाज के लिए। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, not quite connected that one properly, but he got a single for that stroke in this free hit delivery, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 19 रनों पर। 19 for the loss of 2 wicket in the over number 3 in progress. 10 balls remaining and 4 runs required. The things getting much easier now for the batting side Veera Maruti. निखिल फिर से एक बार तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट। This time turns it away down to a mid wicket. In fact, the bowler stopped the ball just outside the 20-yard circle, but can't prevent the single. And with that single run, the scoreboard moving up to 20 for the loss of 2 wicket in the over number 3 in progress. और निखिल इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, just 3 to get now in remaining 9 deliveries. और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए, फील्डिंग में जमावट कुछ हद तक करते हुए, लगभग 6 से 7 फील्डर के इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर तैनात किया गया है सिंगल्स रोकने के प्रयास में। Lofted, and this time dropped that one. He dropped that one, and the simplest chance is now gone in vain. So 2 runs added to the total, and with that a couple run, 1 shot in fact declared it by umpire, just a single run added to the total. क्रीज को बिना छुए इस वक्त दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े थे बल्लेबाज मधु, तो एकमात्र रन उनके खाते में जोड़ा जाएगा। 21 now for the loss of 2 wicket. 2 runs required from 8 balls. Good one, fantastic, well stopped, and it's gone. This time he won't survive. और गेंद सीधे बेल्स को इस वक्त छू कर निकल चुकी थी अंतिम क्षण में, विकेट्स डिस्टर्ब नहीं हुए। और जहां तक सवाल है, तीसरा विकेट गिर चुका है। That was an absolutely sharp shoot by the short fine leg fielder. और ऐसा लग रहा है कि सिर्फ विकेटों को नहीं बल्कि सिर्फ बेल्स को निशाना लगाया था इस वक्त फील्डर ने, और उनका निशाना बिल्कुल सही बैठता हुआ। 7 गेंदें बाकी, 2 रन चाहिए। नए बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद अतुल। लास्ट टाइम इन दिस ओवर निखिल कम्स।
Bowling, absolutely fantastic delivery. Dot delivery and is gone. One more wicket fallen. So third over came to an end. 21 on the board. Last over remaining. 4 wickets down and 2 runs required from last over. So fourth and the final over starts in the innings. चौथा ओवर प्रारंभ होता हुआ. चौथा ओवर अंतिम ओवर. 2 रन चाहिए अंतिम ओवर में विजय के लिए. Just 2 runs to get for victory for वीरा मारुति. और पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार. लकेश गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए. First ball from the last over comes in their innings. लकेश दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए पहली गेंद. फैंटास्टिक डिलीवरी. गेंद को ऑन साइड पर उछालने के प्रयास में चूके और गेंद सीधे पहुंची इस वक्त विकेट कीपर के हाथों में. डॉट गेंद. 5 balls 2 runs required. 2-3 लगातार डॉट गेंद अगर गेंदबाज फेंकते हैं तो निश्चित रूप से यहां पर वापस आ सकते हैं इस मैच में. और लकेश अपनी ओर के अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद उछाला मिड विकेट पर. फील्डर और इस बार रोकने में सफल. लेकिन यहां पर जो 2 रन चाहिए था वो 2 रन यहां पर मिल चुका है. बेहतरीन फील्डिंग लेकिन 2 रन बल्लेबाज यहां पर पूर्ण कर चुका है. इन 2 रनों के साथ वीरा मारुति registered a 6 wickets victory with just 4 balls to spare in their innings against Arasu Warriors, and with that 6 wickets victory with just 4 balls to spare, Veera Maruti cricketers back the complete points. तो तीसरे अंपायर के लिए इस वक्त मांग की गई है कि वो गेंद को बेहतरीन तरीके से सीमा रेखा के अंदर रोका गया था या फिर गेंद को अंदर ढकेलते समय उनका शरीर का कोई अंग सीमा रेखा को टकरा चुका था. तो देखते हैं तृतीय अंपायर क्या निर्धार यहां पर देते हैं. लेकिन विजय इस वक्त हो चुका है और वीरा मारुति registered a 6 wickets victory with just 4 balls to spare, and with that victory against Arasu Warriors they back the complete points. So clean save, only couple run added. So Dhanush judged the man of the match because of his all-rounding performance. He scored 7 runs in just 3 balls, and also he picked up 2 wickets for conceding just 2 runs in his 1 over. And with that, because of that all-rounding performance, he judged the man of the match. I request Mr. Dhanush to please come on to the stage and receive the man of the match award from the organizers. Mr. Dhanush of Veera Maruti, please come to the stage and receive the man of the match award from the organizers. So the next match will be the match number 6 of this prestigious cricket tournament, Attavara Premier League Season 5 2024 is now coming up. Live and exclusively right in front of you within just short while. तब तक एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हो. छोटे से ब्रेक के बाद अंग्रेजी में सतीश के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे जब अगले मैच की शुरुआत यहाँ पर होगी. तो अब वक्त है एक ब्रेक का. नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक. थैंक यू. धन्यवाद.
So man of the match which is goes to Dhanush, and Chetan will going to present this man of the match for Dhanush for his all-round performance to getting their team into victory there. So congratulations, the man of the match winner. Now we are coming to the match between two tigers. The Tigers of Babagudda takes on Tigers of Attavara, and very interesting match. After winning the toss, captain of Attavara Babagudda, they elected to field first, and Babagudda Tigers elected to field first, and Attavara Tigers to opening the batters walking towards the middle. Babagudda Tigers, they won their first match in the league stage matches, but Attavara Tigers, they lost their first match, so that it's going to be a must-win match, and they wanted to get the victory here. So Attavara Tigers, they lost their first match against team Attavara Strikers in the opening matches. It will be correction. Attavara Tigers, they won their first match against the Tigers, and wait and see how well they will going to face the team of Babagudda Tigers. The first ball, right arm over the wicket, wanted to go for the sweep shot, and it's missed it completely, leg by call by umpire, and they got their first run. Attavara Tigers, they opened the account with the extra leg by. Shishant will going to face his first delivery. Dikshit from the far end, Attavara Tigers end. To Shishant. Top edge, ball is in there, and he couldn't manage to get the ball. The cow point fielder tried his level best to get that catch, but ball just landed safely just in front of the fielder, and ample time for the batter to complete the single. So, two without loss of any wicket. Again from the far end. Very good thinking by the bowler in the delegation. Ball that line very well by passing the ball just inside the line. The batter just wanted to go for the switch. It just becomes a left-hand batter, so that line will go into extend of their leg side. He will become the left-hand batter, so that right call from umpire. Two without loss of any wicket. This time certainly is going to be a wide, and a huge wide in the delegation. So with that extra scoreboard moves on to 3 on the board. Dikshit couldn't manage to get this line. Both the teams, they won their first match in their league stage matches, so that this is a battle between the two winning teams in the league stage matches. Both the Tigers, they won their first match. Babagudda Tigers as well as Babagudda, correction, Attavara Tigers. Right arm over the wicket bounce. This time swept that one down to short fine leg. Chance of run out, and if it is a direct hit, I think it's going to be a opportunities for making the run out, but batsman completed that quick single, and with that single scoreboard moves on to 4 on the board without loss of any wicket in the over number first stage in progress. Dikshit again from the Attavara Strikers end, right arm over the wicket, bounce. This time again they wanted to go for the big shot, ball which is just going to miss the leg stump, and there is no chance at all for any run. 4 without loss of any wicket. Very good start given by the opening bowler, even though he bowled some wide deliveries in this over, but managed to keep the batter quiet. Shishant is on strike.
Again, same thing has happened. Wicketkeeper fails to collect the ball, but it's definitely going to be, it's a fair delivery. It's no signal from the umpire, means it's a bye call by umpire. One more extra, one more over completed after completion of first over. And 5 on the board for team Attavara Tigers. And the Dikshit bowled a very tidy over, just 5 runs came from that over. The 5 without loss of any wicket. Attavara Tigers against the Babagutta Tigers. For the latecomers, you are watching a match number 6 of the day, number 1 of prestigious Attavara Premier League, which is proudly organized by Sri Durga, the friends Attavara, in this UCG cricket ground. And successful cricket tournament is in progress. The 8 teams participating in this cricket tournament. And, tomorrow will be the final day of this cricket tournament, and wait and see which team will going to get the chance in the playoff rounds. Top 2 will going to get that qualifier, and the remaining will go into 3rd and 4 will going to play that eliminator. That is going to be a playoff rounds. And altogether 24 matches to be played in this league stage match, in this Attavara Premier League. 20 league stage matches, then 3 playoff rounds and 1 mega final will going to commence in this Attavara Premier League season 5. The bowler is in action, Wilson. Lofted, didn't got that one right from the middle of the bat. The fielder will go into underneath it. And long off fielder just moving to his left and completed the catch. The wicket number 2 of Attavara Tigers are back. Wicket number 1, the first wicket which is back into pavilion. And Shishant didn't got that one from middle of the bat. Tried to get over the deep long off region and missed timing, and pays the penalty for that. It's 5 for the loss of 1 wicket. The new batter in is Arun, walking towards the middle. One more, the very talented and experienced campaigner for the side of Tigers, Arun, the former cricketer of SNGT Cricketers, a very good bowler as well, good all-rounder. Just they're walking towards the middle. And even is presently is representing for SNGT Cricketers. I'm now watching him performing for SNGT Cricketers. The 5 on the board, and Wilson will go into continue. Right arm over the wicket to Arun. Nicely plays it down to mid-wicket region. Just cover the stumps, and just a flick of the wrist comes into play to pick the single. With that single, scored was under 6 on the board for the loss of 1 wicket. A very slow cricket from the opening, from the batters of Attavara Tigers. The Wilson to continue. Right arm over the wicket, drives that one down to short mid-wicket, misfield there by the fielder. Arun will go and come back for the second. He's the one running towards the danger end. And a very good running bit in the wicket. That completes at 2 quick runs, and scoreboard moves on to 8, and just the number of Arun is also 8. 8 for the loss of 1 wicket in the over number second in his progress, and just the number 7 will go into continue. And a lovely shot, but lack of placement, straight to the hands of deep square leg in front of square. One more addition, addition of that single, scoreboard number moves on to 9 for the loss of 1 wicket in the over number second is in progress. Slowly this batter try to get some score in this second over of the innings. Arun is on strike, the Wilson is on attack. Driven down to deep long on, just for a single. That single scoreboard moves on to double figure 10 for the loss of 1 wicket. Over number second is in progress. Bright and sunny afternoon. Time is exactly 1 past 40 in the afternoon. Improvisation is trying for, but backward point fielder quickly moving to his back, and just a single here for the batter Shreyas. He will going to keep the strike. 2 outs completed, and after completion of over number 2, Attavara Tigers are searching for the right track, struggling in the form of run rate. They're going exactly 5.5 runs per hour. 11 for the loss of 1 wicket. The projected score in the same run rate, it's going to be at 22, but I don't think it's going to be good enough to depend in this condition. They wanted to accelerate the run rate in the remaining 2 overs. Bowler to continue from the far end.
Kaushik. Kaushik to ball from the far end to Shreyas. Right arm over the wicket, pass umpire Roland Pinto. This time reverse way, played that one quite nicely. Exquisite switch it comes into play. It's not a reverse sweep, it's a switch it. Whenever the batsman becoming the left hand batter, and that will going to be a switch it, and he just taking his position quickly to get that switch it and get the ball right from the middle of the bat down to deep third man boundary for 4 runs. So with that boundary, scored Namozan to 15 for the loss of 1 wicket in the over number third is in progress. Again, same shot. This time misfield by the fielder. The ball will not going to get the boundary by there. The fielder behind the ball, and before the throw coming from the deep, and ample time for Shreyas to complete that 2 valuable runs. 17 for the loss of 1 wicket. So acceleration, just we are talking about, is very much required for the team Attavara Tigers. And the acceleration which is started in the 3rd over. 6 runs in 2 balls. The Shreyas try to get some acceleration in the run rate. Kaushik again from the far end. Attavara strikers end. This time appeal for leg before wicket. Almost the fat field bowler begging for the umpires to give the leg before wicket. And some very interesting kind of very interesting appeal we can see in cricket field, and one which is gone viral, that is in the TCL. Sahil was appealing for the leg before wicket, or not a leg before wicket, but I don't know, for with the caught behind the wicket. He is appealing for Roland Pinto. And again misfield by the fielder, couple of runs which is taken there. 18 for the loss of 1 wicket. 20 correction. 20 for the loss of 1 wicket. Arun got a very good placement down to deep long off region for a couple of runs. And again the bowler will going to continue. Right arm over the wicket. This time Arun wanted to go for the expansive drive, missed it completely. Wicket keeper did the rest. It's turning out to be a good over so far. 9 runs came from this over for team Attavara Tigers. Final time in this over. Kaushik. Right arm over the wicket to Arun. Flicks it off his legs down to fine leg region, short fine leg region, and before the fielder from deep fine leg to run across to run to his friend to field the ball. Ample time for the batter to complete the single. 10 runs came from that over. 3 gone. It's 21 for the loss of 1 wicket. Attavara Tigers. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ಒಂದು ಬೈಕ್ನ ಕೀಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತದೆ. ಕಳೆದುಕೊಂಡವರು ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಹೋಂಡಾ ಬೈಕ್ನ ಕೀಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರು ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಬಂದ ಕೀಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. So Abhiram to bowl that last over of the innings of team Attavara Tigers. Left arm around the wicket, pass ball. Driven off the back foot down to deep long off region for a single by Arun. With that single scored Namozan to 22 for the loss of 1 wicket in the over number last is in progress. 5 delivery remaining. Shreyas back on strike.
is batting on 11 with the help of one boundary. Arun also batted very well so far. He's batting on 6. This time he's bowled him, cleaned him up too far across the line of the delivery. He wanted to get that improvising cricketing stroke. Tried to sweep that one very fine. Misses the line completely. You miss, I hit what the bowler is did. And ball just hitting that midland leg stump of Shreyas. Its second wicket is back into pavilion. It's 22 for the loss of 2 wicket. Team Attavara Tigers are struggling a little bit to get the runs in this final over. The new batter in is Ravi, walking towards the middle. But 4 deliveries remaining in their innings, and wait and see how well Arun and Ravi will go in to get their runs for the team Tigers, Attavara Tigers. Abhiram to continue, left arm, around the wicket. Wide outside the line of off time. They're going wide, they're going for the quick single, direct hit. Umpire Roland Pinto will going to suddenly refer for the third umpire to see the decision. Arun looks like he's a man, he's running towards the dangerous end. Will it going to be a danger here for Arun or not? Because whenever there will be a direct hit, slight a bit of opportunities created for the fielding team to get the result in their favor. Wait and see what is the decision from the third umpire. What could be the decision from the third umpire? Out is a call. So one more wicket is back into pavilion. It's 23 for the loss of 3 wicket. New batter coming to the middle is Dhanush, and only 4 deliveries remaining. That is a wide delivery. So that 4 balls remaining. 4 balls remaining in this last over. Four balls remaining. The previous one is a wide. Danu is a new batter and he will go into face Abhiram. Third time in this over. Left arm around the wicket. This time I wanted to go for the big shot. Didn't quite able to get that one. And 24 for the loss of 3 wicket. 3 ball left in this last over. Ravi back on strike. 2 new batters in the middle. Abhiram, left arm around the wicket balls. Again, swings and missed. Lovely line. Just keeping that line which is outside the line of off stump. Well within the reach of the batter. Excellent delivery indeed. Last 2 balls remaining. 24 for the loss of 3 wicket. Abhiram, fifth time in this over. This time appeal for leg before he gets chance of run out. Oh, Abhiram just searching for the ball. Appeal which is came from Abhiram for the leg before wicket. It might be ball is going to miss the leg stump. Might be the umpire is not interested. Leg by call. 25 comes up here for team Attavara Tigers. And they will going to face the last delivery of their innings. Ravi is on strike. Not Ravi, it's Danu. Again, wide outside the run back stamp. 1+1, 2 bonus run here for the Attavara Tigers. They will going to enjoy each and every extras conceded by the Abhiram in the last over. 27, the last ball of their innings. Ravi is on strike. Abhiram. Again, very strong line indeed. Absolutely perfect delivery to finish the over number 4. That's it. Attavara Tigers, they finished their 4 overs quota.
and they managed to get only 27 and set a target of 28 for the team Babugudda Tigers, and asking run rate is exactly 8 runs per over for the team of Babugudda Tigers to win this match. So this is a battle between two Tigers, and wait and see which Tigers will going to win here, whether it's going to be Babugudda or it's going to be Attavara. Let's wait and see the strategy from these two teams to win this match. Just to take a short break in this commentary box. Meanwhile, I would like to invite two teams for the next match. Team Arasu Warriors as well as Vaidyanath Warriors. So that's a battle between two Warriors. Next match, Arasu versus Vaidyanath. I request all the players of both the teams, please be reported here immediately to sign the official chart. ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವೇದಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಬರಬೇಕು. ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. So time for the break, and after the break, my friend Gopi will going to take over the microphone. Thank you. Thanks a lot. Dhanyawad Satish. So 28 the target for Babugudda Tigers, set by Attavara Tigers. Batted for the man to score 27 runs in the stipulated 4 overs, and now the target for Babugudda Tigers is 28. As far as the required run rate is concerned, exactly 7 runs per over they have to score for victory. With the help of 10 wickets, the present equation shows for them, and their innings now going to start within just short while. Match number 6 of this prestigious cricket tournament, Attavara Premier League Season 5 2024 is now progressing here, which proudly presented by Sri Durga Friends. In the celebration of their 5th year, this prestigious tournament is now progressing along nicely in this So their innings now going to start. The first ball of their innings is now coming up. Outside the off stump से बाहर की ओर निकलती हुई गेंद, और गेंद को इस वक्त ड्राइव करना चाहता, चूंकि गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में रन नहीं मिलेगा. अखिलेश और विल्सन आरंभिक बल्लेबाज, सुशांत गेंदबाजी इस वक्त शुरू कर चुके हैं. बाबूगुड्डा टाइगर्स के लिए इस वक्त बनाने हैं 28 रन. 28 द टारगेट इन 4 overs. दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री विद द रिक्वायर्ड रन रेट ऑफ एक्जैक्टली 7 रन्स पर ओवर. और अगली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार, ड्राइव कर दिया इस वक्त पॉइंट की दिशा में. स्क्वायर ऑफ द विकेट, जस्ट वाइड ऑफ द पॉइंट. इन फैक्ट दे कम बैक फॉर द सेकंड एंड गेट इट कंफर्टेबली एट लास्ट. विकेट कीपर ने डाइविंग लगाकर विकेट जरूर चटकाए, लेकिन बल्लेबाज दूसरा रन यहां पर पूर्ण कर चुके थे. सेकंड रन कंप्लीटेड, एंड विद दैट कपल रन द रन अकाउंट बिगिन फॉर बाबूगुड्डा टाइगर्स. इट्स 2 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर. मैच नंबर 6 इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत अंडर दिस प्रेस्टिजियस क्रिकेट टूर्नामेंट अत्तावर प्रीमियर लीग सीजन 5 2024 के अंतर्गत यहाँ पर खेला जाता हुआ. और गेंदबाज इस वक्त सुशांत गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, अखिलेश सामना करने के लिए तैयार.
तो अखिलेश जिन्होंने पिछले मैच में एक बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन दिया था, करीबन 18 से 20 रन बनाए थे, मैन ऑफ द मैच अवार्ड उन्होंने प्राप्त किया था और इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। सुशांत गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार ऑन साइड पर, गेंद को खेलना चाहा, गेंद हमें दिस इज गोइंग टू बी सो इंटरेस्टिंग, जस्ट वी हैव टू वेट फॉर द अंपायर सिग्नल। और अंपायर रोलन पिंटो यहाँ पर देखते हुए कि किस तरीके से उन्होंने यहाँ पर इस कैच को लपका है मिड ऑफ पर, ऐसा कहना पड़ेगा गेंद उनके हाथों में बैठ गई थी, द बॉल वाज स्टिक्ड इन हिज हैंड, और इसी के साथ यह विकेट यहाँ पर गिर चुका है। अखिलेश इज आउट, अनफॉर्चुनेट डिसमिसल फॉर हिम, and fantastically grabbed by the mid off fielder just outside the 20-yard circle at mid off, और इसकी वजह से ये विकेट यहां पर गिर चुका है। सुशांत का पहला विकेट गिर चुका है, इट्स 2 for the loss of 1 wicket। So Abhiram, the number 3 batsman, is now comes out to the middle wearing a number 01 jersey, और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार सुशांत की गेंदों का। तो जहां तक 27 रनों के लक्ष्य के अंदर रोक कर रखने का सवाल है अत्तावारा टाइगर्स के गेंदबाजों का, तो इस वक्त अत्तावारा टाइगर्स के गेंदबाजों को बिल्कुल कसी हुई गेंदबाजी इस वक्त करनी होगी। दे हैव टू बाउल विद द टाइट लेंथ एंड लाइन दिस सिचुएशन। और जहां तक का सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो सुशांत इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद इस बार टर्न कर दिया, गेंद को खूबसूरती के साथ इनटू द गैप एज वेल, एंड बॉल रनिंग टू द डीप मिड विकेट फेंस फॉर अ बाउंड्री, फैंटास्टिकली टर्न्स इट अवे ऑफ द टोज। और मिड विकेट पर जो फील्डर खड़े हुए थे उनके बाईं ओर से गेंद निकली इस वक्त खूबसूरती के साथ, और 4 रन यहां पर बल्लेबाज प्राप्त करते हुए। सुशांत की गेंद पर यह चौका इस वक्त झड़ चुके अभिराम, और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 6 रनों पर, 6 for the loss of 1 wicket in the over number first in progress। Still a couple of balls left in this over, और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए सुशांत अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद ड्राइव कर दिया खूबसूरती के साथ ऑफ द बैक फुट, पंच्ड इट अवे थ्रू द ऑफ साइड डाउन टू वाइड इज लॉन्ग ऑफ फॉर अ सिंगल, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 7 रनों पर, 7 for the loss of 1 wicket in fact in the over number first in progress। Still a ball left in this over, और गेंदबाज सुशांत अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, ये गेंद lofted into the gap, it might been go all the way, in fact just we had wait and see, and it might been considered of just brilliantly inside the fence। बेहतरीन तरीके से गेंद को इस वक्त रोका गया था अपने ऊपर की ओर छलांग लगाते हुए, और 2 रन अपनी टीम को बचाने में सफल, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 9 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। It's 9 for the loss of 1 wicket, first over completed, and a good start for Babagoda Tigers, chasing the victory target of 2018 4 overs. They managed to score 9 runs on the board after completion of first over for losing 1 wicket. 19 runs more now they have to score for victory in remaining 3 overs. 19 रनों की दरकार इन बचे हुए 3 ओवर यानी 18 गेंदों में, और 9 विकेट उनके सुरक्षित, 9 विकेट they got kept intact। श्रेयस starts the fresh proceedings from the commentator box end, और वो इस वक्त गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज अभिराम के लिए। तो पहले ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं, पावर प्ले समाप्त हो चुका है, और फील्डर इस वक्त मैदान पर छाते हुए, और इंतजार है मैच दूसरे ओवर की पहली गेंद का। वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द फर्स्ट बॉल ऑफ द सेकंड ओवर ऑफ देयर इनिंग्स, और अभिराम इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए। यहाँ पर अत्तावारा टाइगर्स के विकेट कीपर, और फील्डिंग में जमावट करने के बाद इस वक्त गेंदबाज श्रेयस इस वक्त या 4 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर मौजूद, शॉर्ट फाइन लेग मिड विकेट, मिड ऑफ थोड़ा सा वाइडर, गली इस वक्त थोड़ा सा स्क्वायर दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। श्रेयस ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, लेग स्टंप से बाहर, स्पेक्ट्रा वाइड, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 2 अंकों पर। इट्स 10 for the loss of 1 wicket in the over number second in progress। At the start of the second over, in fact, it's 10 for the loss of 1 wicket, और इस बीच श्रेयस अपने गेंदबाजी के मार्ग पर तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, दाहिने हाथ के बल्लेबाज अभिराम के लिए। ये गेंद लेग स्टंप पर बेहतर गेंद थी, क्विक पीस ऑफ वर्क, इनफैक्ट ऑटोमेटिकली डन बाय विकेट कीपर, एंड नाउ वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द थर्ड अंपायर। शायद गेंद विकेट कीपर के हाथों से टकराने के बाद ऑटोमेटिकली गेंद स्टंप्सों पर टकराई थी, बिल्स डिस्टर्ब हुए थे, और देखना यह है कि जब बिल्स डिस्टर्ब हुए थे तब बल्लेबाज अपना बल्ला या पैर क्रीज पर वापस लैंड कर चुके थे या नहीं। जस्ट वी हैव टू वेट फॉर द थर्ड अंपायर डिसीजन।
So the decision came and he is out. His foot was in the air when stumping automatically done by wicketkeeper behind the stumps. And he is back to pavilion. So automatic stump made by wicketkeeper and second wicket lost in fact. Abhiram departs, it's 10 for the loss of 2 wickets. 10 रनों पर दूसरा विकेट गिर चुका है और इंतजार है इस वक्त नंबर 4 बल्लेबाज का. Just waiting for the number 4 batsman और देखते हैं कौन से बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर उतरते हैं. ब्रिजेश इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए. नंबर 4 बैट्समैन इज नाउ कमिंग आउट टू द मिडल और श्रेयस इस वक्त गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए. It's 28 the target now. 13 runs on the board already. 15 runs more now they have to score for victory. और ब्रिजेश सामना इस वक्त करने के लिए तैयार. श्रेयस अपनी ओर की अगली गेंद लेग स्टंप पर स्वीप करना चाहा गेंद को इस वक्त, चूंकि लेग स्टंप से कुछ ज्यादा गेंद बाहर की ओर नहीं निकल रहे थे और सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में. स्कोर रुक चुका है 10 रनों पर. स्टिल दे हैव टू स्कोर 18 मोर रन्स फॉर विक्ट्री इन रिमाइनिंग 16 डिलीवरीज. 16 गेंदें बाकी, 18 रन विजय के लिए चाहिए. और श्रेयस फिर से एक बार गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए तैनात ओवर द विकेट. ये गेंद लेग स्टंप पर आते हुए इस बार वाइड का इशारा. लेग स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलती हुई और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 11 रनों पर. 2 विकेट के नुकसान पर. 11 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस. स्टिल द इक्वल बैटल इज नाउ ऑन और गेंदबाज इस वक्त अंपायर से कुछ बातचीत यहाँ पर करते हुए. शायद सस्पिशियस एक्शन, शंकास्पद गेंदबाजी की शैली है इस वक्त. अंपायर सुरेश मोडोबिद्री उन्हें कुछ कहते हुए उनके सस्पिशियस एक्शन इसकी वजह से. और एक बार फिर से गेंदबाज तैयार. इस बार पैरों पर टकराई, प्लम एब्सोल्युटली प्लम इन फ्रंट, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट. गेंद लाइन पर टिप्पा खाई. मिडल स्टंप को कंसंट्रेट केंद्रीकृत कर कराती हुई गेंद पर ऑन साइड पर स्ट्रोक लगाना चाहता. गेंद उनके बैक लेग पर टकराई और अंपायर को कोई दिक्कत यहां पर महसूस नहीं हुई उन्हें आउट घोषित करने में. तो 11 रन 3 विकेट के नुकसान पर. तो इस वक्त 17 रन और चाहिए विजय के लिए. 17 मोर रन्स नाउ दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री. So Ashok, number 5 batsman is now comes out to the middle और श्रेयस की गेंदों का सामना करने के लिए तैयार. इस ओवर में श्रेयस 2 विकेट प्राप्त कर चुके हैं पहले 3 गेंदों में. अगली गेंद लेग स्टंप से बाहर, स्पेक्ट्रा वाइड. एक बार फिर से लेग स्टंप से काफी बाहर की ओर गेंद निकलती हुई. 1 more run added to the total in the face of extras और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 12 रनों पर. It's 12 for the loss of 3 wickets. Still 16 more runs now they have to score for victory. Still the equal battle is now on. और जहां तक श्रेयस का सवाल है, इस वक्त अपनी सही लेंथ और लाइन को इस वक्त तराशते हुए तैनात ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार. ये गेंद once again it's a wide. So still he just searching for his right length and line at this situation. Bowled a couple of wides in this delivery. Plenty of wides in fact. 1 रन का इजाफा. Scoreboard is now moving up to 13 for the loss of 3 wicket. तो काफी लंबा ओवर इस वक्त श्रेयस का प्रगति पर. श्रेयस अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट. अगेन ही बॉल्ड अ वाइड. जस्ट ड्रिफ्टिंग डाउन द लेग साइड एट द लास्ट मोमेंट. 1 more run added to the total in the face of extras और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 14 रनों पर. It's 14 for the loss of 1 wicket. ಅರಸು ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯನಾಥ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಒಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. लेग स्टंप से बाहर. इस बार गेंद कुछ ज्यादा तक लेग स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रहे थे और
सही गेंद घोषित, रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। 2 गेंदें इस ओवर में बाकी, स्टिल 2 बॉल्स लेफ्ट इन दिस ओवर। और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार, श्रेयस। ये गेंद लेग स्टंप पर, अगेन अ वाइड। तो छठा वाइड, 6th वाइड इन दिस ओवर, bowled by the bowler Shreyas. Still he is searching for his right length and line at this situation. 15 the score, 15 for the loss of 3 wickets, 13 to get in 14 deliveries. Still the match is now equally balanced. और Shreyas एक बार फिर से गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं, विदाई ने हाथों बढ़ता विकेट। ये गेंद, that's better, that's the line he has to bowl. But the ball missing just outside the leg stump at the last moment. और लेग बाय का इशारा अंपायर का, और लेग बाय के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 16 रनों पर। 12 रन चाहिए, 13 गेंदें बाकी। एक लंबा ओवर इस वक्त श्रेयस का यहाँ पर प्रगति पर, और इस वक्त वो गेंदबाजी करने के लिए तैयार विल्सन के लिए, और विल्सन सामना करते हुए श्रेयस की गेंदों का। यह गेंद इस बार सही गेंद घोषित, नॉट सो मूविंग टू फॉर साद लेग स्टंप। और ओवर की समाप्ति, 2 overs completed, 16 on the board, 3 wickets lost, 12 balls to go and 12 runs more. Now they have to score for victory. 7 wickets they got in their hand. ಅರಸು ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯನಾಥ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡಗಳ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವು ಈ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. Dhanush starts the fresh proceedings from that side end, and the third over starts in Babaguda Tigers innings. और गेंदबाज इस वक्त धनुष फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करते हुए। दोपहर के 2:20 यहाँ पर बच चुके हैं। धूप का प्रकोप अभी भी काफी गहरा मैदान पर नजर आता हुआ। सूरज ठीक आसमान की बुलंदियों को छूकर अपने प्रखर किरणों को मैदान पर इस वक्त फैलाता हुआ, और गर्मी की तीव्रता इस बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ यहाँ पर बढ़ते हुए, और इस भीषण गर्मी तले एक बेहतरीन प्रेस्टिजियस क्रिकेट श्रृंखला की शानदार प्रगति होती हुई अत्तावर प्रीमियर लीग सीजन 5 2024-2024 के अंतर्गत। और धनुष ओवर की पहली गेंद लेग स्टंप पर आते हुए कुछ ज्यादा तक लेग स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रहे थे। विकेट कीपर ने जरूर मांग की, लेकिन इस वक्त अंपायर पर कोई प्रभाव नहीं, और गेंद कुछ ज्यादा तक लेग स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रहे थे। 11 गेंदें बाकी, 12 रन चाहिए, और गेंदबाज इस वक्त तैयार था, इन्हें तो ओवर द विकेट। यह गेंद ड्राइव किया, लेकिन बैक टू द बॉलर की दिशा में कंसेक्यूटिव डॉट डिलीवरीज, and now straight away the pressure on the batsman. 12 to get from 10 balls, और 2 बेहतर गेंदें इस ओवर में गेंदबाज धनुष इस वक्त फेंक चुके हैं, और अपनी ओर की तीसरी गेंद लेकर तैयार। यह गेंद ऑफ द टॉस, गेंद को मोड़ दिया खूब चोटते के साथ, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर फील्डर काफी पीछे, 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, और दूसरा रन तेजी के साथ पूर्ण करते हुए इससे पहले के डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर काफी लंबा दौड़ अपनी दाईं ओर लगाने के बाद इस वक्त फील्डर फील्ड करे और थ्रो करे स्ट्राइकर एंड पर, स्टंप्स एंड पर बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने के। इट्स 18 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स, 10 रिक्वायर्ड फ्रॉम 9 balls. Still the match it's going to be 50-50 at this situation. और धनुष अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार था, इन्हें हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। यह गेंद लेग स्टंप पर आते हुए सही गेंद, अगेन राइट डिलीवरी। 8 balls remaining, 10 runs required. What a match is now progressing here. और धनुष इस वक्त तैयार है, एक बार फिर से अशोक के लिए। Lost it, and this time it fell short of a fielder, and the batsman got couple run for that stroke. शायद वहां पर मुश्किल सा मौका था, he's got a hand out that at the last moment, but the ball was flicked out of his hands. और बल्लेबाज इस वक्त 2 रन प्राप्त कर चुके हैं। मौका जरूर था वहां पर कैच आउट का, लेकिन इस वक्त गवा चुके हैं डीप मिड विकेट फील्डर। 2 रन का इजाफा, इट्स 20 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। 7 balls remaining, 8 runs required. फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट यहां पर चलते हुए, और
इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाज तैयार, ये गेंद ऑफ द टोस, गेंद को खेलना चाहा, शॉट फाइन लेग की दिशा में, थ्रो नॉन स्ट्राइक रन पर पहुंचा। स्ट्राइक रन पर थ्रो पहुंचता तो शायद कुछ बात यहां पर बन सकते थे, लेकिन थ्रो किया था शॉट फाइन लेग फील्डर ने नॉन स्ट्राइक रन पर। एक रन का इजाफा, 21 द स्कोर, 3 विकेट्स डाउन, 3 overs bowled, 7 required from last over. 6 for tie, 7 for win, and 6 balls to go in their innings. ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅರಸು ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯನಾಥ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಸಂಘಟಕರೊಂದಿಗೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅರಸು ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯನಾಥ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು ಟಾಸ್ಗಾಗಿ. Dion starts the match deciding over from the commentator box, and first ball of his fresh over is now coming up. 7 to get from 6 deliveries. Here we go. First ball. पहली गेंद, आओ इस बार बेहतर प्रयत्न जरूर, लेकिन गेंद को रोकने में सफल। दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़े और 2 रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं. कपल ऑफ रन्स गॉट बाय द बैट्समैन एट द लास्ट मोमेंट, और शॉर्ट मिड विकेट पर जो फील्डर खड़े हुए थे अपनी बाईं ओर डाइविंग लगाकर गेंद को रोकना चाहा, लेकिन गेंद उनके पहुंच से बाहर. 2 रन का इजाफा, 5 रन 5 गेंदे, 5 runs टू गेट फ्रॉम 5 डिलीवरीज. और डियोन फिर से एक बार गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट. ये गेंद इस बार स्वीप करना चाहा, स्वीप कर दिया खूबसूरती के साथ, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, फील्डर का भी पीछे 1 रन मिलेगा. दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े. दिस कुड बी इन ट्रबल, दिस कुड बी इन ट्रबल. दिस टाइम जस्ट वेट फॉर द थर्ड अंपायर. तो दैट माइट बी ना सर्टेन ट्रबल फॉर द बैट्समैन एट दिस सिचुएशन. देखने वाली बात यह है कि जब विकेट कीपर ने गेंद को थ्रो करने के बाद विकेटों पर निशाना दागा था, उनका निशाना बिल्कुल सही बैठता हुआ, और जब स्टंप्स पर गेंद टकराए, बिल्स डिस्टर्ब हुए थे, तब देखना है कि बल्लेबाज क्रीज पर अपना बल्ला यानी बैट लैंड कर चुके थे या फिर नहीं. तृतीय अंपायर इस वक्त इसका परिशीलन करते हुए डाइविंग एफर्ट इस वक्त लगाई थी बल्लेबाज ने, लेकिन ऐसा कहना पड़ेगा ये डाइविंग एफर्ट उनके लिए फायदेमंद साबित होगा या फिर नहीं. So comfortably at home, he's not out, and he survived. Couple of runs added to their total, और इन 2 रनों के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 25 रनों पर. 3 to get now from remaining 4 ball. The equation seems to, the things getting much easier now at this situation for the batting side. बाबू गुड्डा टाइगर्स, डियोन इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए पहले 2 गेंदों में 4 रन अब तक वो प्रदान कर चुके हैं. अपनी ओर की तीसरी गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए. यह गेंद इस बार, गेंद को इस वक्त एक बार फिर से मोड़ दिया बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, लेकिन क्लीन कलेक्शन विद 1 हैंड, और ओवरथ्रो के रूप में बल्लेबाज दूसरा रन प्राप्त कर चुके हैं. नो वन इज बैकिंग अप, एंड बिकॉज ऑफ दैट द बैट्समैन कम बैक फॉर द सेकंड रन इजीली इन द एंड. जस्ट अ सिंगल रिक्वायर्ड इन रिमेनिंग 3 बॉल. द स्कोर्स आर नाउ लेवल्ड. सिर्फ 1 रन की जरूरत है, 3 गेंदें बाकी, और अब कुछ चमत्कारी गेंदबाजी की जरूरत है इस वक्त डियोन के लिए. और जहां तक सवाल है सराउंडिंग फील्डिंग, इस वक्त लगभग सारे खिलाड़ी इस वक्त बल्लेबाज को घिर चुके हैं. इस वक्त 1 रन चाहिए 3 गेंदों पर, और इस बीच गेंदबाज तैयार. डियोन गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट. यह गेंद हल्के से गेंद को मोड़ दिया इस वक्त स्क्वायर लेग पर. दैट्स इट. थ्रिलिंग विक्ट्री बाय 7 wicket with just 2 balls to go in their innings for Babu Gudda Tigers against Attavara Tigers, and with that 6 wickets victory, 7 wickets victory, thrilling victory in fact, with just 2 balls to spare. Babu Gudda Tigers back the complete points. So match number 6
So match number 6 has been came to an end, and the match number 7 is now going to play between Arasu Warriors versus Vaidyanatha Warriors, and that match starts with Rijay Chopra. तब तक एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं. छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने एक बार फिर से हाजिर होंगे मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश के साथ जब अगले मैच की शुरुआत होगी यहाँ पर. तो अब वक्त है एक ब्रेक का. नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक. थैंक यू. धन्यवाद. May I request Ashok of Babugudda Tigers, please come to the commentary box to collect your Man of the Match award for your the good performance from the bat. I request Ashok of Babugudda Tigers to please come here, collect your Man of the Match award. Welcome back for the match number 7 of the day number 1 of this prestigious Attavara Premier League Season 5, which is proudly organized by Sri Durga Friends in this Urva cricket ground here in Urva. And we are just waiting for the opening batters to occupy their crease, and opening batters for the team Arasu preparation for Vaidyanatha Warriors. And looks like the captain of the side himself coming to bat as an opener batter. And it's Raghu is the one is going to open the innings for the team, and just number 7 Rakshak will going to start the proceedings from the commentary box and for Arasu Warriors. So coming back to these two teams, the performance, previous performance, the first match which is lost, Vaidyanatha Warriors have lost their first match in that inaugural match they played against Vaidyanatha. Against Veeramaruti. Vaidyanatha Warriors, they lost their first match, so that it's very important for Vaidyanatha to back in the winning track. And as far as the team Arasu Warriors is concerned, they're playing their third match. First ball, it's a warm-up delivery of the afternoon, which is gone far away outside the line of off stump, so no hesitation from umpire to call that wide. So first run comes up here for team Vaidyanatha.
It's one without loss of any wicket. Rakshit balls. This time one-handed switch. It is attempted ball, just changing the direction, going further away outside the line of off stump. White signal by umpire. With that extra scoreboard numbers on to 2 on the board. That means 2 extras to start with. And bowler Rakshit struggling to get his line and length. This time again, the batter Raghu wanted to go for the switch it, but couldn't manage to get that one from middle of the bat because of that line which is going outside the line of leg stump. And he couldn't manage to get that one right from the middle of the bat. But he got a single for that, first run from the bat. Oh, that was a loose delivery, full toss outside the line of leg stump. And the batsman couldn't manage to take the advantage of that delivery. Pradeep just missed it completely. Wicketkeeper also missed it. And they got a single in the form of bye. 3 without loss of any wicket in the over number first is in progress. Rakshit balls to Raghu. Raghu again wanted to go for the expansive drive. Very lucky indeed. Looks like he will go to drag the ball into the stumps. Lucky for him that ball just misses his stumps. Short fine leg fielder fields the ball. Ample time for the batter to complete the single. With that single, scoreboard moves on to 5 on the board. Rakshit ball lofted high up in there, and I think he will go to get the distance. Yes, he does. Got that one right from the middle of the bat, even though the wind is not flowing in that same direction. But because of the enough power behind the stroke there from Pradeep, he just got the distance down to long on for a 6. The much required big stroke came from the bat of Pradeep in this power play. Appeal for leg before wicket is Flum. Absolutely Flum in front of wicket. No doubt at all. Just he wanted to go over across the line of the delivery. The pays the penalty for that. Wicket number first which is back into pavilion. It's 11 for the loss of 1 wicket. After that, playing a proper cricketing stroke in the straight bat, he just wanted to go across the line and misses the line completely from the bat, and finding himself right in front of middle stump. And Rakshit got a wicket here, and scoreboard is 11 on the board. 11 for the loss of 1 wicket. Good comeback after that 6. The bowler managed to pick the same batter's wicket by bowling that a very tidy line that is on around the midland leg stump, and ball just having a little bit turn to take that wicket. This time driven up easily, but fielder is there in the mid wicket region. Before the throw coming from the deep, Raghu will going to turn out for the second run, and they managed to complete that 2 valuable runs as well. So 13 runs came from that first over. Good start for team Vaidyanath, even they lost the wicket of Pradeep, but because of that 6 in that over, they got a very good positive start in the first over. It's 13 for the loss of 1 wicket. Very bright sunny afternoon, 2 past 35 in the afternoon, and the temperatures which is recorded here in a 31-32 degrees Celsius. Very hot temperature, and in this hot temperature, of course, the condition of this cricket tournament is also becoming very hot. Each and every team wanted to get the victory, to get the place in the playoff round of prestigious Attavara Premier League Season 5 2024. So after that power play, second over going to start from the Attavara strikers banner end. Kiran will going to bowl that second over. After that power play, we can see that spread out field. The one fielder down at deep cover point between backward point and cover point, one at long off, one at fielder at wideish long on, one at mid wicket and square leg. That is 5 fielders outside the circle. There is a backward point, short extra cover, mid wicket, short fine leg, just behind the square leg umpire. That was a field set here for the right-handed batsman. One fielder at short fine leg, just behind the wicket keeper. Kiran to Ajay. A little correction, Raghu, the captain of the side, will go into face Kiran. Or they lofted at one, handsome looking drive, and that ball going to clear the boundary line quite easily. Effortlessly played there by Raghu. Just a flick of the wrist which comes into play to get the distance. What a fantastic struck coming from the blade of Raghu there. Just have a look at that one and replay. Ball went into the deep mid wicket boundary for a 6. Again the bad delivery, bad line. Raghu just last moment he got a bat onto that. And ball went into the deep fine leg boundary for 4 runs. The fine leg inside the ring, it's not a good line to ball. Runs are coming like a fast flowing waters of the rivers for the team Vaidyanath.
It's 23, the huge score on the board, 23 runs by losing only one wicket. The captain of the side playing a captain knock. 2 deliveries, 10 runs conceded. Lot of adjustment in the field set here for Raghu. They wanted to put one fielder inside the ring. Cow point fielder coming inside the ring towards the backward point region. And there is no long off actually. This time Raghu wanted to get the same direction where there is no fielder down at long off and couldn't manage to get that one from the bat. Missed it completely. No one there in the offside region. Again wanted to make a repeat. Roma misfield there by the fielder. Ball running down to deep extra cover boundary just inside the boundary line. Fielder managed to field the ball, but ample time for the ball batter to complete a 2, or it is a boundary. Just wait and see. One shot call by umpire Roland Pinto. Ajay couldn't manage to reach his home in that striker's end, so that just a couple of runs here. 28 for the loss of 3 wicket. Again Raghu wanted to go for the big shot, missed it completely. Lofted handsomely and he got the distance. Once again a clean hit coming from the blade of Raghu. Short pitch delivery and batsman just hammering it down to ID's long on, boundary for a 6. It's 28 for the loss of 3 wicket. Correction, the scoreboard is 30 on the board. It's 30 for the loss of the 1 wicket. The very good score on the board. 2 overs which comes to an end. And I think the team Arasu Warriors, they are not really having enough strength in their side. Just watching some 10 players are playing here, and that's why they are struggling to set a field. 2 overs 30 runs, that means 15 runs per over. It's good going for Vaidyanath Warriors. Nikhil brought into attack, ball that 3rd over of their innings. This time nice looking drive right in the vacant area, down to mid wicket boundary, and before the fielder from deep long on to run across his right to field the ball. Ample time for the batter to complete that 2 valuable runs, and with that 2 valuable runs Koban moves on to 32 for the loss of 1 wicket. Ajay getting that one very well from the middle of the bat. Again across the line, wanted to swing that one, missed it completely. Slight a bit of fumble there from the fielder. They're going to grab this opportunity. By call by umpire. One more addition of that single scope, and moves on to 33 on the board for the loss of 1 wicket in the over number 3rd is in progress. Nikhil away from us, right arm over the wicket balls. I wanted to go for the reverse sweep, and I think the ball hits the stumps. Raghu's entertainment innings which comes to an end. And in this particular match, he played a captain's knock of scoring some valuable runs from his bat. He scored 17 valuable runs. "19 runs he scored and 2 sixes which is involved in that 19 runs. A well played innings here from the batter Raghu there. It's 33 for the loss of 2 wicket in the over number 3rd is in progress. The new batter coming to the middle, just in number 7. It's a good position which is maintained there by the Vaidyanath so far. Azim is a new batter in.
This time shuffled across the line of delivery, so that ball just passing around his legs. Umpire giving some warning for the bowler as he comes right in front of umpire, the protected zone. Azim to face next delivery from Nikhil, right arm over the wicket bowls. Again, lovely delivery, good line once again, just around outside the line of off stump. They tried to get that on the offside region, missed it completely. No runs scored. A tidy over is in progress. So next match will be played between Babu Gudda Tigers versus Good Day Bulls. So that I request all the players of both the teams please be reported for the signatures as soon as possible. Nikhil balls, flicks it off his legs down to fine leg region, square leg region. In fact, behind the square, one more single. With that single, scored moves on to 34 for the loss of 2 wicket. Excellent over which is comes and 4 runs coming from that over. Great over. And compared to the previous over, previous 2 overs, which is 12 in the first, 17 in the second, and only 4 in the third. Excellent comeback here by the bowler in this third over. So last over will go into start. So last over will going to start from the far end, from the Attavara strikers end. The leg spinner is in action, and Azim picked up a single by pushing the ball down to short cow point region. With that single, score moves on to 35 for the loss of 2 wicket in the over. Number 4 is in progress. Bowler to continue from the far end. Around the wicket, second time in this over. This time lofted handsomely, and ball just sailing into the out of the park. For a huge 6 came from the bat of Ajay. You can't ball that line whenever in the afternoon section in the UCG ground. The direction of the wind will going to help that stroke. Just on a flick of the wrist, which is good enough to get the distance for Ajay. And score jumps into 41 for the loss of 2 wicket. Lakesh. Yeah, that will go into be a huge no ball. It's a huge no ball. The beamer which is gone over the head of the batter and the wicket keeper, and it's going to be a free hit delivery for Ajay. It's not a good start there from the man who was bowling that last over. Huge total on the board, 42 for the loss of 2 wicket. There's certainly Arasu Warriors, the worries which is continues for the Arasu Warriors in this match also. 42 for the loss of 2 wicket. Free hit delivery. The bowled him, but nothing much worried about that bowled because of that free hit delivery. And even everyone confused, even umpires also confused in that delivery, which is hits the stumps because of that free hit delivery, and just the single in the form of bye. 43 for the loss of 2 wicket. 3 balls left in this over. Outside the line of off stump, going to be a fair delivery. And wicketkeeper behind the stump did the rest. So such kind of line which is required in the beginning of the innings, beginning of the over. This time slight a bit of footwork there from the fielder at short mid wicket to try to stop the ball. Very good throw. The very good throw this time. Umpire will going to ask for the third umpire to give this decision, because the wide throw, high throw coming from the fielder, and very good collection there by the fielder, wicketkeeper. And just uprooted the stumps, uprooted the bills from the stumps, and wait and see will it going to be out or not. Azim is a man, he's running towards that strikers end. Wait and see, well, he will going to be a safe or not. And it's going to be a tight call for the third umpire to decide whether the batter is safe or not. And the third umpire Suresh Mudabidre here in our commentary box.
We're going to see that angles which is given by the YouTube channel operators, technicians of Mangalore Media. Meanwhile, I request all the players of Good Day Bulls as well as Attavara Babaguda Tigers. ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಬುಗುಡ್ಡ ಟೈಗರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗುಡ್ಡೆ ಬುಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸಮಯದ ಅಭಾವವಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. For the latecomers, you are watching this prestigious cricket tournament, Season 5 of this prestigious Attavara Premier League 2024, and which is proudly organized by Sri Durga Friends in this UCG cricket ground. And the 8 teams which is participating, not out, which is a call from the third umpire. That means Azim is safe there. 45, which is the total score, because that run which is completed. And last delivery of their innings which is coming up. Coming down the track, Azim using his feet, but didn't got enough placement and timing in that stroke. Just a single, so they finished their innings of 4 overs. Vaidyanath, the man is to get the very good total of 46 runs, and they set a target of 47 to win the match. Just under 12 runs per over is the required run rate for the team Arasu Warriors. So once again, the worries continues here for Arasu Warriors that they need to get a huge total to win this match, and wait and see how well they will going to get this total against Vaidyanath. And we'll take a short break, and this is a battle between two warriors, and wait and see, will it going to be a Vaidyanath or will it going to be a Arasu Warriors? We'll take a short break here, and after a short break we are going to, yes, my friend Mr. Gopi will go to continue in our national language Hindi. Thank you. Dhanyawad Satish. So 47th target in 4 overs for Arasu Warriors, set by Vaidyanath Warriors. At batted first, Vaidyanath Warriors managed to score 46 runs in the stipulated 4 overs, and 47 the target for Arasu Warriors, and the innings now going to start. और उनके दोनों आरंभिक बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर मौजूद है, और जहां तक सवाल है इस वक्त
गेंदबाजी का, तो गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए गेंदबाज और पहला और एकमात्र पावर प्ले ओवर उनकी पारी का शुरू होता हुआ निखिल और एलन आरंभिक बल्लेबाज, जबकि अजय इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए। 7 खिलाड़ी भी इस कस के दायरे के अंदर मौजूद और ओवर की पहली गेंद लेकर अजय इस वक्त तैयार था। इन्हें तो ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई वाइड का इशारा अंपायर का, और वाइड की इस रन के साथ रनों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है। इट्स 1 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर फॉर अरसू वॉरियर्स। निश्चित रूप से यहाँ पर अरसू वॉरियर्स के एक धमाकेदार शुरुआत, एक्सप्लोसिव स्टार्ट की इस वक्त जरूरत है अगर उन्हें 47 रनों के लक्ष्य तक पहुंचना है तो। और अजय की गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई वाइड का इशारा, और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 2 रनों पर बिना किसी नुकसान के, जबकि पहला ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर। और इस बीच जय एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए निखिल के लिए दाहिने हाथ ऊपर तक विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। यह गेंद ऑन साइड पर मोड़ना चाहा, गेंद लगभग लाइन के बाहर टिप्पा खाते हुए अंतिम क्षण में गेंद उनके पैरों पर टकराई जरूर, लेकिन अपील को नकार दिया सही तरीके से अंपायर ने, और 1 रन का इजाफा लेग बाई के रूप में उनके खाते में जुड़ चुका है और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 3 रनों पर बिना किसी नुकसान के, जबकि पहला ओवर इस वक्त प्रगति पर। जय एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो ऊपर द विकेट। ये गेंद बेहतर गेंद थी इस वक्त, फॉलो थ्रू में गेंद को लपक नहीं पाया, रन के लिए दौड़ पड़े, सही रन पर खतरा, और इसी के साथ यहां पर ऐसा कहना पड़ेगा अंपायर शायद इस वक्त इशारा कर रहे हैं तीसरे अंपायर की ओर, तो इट्स गोइंग टू बी अ थर्ड अंपायर, लेकिन काफी नजदीकी मामला था और शायद बल्लेबाज यहां पर खतरे में पड़ सकते हैं। देखना यह है कि तृतीय अंपायर क्या निर्धार देते, क्या बल्लेबाज स्टंप सुखाड़ते समय क्रीज पर अपना बल्ला ड्रैग कर चुके थे या फिर नहीं, या फिर बल्ला बैट हवा में था, तो देखते वी हैव टू वेट फॉर द थर्ड अंपायर डिसीजन, एंड द डिसीजन केम एंड द बैट्समैन इज डिपार्ट्स, ही इज आउट। और यहाँ पर आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए क्रीज तक पहुंच नहीं पाए थे जब विकेट उखाड़े गए थे, और इसी के साथ पहला विकेट यहाँ पर गिर चुका है। 3 रनों पर पहला विकेट खो चुका है। अरसू वॉरियर्स आर नाउ लुकिंग इन ट्रबल, दे आर 3 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। मैच नंबर 7 of this prestigious cricket tournament, Attavara Premier League Season 5 2024 is now progressing here, which proudly presented by Sri Durga Friends in this beautiful UCG, the Lords of Andram Cricket, Urva Cricket Ground। और निस्संदेह ये श्रृंखला, ये टूर्नामेंट एक शानदार प्रगति यहाँ पर करते हुए, तो इस वक्त इंतजार है नए बल्लेबाज का। द न्यू बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल, मंजू इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए, और अजय इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए। दर्शकों की तादाद कुछ ज्यादा इस वक्त नजर नहीं आ रही है, लेकिन कुछ गिने चुने दर्शक जरूर मौजूद, और हम उम्मीद अपेक्षा करते हैं कि जैसे जैसा वक्त गुजरता जाएगा दर्शकों की संख्या में भी यहाँ पर वृद्धि होती जाएगी। तो इस वक्त नए बल्लेबाज मंजू इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, और अजय इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद ड्राइव कर दिया, इस वक्त गेंद पहुंची इस वक्त लॉन्ग ऑन पर, गेंद का पीछा करते हुए फील्डर, लेकिन गेंद को रोकने में सफल, और गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। वाइड ऑफ मिड ऑन फील्डर गेंद को इस वक्त खेल दिया था खूबसूरती के साथ इनटू द गैप एज वेल, और इस बीच 4 रन बल्लेबाज प्राप्त करने में सफल, और इस चौके के साथ मंजू का खाता खुल चुका है और कुल स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 7 रनों पर बिना किसी नुकसान के, 7 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। और अजय इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर तक विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार, बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए अगली गेंद, ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, गेंद इस वक्त निकल चुकी है थर्ड मैन सीमा रेखा से बाहर, अजीब और गरीब ढंग से, शायद गेंद बल्ले के टॉप एज पर 2 बार टकराने के बाद निकल चुकी इस वक्त अपने दिशा को बदलते हुए थर्ड मैन फील्डर के सिर के ऊपर से 4 रनों के लिए। ಅದೇ ರೀತಿ ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಅಶೋಕ್ ಇವರಿಗೆ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಶ್ರೀಯುತ ಪುನೀತ್ ಇವರು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। इस बार गेंद को उछाला, लंग ऑफ पर 1 रन का इजाफा, और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि कुल मिलाकर
पहला ओवर उनका यहाँ पर प्रगति पर। और अजय इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर तक विकेट तैयार। बॉल्ड आउट, परफेक्ट इन कटर डिलीवरी एंड ही जस्ट गॉट द रीड ऑफ द बैट्समैन। गेंद और बल्ले और पैर के बीच में अंतर छोड़ गए और उस अंतर से गेंद निकलकर सीधे मिडल ऑफ स्टंप पर जा टकराए। गिल्ली अब डिस्टर्ब होते हुए और इसी के साथ यह पहला विकेट यहाँ पर गिर चुका है। तो निखिल की पारी समाप्त हो चुकी है और दूसरा विकेट यहां पर खो चुका है। अरस वॉरियर्स दे आर लुकिंग इन ट्रबल। इट्स 12 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। So new batsman is now comes out to the middle, नजीर। और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार नहीं, वो नॉन स्ट्राइकर पर मौजूद इस वक्त। और मंजू इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। तो गेंदबाज 08 नंबर की जर्सी पहने हुए इस वक्त गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए दूसरा ओवर शुरू होता हुआ अरसू वॉरियर्स की पारी में। संतोष गेंदबाजी इस वक्त प्रारंभ करते हुए और ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए पहली गेंद लेग स्टंप से बाहर एंड starts off with a wide 13 for the loss of 2 wickets now in the over number second। और फिर से एक बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए 13 रन 13 for the loss of 2 wicket। और गेंदबाज फिर से एक बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार गेंद को उछाला खूबसूरती के साथ, लेकिन थ्रो स्ट्रोक में इतना पर्याप्त दम नहीं कि गेंद सीमा रेखा को पार कर सके। और लंगोल सीमा रेखा के अंदर गेंद को लपक लिया गया। ऐसा कहना पड़ेगा जस्ट प्ले दैट वन अगेंस्ट द विंड एट द लास्ट मोमेंट। हवा के रुख के खिलाफ स्ट्रोक्स को इस वक्त खेला था, लेकिन वहां पर गेंद अपनी रफ्तार को खोते हुए लंगोन सीमा रेखा के अंदर फील्डर द्वारा लपक ली गई। तो विकेट गिर चुका है, विकेट नंबर 3। मैच नंबर 7 एपीएल अत्तावर प्रीमियर लीग सीजन 5 2024 के अंतर्गत यहाँ पर खेला जाता हुआ और एक बेहतरीन नज़ारा हम यहाँ पर देख रहे हैं इस कमेंटेटर बॉक्स में। और निश्चित रूप से ये श्रृंखला एक बेहतरीन प्रगति यहाँ पर करती भी। नए बल्लेबाज का आगमन इस वक्त होता हुआ नंबर 5 बैट्समैन तो रक्षित नए बल्लेबाज के रूप में ही नाउ कम्स आउट टू द मिडल। और गेंदबाज संतोष इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट संतोष गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए इस वक्त तैयार। इस बार ऑन साइड पर गेंद को मोड़ दिया, डीप मिड विकेट पर गेंद पहुंची, नॉट मोर देन अ सिंगल। और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 14 रनों पर। 14 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर सेकंड इन प्रोग्रेस। स्टिल द बैट्समैन ऑफ अरस वॉरियर्स जस्ट सर्चिंग फॉर द राइट ट्रैक एट द सिचुएशन। और जहां तक सवाल है मंजिल तक पहुंचने तो मंजिल काफी दूर इस वक्त नजर आती है। स्टिल दे हैव अ लॉन्ग वे टू गो, 33 मोर रन्स नाउ दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री। और गेंदबाज संतोष गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए यह गेंद ड्राइव किया इस वक्त गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में। और 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपना छोड़ बदल चुके। इससे पहले कि लॉन्ग ऑन पर गेंद को फील्ड किया जाता फील्डर द्वारा। 15 रन 3 विकेट के नुकसान पर रन्स सिंगल्स के रूप में इस वक्त बनते हुए
और जरूरत है इस वक्त चौके और छक्कों के इस मैच में कमबैक करने के लिए अरसू वॉरियर्स के बल्लेबाजों को। और गेंदबाज इस बीच अगली गेंद लेकर तैयार, रिवर्स शॉट इम्प्रोवाइजेशन किया था लेकिन उतना कुछ खास नहीं, और कवर पॉइंट पर गेंद पहुंची, 1 रन का इजाफा, और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 16 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर, कुल मिलाकर 4 सही गेंदे इस ओवर में फेंके जा चुके हैं और संतोष फिर से एक बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार, दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। ये गेंद ऑफ द टोज जस्ट ओवर द मिड ऑन फील्डर्स हेड, he's got a hand on that at the last move and this time a chance of a run out, but I think it's going to be a third umpire। तो देखने वाली बात है कि the certain things देख रही है कि गेंदबाज के हाथ से टकराकर स्टंप्सों पर टकराई थी या फिर उनका हाथ स्टंप्सों पर टकराया था, तो जस्ट वी हैव टू चेक इट फॉर द थर्ड अंपायर, और देखते हैं यहाँ पर बल्लेबाज बच पाते हैं नहीं। तो मुश्किल से मौका जरूर था इस वक्त मिड विकेट फील्डर द्वारा, और हाथ जरूर अड़ा था, गेंद उनके हाथों से छूटती हुई, और दूसरे रन पूर्ण करते समय देखना ही है कि बल्लेबाज यहाँ पर बच पाते हैं या नहीं। And the decision came from the third umpire, he's out. So one more wicket fallen, और इस विकेट के पतन के साथ अब ऐसा कहना पड़ेगा the problems are now more building up for the batsmen of Arasu Warriors. (17 for the loss of 4 wicket) and still a ball left in this over. अक्षित is now comes out to the middle as a number 6 batsman, और इस वक्त गेंदबाज अपनी ओर के अंतिम गेंद लेकर तैयार। संतोष इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। ये गेंद पैरों पर गेंद टकराई, लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए रन के लिए दौड़ पड़े, 1 रन मिलेगा जरूर। वहां पर शॉर्ट थर्ड मैन पर फील्डर जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो करे, विकेट कीपर के हाथों में बल्लेबाज के पास समय था कि 1 रन के साथ अपना छोड़ बदल सके। लेग बाय का इशारा, और 2 ओवर की समाप्ति के बाद 18 रनों पर स्कोरबोर्ड पहुंच चुका 4 विकेट के नुकसान पर। 18 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट, 2 overs had been bowled and 29 more runs now they have to score for victory in remaining 2 overs, and the required run rate is now gone up to exactly 14.5 runs per over. 12 balls, 29 runs needed. तो इस वक्त नए गेंदबाज गेंदबाजी पर उतरते हुए, और
रघु गेंदबाजी इस वक्त प्रारंभ करते हैं। रघु स्टार्ट्स अ फ्रेश प्रोसीडिंग्स फ्रॉम द कमेंटेटर बॉक्स एंड और पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। निस्संदेह जहां तक सवाल है अरसू वॉरियर्स का, तो इस वक्त उनके बल्लेबाजों को चाहिए चंद चौके और छक्के इस मैच में कमबैक करने के लिए। और रघु इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। First ball comes. Lofted and fine. No, in fact, it cuts it off just inside the fence. A good piece of work made by the deep backward square leg fielder. एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा। बेहतर तरीके से गेंद को फील्ड किया गया था। इस वक्त डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के अंदर सिर्फ एकमात्र रन इस वक्त मिल चुका है। It's 19 on the board for losing 4 wicket at the start of the third over. In fact, और अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार गेंद को खेल दिया मिड विकेट पर, लेकिन नॉट क्वाइट मिडलिंग इट एट द लास्ट मोमेंट एंड ही हैज गॉट ओनली अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक। और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 20 रनों पर। 47 द टारगेट, दैट मींस नाउ 27 मोर रन्स दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री इन रिमेनिंग 10 डिलीवरीज। और रघु अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। इस बार फैंटास्टिक डिलीवरी, परफेक्ट लेग कटर। गेंद को इस वक्त उछालना चाहा और इस बार चूके रन आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए। वन मोर विकेट फॉलन एंड नाउ 3 runs रिक्वायर्ड फ्रॉम एवरी बॉल। 27 टू गेट इन रिमेनिंग 9 balls. तो इस बीच 9 गेंदों में 27 रन चाहिए। 27 टू गेट फ्रॉम 9 balls। और गेंदबाज इस वक्त तैयार। यह गेंद इस बार बाउल्ड आउट, गॉन फॉर अ बिग वन एंड लॉस्ट हिज मिड ऑफ स्टंप। वन मोर विकेट फॉलन एंड now they are looking deep in trouble. In fact, 27 to get in remaining just 8 balls. This is the match number 7 of this prestigious cricket tournament, APL Attavara Premier League Season 5 2024 is now progressing here. और निश्चित रूप से यहाँ पर एक बेहतरीन क्रिकेट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है इस श्रृंखला के, इस टूर्नामेंट के अंतर्गत। एक बेहतरीन एक्सक्विजिट लाइव टेलीकास्ट मैंगलोर मीडिया चैनल द्वारा इस वक्त किया जा रहा है यूट्यूब पर। निस्संदेह देश, न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी कई हजार दर्शक इस श्रृंखला का मुआयना यहाँ वहाँ पर करते हुए। और इस बीच गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। 8 गेंदें 27 रन चाहिए। और रघु इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए। फैंटास्टिक डिलीवरी, परफेक्ट लेग कटर गेंद थी लेकिन कुछ ज्यादा उछाल लेते हुए और 1 रन का इजाफा। So, बाप बेटों की जोड़ी, फादर एंड सन इन फैक्ट। तो इस वक्त बाप बेटों की जोड़ी क्रीज पर मौजूद है और देखना यह है कि बाप बेटे की जोड़ी क्या कमाल यहाँ पर कर दिखाती है बचे हुए 7 गेंदों में। फिलहाल बेटा इस वक्त सामना करता हुआ और ये गेंद लेग स्टंप पर विकेट कीपर चूके और यहाँ पर 1 रन मिलेगा। 1 + 1 2 runs in fact added to the total, and with that couple runs the scoreboard moving up to 23 now for the loss of 6 wicket। और 7 गेंदे अब बाकी 24 रन चाहिए।
और इस बीच ये गेंद ड्राइव कर दिया इस वक्त, और इस बार रन के लिए दौड़ पड़े, एक रन इस बीच मिलेगा या नहीं देखना पड़ेगा एक बार फिर से। इट्स गोइंग टू बी अ थर्ड अंपायर। तो इस वक्त तो कुमार जो बाप थे उन्होंने इस वक्त कॉल दिया था बला बला बला। तो जहां तक सवाल है यहां पर पहुंच चुके हैं या फिर नहीं देखना पड़ेगा। फिलहाल बेटा बेटा तो सुरक्षित है इस वक्त। तो यहां पर देखना यह है कि बाप को तक यहां पर नहीं छोड़ा इस वक्त बेटे ने रनआउट इस वक्त कर चुके हैं, लेकिन देखना यह है कि यहां पर वो रनआउट करने में सफल हुए हैं या फिर नहीं। तो यहां पर देखना यह है कि कुमार इस वक्त रनआउट से बचते हैं या फिर नहीं। नो डाउट इज द कॉल एंड द बैट्समैन सर्वाइव्ड। तो अपने हाथों से इस वक्त विकेटों को उड़ाया था इस वक्त, और जहां तक सवाल है इस गेंद पर कुमार यहां पर बच चुके हैं। तो ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 3 overs completed, 24 on the board, 23 now they have to score in last over। और इस बीच खूबसूरती के साथ रिवर्स शॉट खेला इम्प्रोवाइजेशन करते हुए डीप बैकवर्ड थर्ड मैन पर दूसरा रन दौड़कर पूर्ण कर चुके हैं। 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 26 रनों पर। 21 to get now from 5 balls। They badly required a couple of boundary or 6s at this stage to get back into this match. Again bowled out. That is the end of Kumar, and 7th wicket down for Arasu Warriors. It's 26 for 7. The last chance now in front of the batsmen of Arasu Warriors. 21 needed from 4 balls. 3 sixes and 1 boundary required in the remaining last 4 deliveries. Mohan, the number 9 batsman, is now coming out to the middle. Almost a last chance in front of the batsmen of Arasu Warriors at the situation. 21 to get from 4 deliveries. इस बार ऑन साइड पर गेंद को खेल दिया डीप मिड विकेट पर, not more than a single. 27 for 7 now. 20 required in 3 deliveries. और अब ऐसा कहना पड़ेगा यहाँ पर वैद्यनाथ वॉरियर्स की विजय निश्चित अगर गेंदबाज कोई नो बॉल या वाइड इन 3 गेंदों में ना फेंकते हैं तो। Lofted, and this time I think it's got the distance. Yes, it does. So 6 runs declared by umpire, लेकिन ये छक्का कुछ हद तक थोड़े देर से यहाँ पर लग चुका है. This 6 came quite lately now. 33 the score and 14 to get from 2 deliveries. अगर गेंदबाज कोई नो बॉल या वाइड इस वक्त फेंकते तो शायद बल्लेबाज के लिए यहाँ पर एक मौका क्रिएट हो सकता है. तो देखते हैं क्या होता है अगली गेंद पर. इस बार चूंकि and misfielded. In fact, they completed one, looking for the second, and they come back for the second very safely in the end. 2 रन तीसरे रन के लिए दौड़ पड़े, लेकिन इस बार नहीं बच पाएंगे. Couple of runs added. 35. तो इस वक्त उनके निगदित समय समाप्त हो चुका है, तो सिर्फ एकमात्र गेंद अब उनकी पारी में बाकी है. सो 12 रिक्वायर्ड फ्रॉम लास्ट डिलीवरी. एब्सोल्युटली
जहां तक सवाल है इस वक्त नए बल्लेबाज का किरण उनकी पारी की अंतिम गेंद का सामना करने के लिए इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए Kiran is now comes out to the middle as a number 10 batsman to facing a last delivery of their innings. Harish bowls the last delivery of the match. तो अंतिम गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार हरीश किरण के लिए. Played defensively. That's it. And 11 runs victory for Vaidyanath Warriors against Arasu Warriors, and with that 11 runs victory, Vaidyanath Warriors back the complete points. So match number 7 of this prestigious cricket tournament, APL Attavara Premier League Season 5 2024 has been came to an end, which won by Vaidyanath Warriors by 11 runs against Arasu Warriors. So the next match will be the match number 8 of this tournament is now going to start within just short while. और तब तक एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं. छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे अंग्रेजी में सतीश के साथ, जब यहाँ पर नंबर 8 मैच की शुरुआत होगी इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत. सो मैन ऑफ द मैच ऑफ दिस मैच अवार्ड गोज टू Raghu, who blasted 19 runs in just 9 deliveries, including 1 boundary and 2 sixes. He adjudged man of the match, and he also picked up 1 wicket in his bowling. Because of this all-rounding performance, Raghu of Vaidyanath Warriors adjudged man of the match. I request Raghu of Vaidyanath Warriors, please come on to the stage and receive the man of the match award from the organizers. Raghu of Vaidyanath Warriors, please to be reported here to receive the man of the match award from the organizer. So next match starts with just short while. तब तक एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे अंग्रेजी में सतीश के साथ, जब यहाँ पर अगले मैच की शुरुआत होगी. Now it's time for break. Thank you. धन्यवाद. So man of the match, which goes to the captain of Vaidyanath Warriors, the birthday boy. Raghu will go to receive the man of the match award from one of the biggest supporter of underarm cricket, Nandan Kulshekar will go to present this man of the match award. So birthday boy Raghu receiving that man of the match award from Nandan Kulshekar. Congratulations Raghu, being the captain of the side, and he played a captain's knock for his team. Thank you. Thanks a lot.
So match which is started already and runs which is came 8 with the help of one boundary. Once again, exquisite fielding there by the fielder. Akshay down at backward point region. What could be a certain one more boundary here because of that good fielding there by the fielder, just in number 3, and managed to stop that stroke from the bat of the batter Akhilesh. He's batting on 6. Total score now moves on to 9 on the board without loss of any wicket. Akshay again bowling from the far end. Loose delivery and he missed it completely. Wilson couldn't manage to get the ball because short pitch in the sense when the ball is came into his bat, ball slide a bit of keeping low and there is no chance at all for any run. Akshay to ball now big wide. It's going to be a huge wide. They're going for the extra run as well. A couple of runs which is scored in the form of extras. So 2 wides takes the total score into double figure now. 11 on the board without loss of any wicket. It's not a good start there from Akshay. But certainly it's a good start from the batters of team Babu Gudda Tigers against Good Bulls. There's a lovely switch it. Again plays it right between cover point and backward point. And before the fielder from backward point region to run into his back. Lovely piece of running between the wicket from these 2 batters. 3 valuable runs which is scored. And again Akhilesh getting that valuable runs from his bat. 3 valuable runs. And scored Namozan to 14 on the board in the over number first is in progress. Good day Bulls. Again they wanted to get that one on the onside region. Missed it completely. Wicket keeper completed the job but not a result for in his favor. After completion of first overs, good going. The team Babu Gudda Tigers are looking in a good position in the first over. They're capitalizing that power play very well against Akshay's bowling. It scored 14 valuable runs. It's 14 without loss of any wicket. A good start given there by the opening batters. Jersey number 10 is in action. Nelson, very interesting. Nelson to Wilson. No, Wilson is in non-striker end. Akhilesh is on strikers end. Now Nelson to Akhilesh. Right arm over the wicket balls. That's going to be wide and starts with the warm-up delivery of the afternoon. And that warm-up delivery scored now moves on to 15. Wide signal umpire. Nasir Bajal. And Nelson to continue. Right arm over the wicket to Akhilesh. Akhilesh drives that one down to deep long on region. And a good piece of fielding there by the fielder. Just a single. With that single scored now moves on to 16. Now it's going to be a Nelson to Wilson. So Nelson will go into ball to Wilson. It's very good competition between Nelson versus Wilson. And wait and see. Which son will go into dominate, whether it's going to be a Wilson or a Nelson. Nelson to continue from the commentary box end. Right arm over the wicket to Wilson. This time ball is in there. Oh, wicket keeper Sunil couldn't manage to direct it. But when does direct it, wait and see whether the batsman Wilson will go into be safe or not. But seeing the body language of Wilson, the batter, looks like he's not really looking comfortable in the middle. But let's just wait and see the third umpire, the decision of the third ump, whether Nelson will go into be safe or not.
So wait and see what will going to be the decision from the third umpire. Roland Pinto as the third umpire will going to see the batter's position, whether he is safe or not. So everyone's eyes on to the commentary box and have a look at that. The fielders of the opposition team, they turn their face into the commentary box and result in their favor. And batsman is short of his crease. And Nelson, of course, the Wilson is back into pavilion. After that, a very good start given from opening fair, but his contribution is not a big. But Akhilesh has got most of the runs, but he's back into pavilion for duck. It's 16 for the loss of 1 wicket. Just waiting for the new batter to occupy the crease. Kishan, oh, very interesting. Wilson gone, Kishan came. One more S-A-N. Now this is not a S-O-N, this is S-A-N. S-H-A-N, Kishan. So something is there in that last spelling and this last. Now Wilson continues. Right arm over the wicket to Akhilesh. Driven that one nicely. Right in the gap towards the mid wicket. The ball definitely going to cut it off by the fielder. And before the throw coming from the fielder for mid wicket region towards the bowler's hand. Ample time for the batter to complete that 2 valuable runs. Akhilesh looking so good so far. He's playing very confidently and getting the ball right from the middle of the bat every time. When he hits the ball, he hits the ball very confidently. 18 on the board. Nelson balls try to york the batsman. This time wicket keeper behind the stump, appealing for the caught behind. The Sunil behind the wicket. Something is there. And Sunil is asking umpire to give that DRS, decision review system. But unfortunately, we are not having that much of technology to see the ultra edge of the bat. It's very difficult. But a very confident appeal coming from the wicketkeeper behind the stump. But both the umpires are unmoved. Outside the line of off stump, going for the drive. Good bowling there from Nelson. Keeping that very tight line outside the line of off stump. And the good comeback here by the bowler in this over. It's 18 for the loss of 1 wicket. Nelson away from us to Akhilesh. Drive, beautiful shot. Down to deep extra cover. No one there in the extra cover. Down to deep extra cover boundary for 4 runs. Glorious shot there from Akhilesh. Absolutely delightful cricketing stroke. Just transferring his weight onto the back foot. Plays it beautifully over extra cover boundary for 4 runs. Classical cricketing stroke coming from the blade of Akhilesh there. And scoreboard jumps into 22 for the loss of 1 wicket after completion of over number 2. They're going exactly 11 runs per hour. And if you look at that scoreboard, just I want to see the contribution from Akhilesh. He's getting the most of the runs. 16. Out of 22, he scored 16 runs and 6 extras. That means no one batter scored the runs. Only Akhilesh scored all the runs, that is 16. And 6, which is the second highest contribution. It's not from the batter, but from the extra. Sunil is a bowler. Will go into bowl that third over of the innings of the team Babagudda Tigers. Really, Babagudda Tigers, they're playing like a Tigers. And especially the very dangerous tiger is Akhilesh. So far, he's looking so confident and they played some enterprising cricketing strokes in this 16 runs which is came from his bat. So Sunil brought in attack from the Attavara strikers end. Right more wicket balls. Lofted, opportunities created. And the fielder behind the ball completes the catch. The wicket number 2 which is back in the pavilion of Babagudda Tigers. It's time for Kishan to back in the pavilion. Didn't quite getting hold of that one properly. Intention is very clear that he wanted to get over that extra cover fielder. But didn't got enough bat onto that. Pays the penalty for that. It's 22 for the loss of 2 wicket. All we can see in the scoreboard. 4 2s in the scoreboard. 22 for the loss of 2 wickets. 2 overs which is completed. 2 2 2 2. 4 2s in the scoreboard. And new batter coming to the middle is just in number 1. Abhiram is a new batter. Came into middle.
will going to take the strike. Sunil has got a vital breakthrough here. In his first ball, he got a wicket with this very good line and length. So needed such kind of bowling for performance here for good Bulls. Wicketkeeper misses it. Chance of run out. No. And is not a good for the fielder to return. There is opportunities created for the run out in the non-striker's end, bowler's end. But the fielder returns the ball to the hands of wicketkeeper. And one more run scored at 23. It's from the bat of the batter. So Abhiram is off the mark with a single. It's 23 for the loss of 2 wickets. The over number 3 is in progress. The very good competition is going on of this prestigious Attavara Premier League Season 5 2024, which is proudly organized by Sri Durga Friends Attavara. Wanted to go for the reverse sweep, a white signal umpire. Wicketkeeper Lara couldn't manage to gather that one very cleanly. Of course, it's a lovely name, Lara, for Prasad. The Brian Lara, the legendary cricketer from West Indies. It's 23 for the loss of 2 wicket. And here is Sunil again, right arm over the wicket. Wanted to go for the swift switch it. And missed it completely. It's going to be a from the bat of Akhilesh. 24 for the loss of 2 wicket. Over number 3 is in progress. So far it's a very tidy over from Sunil compared to the last 2 overs. 25 for the loss of 2 wicket. Again one more dotted delivery. Excellent over is in progress from Sunil. Fifth time in this over, and this time he got a bat onto that, and I think there's no need to run for that. Ball went like it is a bullet down to deep fine leg boundary for 4 runs. It's not a good line to bowl. All the efforts which is gone in vain of Sunil after bowling that line, and batsman Abhiram just got a bat onto that, reaching for the delivery, and got that one down to very fine, down to fine leg boundary for 4 runs. 29 for the loss of 2 wicket in the over number 3 is in progress. Sunil to continue. Right arm over the wicket. So a little bit of change in the field. Short fine leg fielder coming towards short third man region. Danu. The fielder down at Lakao point and deep long off. Once again it's going to be a huge wide. The Sunil is struggling after they got a very good start. 30 for the loss of 2 wicket in the over number 3 is in progress. Flicks it on off his legs down to fine leg region. This time he's got a protection there. So one more over completed. 3 gone. After completion of over number 3, Babagudda Tigers are looking in commanding position. They are 31 for the loss of 2 wicket. They're going exactly 10.33 runs per over. They're very good run rate maintained there by Babagudda Tigers. So they need to bounce back. The team Good Bulls need to bounce back like a Bulls. The Bulls, everybody knows that they're knowing for bouncing back, and wait and see how Bulls will going to bounce back here. The last over remaining, 31, which is the total score, and the similar run rate they will going to reach 40 plus runs, and team Bulls have to get one good over here. Puneet brought into attack. One more very good all-rounder for the side of Good Bulls, and wait and see how Puneet will going to restrict the runs in this last over. With the jersey number 090. Abhiram will be the striker. Short fine leg, deep square leg, mid wicket, long on, short mid on. Short backward point, Akshay, short extra cover. There's a fielder at deep cover point and long off. First ball, Drivan, beautiful looking stroke down to wideish long on. But protection is given for that cricketing stroke down at wideish long on. Just a single here. With that single scope, but moves on to 32. That brings Akhilesh into strike now. He didn't got that much of strike in the last overs. Last over, now he's back on strike. 32 for the loss of 2 wicket. Now some interesting change in the field set. Deep backward point fielder coming inside the ring. Akshay. Puneet to continue.
This time wide outside the line of off stump. And with that extra score, but moves on to 33 for the loss of 2 wicket. This time Akhilesh wanted to go for the switch it and missed it completely. Puneet again. This time again wanted to go for the big single, quick single. Oh my goodness, the throw which is hitting the thumb of Prasad. It's going to be a lot of pain because we can see that the ball which is used for the tournament, which is a very hard training ball, and definitely it's going to hurt a lot when you are hitting the single finger. That is a thumb finger is always going to be a key finger for the bat players. Ball hitting the thumb of outside the line of off stump, and going to be one more mistake there from wicketkeeper Sunil there. By call by umpire. With that extra score, moves on to 35 for the loss of 2 wicket. In the over number 4 is in progress. Last 3 balls remaining, and Akhilesh back on strike. Puneet to continue. This time, no need to run for that. He's just searching for that one. You know exactly the fielder inside the ring. So Akhilesh quite easily getting that placement by playing that twisted bat down to deep third man boundary for 4 runs. With that boundary score jumps into 39 for the loss of 2 wicket. Now after that boundary, Puneet calling that fielder from square leg to come inside and pushing that short third man fielder down to deep third man region. After the boundary, I think it's not needed in the early stage, before the boundary I think so, because the direction of the wind we can see that flowing in the offside region, so that a lot of direction which is needed in the offside region rather than the onside region. Puneet bowls. This time wanted to get that one very fine, Akhilesh, but couldn't manage to get past that square leg fielder in front of square. One more single. 40 for the loss of 2 wicket. Last 1 ball. The last delivery of their innings is coming up. Babagudda Tigers facing their last delivery. Abhiram, their lovely delivery indeed. The batsman wanted to go for the big shot. Just a single in the form of bice. That's it. 41, which is a total score of team Babagudda Tigers. They set a target of 42 to win the match for team Good Day Bulls, and wait and see how Good Day Bulls will going to bounce back. They wanted to bounce back like a Bulls. It needs to justify the name what they got in their in front of their name, that Good Day Bulls, and wait and see how Good Day Bulls will go into back in this game. 42 they needed to get in 4 overs, and the run rate required is exactly 10.50 runs per over. And well, wait and see how well they will going to get this total. We take a short break here, and after the short break, my friend Gopi will going to take over the microphone. Thank you. Thanks a lot.
Dhanyawad Satish. So the target for Good Day Bulls is exactly 42 in 4 overs. They have to score for victory with the required run rate of exactly 10.5 runs per over. With the help of 10 wickets, the equation shows for them at this situation. And the innings now going to start. और पहली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज इस वक्त तैयार दीक्षित, जबकि आरंभिक बल्लेबाज अक्षय और पुनीत। और इंतजार है इस वक्त मैच की पहली गेंद का। पहला और एकमात्र पावर प्ले ओवर उनकी पारी का यहां पर शुरू होता हुआ। 7 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर मौजूद। 7 fielders stood inside the 20-yard circle as far as the power play is concerned for the first over, first and only over. और जहां तक सवाल है इस वक्त 20 गज के दायरे के बाहर के खिलाड़ियों का, तो 2 खिलाड़ी इस वक्त 20 गज के दायरे के बाहर इस वक्त मौजूद। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग और लॉन्ग ऑफ इस वक्त तैनात। कुछ हद तक सीधा पहले गेंद ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद को इस वक्त खेलना चाहता, स्क्वायर ऑफ द विकेट ठीक तरह से खेल नहीं पाए और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। लगभग जमीन के सहारे गेंद थी और रन इस गेंद पर बल्लेबाज को नहीं मिला। 0 पर स्कोर बोर्ड रुक चुका है। एक बार फिर से गेंदबाज दीक्षित गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए और अक्षय सामना करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद इस बार this time he lost that one and this time it's gone many miles. It's a biggie. He's just hit that one too high but at last he's got the distance. खूबसूरती के साथ गेंद को उछाला था। लंगोन सीमा रेखा से बाहर और गेंद में इतना पर्याप्त दम था कि वो सीमा रेखा को पार कर सके और गेंद लंगोन सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। और बेहतरीन स्ट्रोक अक्षय के बल्ले से रखता हुआ। और पिछले मैच में अक्षय 0 पर आउट हुए थे, तो इस बार इस मैच में उन्होंने ठान लिया है कि इस वक्त एक बेहतर बल्लेबाजी यहाँ पर करनी है उन्हें, अगर उनके टीम को सही मंजिल तक पहुंचाना है। तो इस वक्त दीक्षित अगली गेंद लेकर तैयार अक्षय के लिए। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए। ये गेंद इस बार इनसाइड आउट क्रिकेट खेलना चाहा, बल्ले का बाहरी किनारा। बेहतर गेंद थी इस वक्त दीक्षित की। और जहां तक सवाल है इस वक्त रनों का, तो रन्स मिलेंगे इस वक्त 1 और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 7 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 7 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। 3 balls gone in their innings, still 3 have to come। और दीक्षित इस वक्त गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज पुनीत के लिए। फील्डिंग में जमावट कुछ हद तक इस वक्त चलती हुई और इस बीच पुनीत सामना करने के लिए तैयार। जहां तक लक्ष्य तक पहुंचने का सवाल है, 42 रनों के लंबे से लक्ष्य तक यहां पर एक बेहतर शुरुआत की जरूरत है गुड डे बुल्स के बल्लेबाजों को। और इस बीच गेंदबाज दीक्षित अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए वाइड का इशारा और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 8 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 8 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। और दीक्षित फिर से एक बार अपने गेंदबाजी के मार्ग पर तैयार। फील्डिंग में जमावट करने के बाद कुछ हद तक अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर स्विंग किया खूबसूरती के साथ, बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। He just played that one square of the wicket at the last moment, turns it around the corner and finds the gap as well between backward square leg and deep mid wicket, and the ball raises away through the fence at deep mid wicket fence for a boundary. Fantastic struck और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 12 रनों पर, 2 अंकों पर। द स्कोर बोर्ड इज नाउ मूविंग अप टू डबल फिगर्स विद दैट बाउंड्री और 12 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है बिना किसी नुकसान के। गेंद फील्डिंग में इस वक्त फिर से एक बार जमावट करते हुए मिड विकेट फील्डर को इस वक्त पीछे भेज दिया गया है। डीप मिड विकेट सीमा रेखा के पास, ठीक सीमा रेखा के पास। और गेंदबाज दीक्षित अपने ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार था। इन हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद इस बार रिवर्स शॉट इम्प्रोवाइजेशन, लेकिन बेहतर फील्डिंग गली पर गेंद को रोका गया इस वक्त फील्डर द्वारा अपनी दाईं ओर जाते हुए। और 1 रन का इजाफा और इस 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 13 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 13 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। और अंतिम गेंद लेकर इस वक्त दीक्षित गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए। अक्षय इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और 19 गेंदें बाकी और रन चाहिए 29। 29 टू गेट फ्रॉम रिमेनिंग 19 डिलीवरीज। और गेंदबाज इस वक्त तैयार। दीक्षित की गेंद अक्षय के लिए लेग स्टंप पर आते हुए ऑन साइड पर उछालना चाह, लेकिन गेंद पैर पर टकराई और लेग बाय का इशारा। 1 रन का इजाफा और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 14 रनों पर। सो fantastic start for Good Day Bulls. 14 runs they managed to score after their completion of first over, chasing the victory target of 42 in 4 overs.
Still in our overall calculation, it's going to be 28 runs more. Now they have to score for victory in remaining 18 deliveries. That means in remaining 3 overs with a required run rate of exactly 9.33 runs per over. Still they got all 10 wickets kept intact. So still some discussion going between the fielders of the fielding side. Babagood Tigers that will be bowling the next over, and after being some discussion, the ball is now taken by the bowler who will start the fresh proceedings from the commentator box end. और गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए और बाएं हाथ के बल्लेबाज अक्षय इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। पहले ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं, पावर प्ले समाप्त हो चुका है, फील्डर इस वक्त मैदान पर छा चुके हैं। और इस बीच गेंदबाज कौशिक गेंदबाजी इस वक्त प्रारंभ करते हुए 18 गेंदें बाकी, 28 रन चाहिए विजय के लिए और कड़ा संघर्ष यहाँ पर जारी है विजय के लिए इन दोनों टीमों के बीच में। और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार कौशिक का गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट। ओवर की पहली गेंद, यह गेंद इस वक्त गेंद को ड्राइव कर दिया, गेंद पहुंची इस वक्त लंगॉन पर और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा हो चुका। बिल्कुल जमीन के सहारे गेंद फेंकी थी, द बॉल केम अलोंग द ग्राउंड एट द लास्ट मोमेंट और सिर्फ 1 रन बल्लेबाज और टीम के खाते में यहाँ पर जुड़ता और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका कुल मिलाकर 15 रनों पर। दूसरे ओवर का प्रारंभ यहाँ पर हो चुका है और इस बीच अगली गेंद लेकर तैयार कौशिक का गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए पुनीत इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद रिवर्स शॉट, लेकिन गेंद सीधे गली फील्डर के हाथ में, बेहतर फील्डिंग वहां पर। थोड़ा सा भी मिसजजमेंट होता तो गेंद उनके बाईं ओर से निकल सकती थी इस वक्त, लेकिन बिल्कुल सही तरीके से अपने एक हाथ से गेंद की टर्न को भांपते हुए गेंद को इस वक्त अपने एक हाथ से फील्ड करने में सफल, चतुरता के साथ। और इस बीच 1 रन का इजाफा हो चुका, 16 रन at 16 without loss in the over number second in progress, 42 the target in 4 overs and this is the second over in progress in the innings। गेंदबाज कौशिक एक बार फिर से तैयार, इस बार अक्षय के लिए यह गेंद बेहतर गेंद थी, अंतिम अक्षर में गेंद का पीछा करना चाहता, just wanted to play that one between cover and extra cover, not succeeded और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, रन्स बल्लेबाज को नहीं मिला। और फिर से एक बार कौशिक का एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए यह गेंद उछाला इस वक्त मिड विकेट पर अक्षय और गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। He just scooped that one off the toes at the last moment. Have a look at this in the replay. देखिए किस तरीके से गेंद को इस वक्त उछाला था। He just got that one right from the middle of the bat and scooped that one off the toes with the exquisite timings. And this has gone over the fence at wideish mid-on fence for a huge one, massive one in fact. और इस छक्के के साथ the things getting easier little bit for the batting side. Scoreboard moving up to 22 now. 22 रन बन चुके हैं। So still in overall calculation, it's going to be 14 balls left and 20 runs required. 14 गेंदें बाकी, 20 रन चाहिए और एक और छक्का निश्चित रूप से यहाँ पर गुड्डे बुल्स को इस मैच में पूरी तरह वापस ला सकता है। और कौशिक का इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट, फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलती हुई और अक्षय जो कि इस वक्त 2 छक्का अब तक झड़ चुके हैं, अपनी सही रिदम लय को इस वक्त प्राप्त कर चुके हैं। एक बार फिर से सामना करने के लिए तैयार कौशिक की गेंदों का और कौशिक अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, यह गेंद इस बार स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड एंड दिस इज गॉन मच स्ट्रेटर वर्जन। 6 more consecutive sixes for Akshay and he is looking on fire। 28 the score and now things getting a lot easier now for them। 13, in fact it's a 14 to get in remaining 13 balls। 3 छक्के इस वक्त अक्षय झड़ चुके हैं, अब इक्वेशन बिल्कुल आसान होता हुआ। और इस बीच कौशिक तैयार, इस ओवर में अंतिम बार स्ट्रेट अवे द प्रेशर ऑन द बॉलर, he bowled 2 for outside the off stump at the last moment, single run conceded। 29 the score and now remaining balls and required runs are leveled now, 13 required from 13 deliveries। कौशिक इस ओवर में अंतिम बार दाहिने हाथ ओवर द राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, बाएं हाथ के बल्लेबाज अक्षय के लिए यह गेंद, दिस कुड बी द 6 number 4
And this time, yes, it does. Straight on the roof of our commentator box stand. And with this six, I must say, Good Day Bulls are now strongly back in the game. So the score is now 35. 35 रनों पर स्कोरबोर्ड पहुंच चुका है. अब बस सिर्फ 7 रन चाहिए विजय के लिए और 2 ओवर का खेल बाकी. 12 balls left, 7 runs required. And what a fantastic batting performance continuing here from Akshay. He is batting on 26, including 4 massive sixes. And in just 9 deliveries. 26 runs scored by Akshay in just 9 balls with a strike rate of almost 280 plus. अब सिर्फ 7 रन चाहिए विजय के लिए और निश्चित रूप से ऐसा कहना पड़ेगा अपने विजय की ओर अग्रसर होता हुआ यहाँ पर गुड डे बुल्स. और जहां तक सवाल है इस वक्त बाबू गुड डे टाइगर्स का, तो इस वक्त उन्हें चाहिए एक घातक गेंदबाजी इस मैच में कमबैक वापसी करने के लिए. 12 गेंदें बाकी और 7 रन चाहिए विजय के. 7 विकेट फ्रॉम 12 balls. सुनील इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और गेंदबाज विल्सन गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए. डॉट गेंदों की सख्त दरकार बाबू गुड्डा टाइगर्स के गेंदबाजों को इस मैच में वापस आने के लिए. पहली गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा, शॉट फाइन लेग पर रन्स नहीं मिलेगा. डॉट गेंद और स्कोर इस वक्त रुक चुका है कुल मिलाकर 35 रनों पर बिना किसी नुकसान के. सो दिस ओपनिंग पार्टनरशिप इज नाउ बिल्डिंग अप फॉर गुड डे बुल्स. और निश्चित रूप से यहाँ पर एक बेहतरीन आरंभिक साझेदारी इस वक्त जमती हुई. इस बार दिस टाइम इट्स फ्रॉम सुनील. इट्स गॉन ओवर द फेंस फॉर अ मैसिव वन. And with this 6, the scores are now leveled. Just a single run required. और तीसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर और निश्चित रूप से यहाँ पर ऐसा कहना पड़ेगा छक्कों की बौछार लगाते हुए ये दोनों बल्लेबाज यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 रन की इस वक्त जरूरत है और सिर्फ औपचारिकताएं ही अब इस मैच में बाकी रह गई हैं. यह गेंद शॉर्ट फाइन लेग पर रन्स नहीं मिलेगा और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 41 रनों पर. द स्कोर्स आर नाउ लेवल 41 विदाउट लॉस. थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस और विल्सन एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट तैयार. Again swings and just he finished the match in a style with a 6. So comprehensive victory by 10 wickets for Good Day Bulls against Babu Good Day Tigers and with that comprehensive victory of 10 wickets they back the complete points. So fantastic match ended and this is it's going to be a purely one-sided match in the favor of Good Day Bulls came to an end. So man of the match, undoubtedly, the man of the match award goes to Akshay, who scored 26 runs, unbeaten in just 9 balls, including with a strike rate of 280 plus, and with this brilliant knock of 26 runs, unbeaten, including 4 massive sixes with a strike rate of 280 plus. Akshay of Good Day Bulls, adjudged man of the match. I request Akshay of Good Day Bulls, please come on to the stage and receive the man of the match award from the organizers. So match number 8 of this tournament has been came to an end and match number 9 is now going to start within just a short while. And till then we are taking a short break and we'll be back right after the short break. एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने अंग्रेजी में सतीश के साथ उपस्थित होंगे जब अगले मैच की शुरुआत यहाँ पर होगी. तो अब वक्त है एक ब्रेक का. नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक. थैंक यू, धन्यवाद. ಅಲ್ಲೇ ಅತ್ತಾವರ ಟೈಗರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ವೀರ ಮಾರುತಿ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಈಗಾಗಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಅಕ್ಷಯ್ ಇವರಿಗೆ ಧನುಷ್ ಇವರು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. So thank you very much and welcome back for the match number 8 of the day number 1 of this prestigious cricket tournament, Attavara Premier League 2024 Season 5. And now it's a battle between Veera Maruti versus Attavara Tigers. And Veera Maruti, they won their 2 matches out of 2 in their league stage matches. And Attavara Tigers, they won 1 and lost 1. This is a match number 9, in fact. Driven nicely, and nice looking drive there from Akhilesh, correction, Avinash to pick that his first run. A confident looking drive towards a long off for a single. With that single, they opened their account, 1 without loss of any wicket. Dhanush is the man of the match in the previous match. He's a man of the match in the 2 matches. He's become a man of the match. So this time, opportunity of run out. What we are talking about, the man of the match in the 2 matches is back into pavilion in the form of run out. Just they tried to clinch that single,
The fielder has done a great job. The fielder, in the sense, bowler himself, picks the ball and turns back quickly and hits the stumps. Is always going to be difficult to survive. When there was a direct hit, the batsman always struggling. And this time umpire Roland Pinto, in a naked eye, is just signaled it's out. The batsman is well short of his crease. It's 1 for 1. And it's not a good start here for Veera Maruti in their third match. And new batter coming to the middle, Deepak, with the jersey number. Non-striker to field that one. And no runs scored. Very tidy bowling performance here from Tigers so far. 4th time in this over. Shreyas continues. Pass umpire Suresh Mudabidri. Right, I'm over the wicket. Little bit short pitch delivery. And this time opportunity. This is not a good end to throw. Opportunity is created for the run out in the non-striker's end. But fielder at short mid wicket tried to make a run out in the striker's end. So that Atul just survives from the run out. And the scoreboard now moves on to 3 for the loss of 3 wickets. 3 for the loss of 3 wickets. Competition between run and the wicket. And Shreyas will going to continue to Madhu. Madhu lofted at one. The fielder is a little bit in a long off, but he couldn't manage to get there and went into the deep long off boundary for 4 runs. Absolutely fantastic placement there for Madhu. The lovely shot, nothing wrong with the line of the delivery, but Madhu exactly knows that there is a long off and extra cover. He just finds the gap between that, and ball went into wideish long off boundary for 4 runs. Good placement. And a very important boundary for Veera Maruti. Scoreboard now moves on to 7. This time again plays it in the air, but safely down to deep long off region. Just for a single. 1 more over completed. Productive over for Veera Maruti. After completion of over number 2, searching for the right track, but still a little bit struggling Veera Maruti. It's 8 for the loss of 3 wicket and some kind of comeback in this over, because Madhu has got 1 boundary in that over. It's 8 for the loss of 2 wicket. They're going exactly 4 runs per over. 2 overs remaining.
Dhanush from the Attavara strikers end, and Madhu will going to take the strike. Top edge, opportunity created for the catch, but ball will going to land it safely. The fielder at long off couldn't manage to reach that catch. He's just already given up, and one run scored. Lucky escape here for Madhu. Not really controlled that stroke, lofted stroke. Scored numbers on to 9 for the loss of 3 wicket. Right arm over the wicket, balls to Atul. Atul this time couldn't manage to get the timing behind the stroke where he wanted to dispatch that one on to deep dog on. Mistimed that one, and bowler Dhanush on his follow through fields the ball back to his bowling mark. Time is exactly 4:15 in the evening. You're watching match number 9. This time loose delivery lofted high in there, and that will going to travel out of the park, out of the boundary line. Catch which is taken by Sachin, but out of the boundary line, a different fielder. It's not a fielder from a fielding side. And 3 balls completed, and there one ball, of course the ball which is landed safely to the hands of Sachin, and outside the line of off-stump going to be one more dotted. A very good comeback here by Dhanush. So Atul just breaking the shackle with that 6 for his team. 15 for the loss of 3 wicket. The partnership slowly building up between Madhu and Atul. Dhanush balls, driven that one straight to the answer fielder, fumble from the fielder, and both the batters grabs the opportunity to complete the single, and scoreboard numbers on to 16 on the board for the loss of 3 wicket. Over number 3 is in progress. Madhu back on strike. Dhanush. This time Madhu lofted. The fielder there in the cow point region will going to complete the catch. That's the end of the innings of Madhu. The partnership is just broken. Didn't quite getting hold of that one properly, and it's not a sweet part of the bat. He's tried to hit over the deep long on, but mistimed that one. He contributed very well because one stage he coming to the middle is not a good position. They lost 3 wickets for just 3 runs. Then both the batters added another 14 runs, 13 runs, and taken the total score into 16 for the loss of 4 wickets. Pachu is a new batter in. 3 overs which is completed. Not a good score, just 5.33 runs per over, the run rate progressing for Veera Maruti. Dion. After Nelson, Wilson, now it's going to be Dion. Bowling away from us, right arm over the wicket. Down lofted, what a shot. That will go into the maximum. Atul will going to clear the boundary line. Yes, he does. Even though he played that one against the direction of the wind, just I want to see it in that replay. What really happened in the deep long on? Will it go into opportunities for that fielder to take the catch? That was a clean connection. Played it very high in the air. And ball which is landed. Oh, just over that fielder's trying hands down at deep long on. This time straight to the hands of cow point fielder. He making no mistake at all. It's 23 for the loss of 4 wicket. Good innings of Atul also comes to an end. 22 little correction for the loss of 5 wicket. And Atul, after hitting 2 sixes, is back into pavilion. Scored a valuable 14 runs from his bat. The new batter in is Sudhir. Walks to the middle, but only 4 deliveries left in their innings. Dion, very good comeback after that 6. Is back in the game with the wicket, but job which is not at over. 4 balls remaining in this over. Dion to continue from the commentary box end. Right arm over the wicket balls. This time nicely driven, a single-handed stroke right in the gap, down to deep square leg boundary for 4 runs. Places right between behind the square and the mid wicket, huge gap. And before the fielder from deep mid wicket will run across to field that one, they completed that ball which is completed their journey. And
went into the boundary, very important boundary. So runs are coming in this last over. 6 and a 4, 26 on the board now. Dion. Ball is opportunities created for the caught behind the wicket. The fielder will want to get that one. Wicket keeper and the short fine leg fielder, ball landed between that two fielders. And last two deliveries left in their innings. And Pachu will be the striker. Dion got outside the edge of the bat and will going to travel. Not quickly. Good piece of fielding there by the fielder, but not good enough to stop that couple of runs. Very, very important runs coming in this last over. 6, the boundary, 1 and 2. Altogether 13 runs came from that over in 5 deliveries. 29 on the board. Last ball will go into commence from the commentary box, and Dion to Pachu. Coming around the track, using his feet, got inside edge of the bat. Just a single. That's it. They finished their innings with 30 runs. They scored 30 valuable runs. It's a good recovery actually. At one stage they are struggling to get the runs on the board. But I think the last over certainly one of the most productive over for the team. Veera Maruti, they got some runs in this last over. 14 runs coming from that over. And they set a target of 31 to win the match. Just under 9 runs per over. 8.75 runs per over. The required run rate for the team. For team Attavara strikers, and wait and see how well Attavara Tigers will going to get this total. Meanwhile, the next match will be played between Babugudda Tigers versus Attavara strikers. So that I request all the players, please report to the commentary box immediately to sign the official chart. Attavara Tigers ಮತ್ತು ಬಾಬುಗಡ್ಡ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು, ಅತ್ತಾವರ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಾಬುಗುಡ್ಡೆ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ದಯಮಾಡಿ ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು. So that will go into the match number 10 after this, and now wait and see how well both the teams, because Attavara Tigers they lost 1 matches out of 2. They certainly wanted to win this match. At the same time, Veera Maruti also, they wanted to continue their winning track in this match as well. So time for changing committee box is over to so heartily welcome for one of our chief guests for this prestigious cricket tournament, Tilak Guru of Young Friends Durga, and we are warm welcome for Tilak Guru. ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಿಲಕ್ ಗುರು ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ ಇವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಫಾರ್ ತಿಲಕ್ ಗುರು ಆಫ್ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಅಥವರ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 5. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಧನ್ಯವಾದ ಸತೀಶ್. So the target is 31 for
Attavara Tigers, their openers Shreyas and Dhanush are the crease. Meantime, the bowler is also a Dhanush. And the first ball of the innings is now coming up. पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त धनुष तैयार और श्रेयस इस वक्त सामना करते हुए पहली गेंद bowled out. Just wanted to play the reverse shot and he just got the rid of the batsman. So this is an absolutely disaster start for Dhanush. Reverse shot खेलना चाहता, perfect off cutter गेंद थी, एक्स्ट्रा क्विकर डिविएट होकर अंदर की ओर आते हुए और गेंद बल्ले को वंचित करते हुए सीधे मिडल ऑफ स्टंप को बिखेर कर ले जाते हुए और बिल्स डिस्टर्ब होते हुए। तो पहली गेंद पर यह विकेट यहां पर गिर चुका है और यहां पर धनुष आउट होकर पेविलियन, माफ कीजिए श्रेयस आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए धनुष की गेंद पर और शून्य पर पहला विकेट हो चुका है। श्रेयस इज आउट फॉर अ गोल्डन डक and the first wicket lost in the very first delivery of their innings for Attavara Tigers. It's not for one in the first over. Sushant, the number 3 batsman, is now comes out to the middle. और ऐसा कहना पड़ेगा अगर 29 रनों के लक्ष्य के अंदर अत्तावारा टाइगर्स के बल्लेबाजों को रोक कर रखना है तो निस्संदेह यहाँ पर राइट फ्रॉम द फर्स्ट डिलीवरी एक घातक का गेंदबाजी करने की वीरा मारुति के गेंदबाजों को और उस घातक गेंदबाजी की तलाश में इस वक्त पहली गेंद पर अपना विकेट प्राप्त कर चुके हैं यहाँ पर गेंदबाज धनुष। एक बेहतरीन ऑफ कटर गेंद के जरिए श्रेयस का और इस बीच नए बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद सुशांत इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट इस वक्त चलते हुए और धनुष इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए यह गेंद लेग स्टंप पर आते हुए गेंद को इस वक्त ऑन साइड पर उछालना चाहता, चूंकि वाइड का इशारा और वाइड के रन के साथ रनों का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है। एक रन एक विकेट के नुकसान पर, जबकि पहला ओवर इस वक्त प्रारंभ हो चुका है और धनुष इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। ये गेंद बेहतर गेंद थी, फुल टॉस के तौर पर आते हुए लो फुल टॉस गेंद थी। गेंद को इस वक्त खेल दिया रक्षात्मक तरीके से मिड ऑफ पर, रन से स्पीच बल्लेबाज को नहीं मिला तो स्कोर रुक चुका है इस वक्त एक रन एक विकेट के नुकसान पर। धनुष फिर से एक बार गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार ऑफ कटर गेंद को इस वक्त स्कूप किया इस वक्त जस्ट ओवर द बॉलर सेट डाउन टू मिड ऑफ। In fact, he's got a single for that stroke और एक रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 2 रनों पर एक विकेट के नुकसान पर, जबकि पहला ओवर इस वक्त प्रगति पर और धनुष फिर से एक बार गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलते हुए और धनुष अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट ये गेंद इस बार गेंद को स्क्वायर ऑफ द विकेट खेल दिया है एक्स्ट्रा कवर पर एनफील्ड क्लियर करते हुए और गेंद इस वक्त डीप कवर पॉइंट सीमा रेखा की ओर बढ़ती हुई काफी लंबा दौड़ लगाने के बाद डीप कवर सीमा रेखा के अंदर जब तक गेंद को रोक कर थ्रो करे बल्लेबाज के पास मौका था 3 रन प्राप्त करने का। खूबसूरती के साथ स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को इस वक्त स्कूप कर दिया था, उछाल दिया था 3 रन के लिए स्क्वायर ऑफ द विकेट और इन 3 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 5 रनों पर एक विकेट के नुकसान पर। 5 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। और फिर से एक बार गेंदबाजी गेंद ऑन साइड पर खूबसूरती के साथ निकाला इस वक्त डीप मिड विकेट सीमा रेखा जब बाहर 4 रनों के लिए। Fantastic strike this time, just turns it up at the last moment and finds the gap very well between backward square leg and a deep mid wicket and he's just taking the advantage of the power play and he succeeded in this occasion once again and the scoreboard is now moving up to 9 for the loss of 1 wicket। 9 रन बन चुके पहले ओवर की प्रगति पर। धनुष इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो ओवर द विकेट लेग स्टंप पर आते हुए शफल होते हुए गेंद को साइड पर उछालना चाहा, चूंकि गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। पहले ओवर की समाप्ति 9 रन बन चुके हैं यहाँ पर और जहां तक सवाल है इस वक्त बचे हुए रन का तो 22 रनों की और जरूरत है इस वक्त विजय के लिए, जबकि गेंदें बाकी हैं 18। 18 balls left and 22 runs required in remaining 18 deliveries with the help of 9 wickets. This is the match number 9 of this prestigious cricket tournament, APL Attavara Premier League Season 5 2024 is now progressing here, which proudly presented by Sri Durga Friends and this tournament is now progressing along nicely. तो इस वक्त हमसे दूर वाले छोर से नया ओवर शुरू करते हुए गेंदबाज अविनाश जो कि इस वक्त गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए
दाहिने हाथ ओवर द विकेट। पहले ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध यहाँ पर हट चुके हैं। पावर प्ले समाप्त हो चुका और फील्डर इस वक्त मैदान पर चाहते हैं। मिड ऑफ थोड़ा सा स्ट्रेटर तैनात, मिड ऑफ थोड़ा सा वाइडर, मिड विकेट इस वक्त मौजूद, गली और स्क्वायर लेग इस वक्त मौजूद ठीक सीमा, ठीक 20 गज के दायरे के अंदर। विकेट कीपर बिल्कुल स्टंप्स के अति निकट इस वक्त बैठे हुए और ओवर की पहली गेंद लेकर अविनाश। यह गेंद ऑफ कटर गेंद ड्राइव कर दिया बैक टू द बॉलर की दिशा में। खेला तो जरूर था लेकिन ठीक तरह से जगह नहीं बना पाए और गेंद को वहां पर फील्ड कर लिया गया। फील्डर द्वारा गेंदबाज द्वारा स्वयं फॉलो थ्रू में रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। अविनाश फिर से एक बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए यह गेंद इस बार कट करना चाहा बैकफुट पर जाने के बाद, चूंकि गेंद का पीछा करना चाहा था लेकिन गेंद कुछ ज्यादा उछाल लेते हुए अंतिम क्षण में बल्ले को वंचित करने के बाद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला और फिर से एक बार अविनाश गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट तैयार। यह इस बार गेंद को स्कूप कर दिया खूबसूरती के साथ। 2 रन बल्लेबाज को मिलेगा। एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा के अंदर जब तक गेंद को फील्ड किया जाता 2 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका। इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 2 अंकों पर, यानी 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर और कुल मिलाकर रन चाहिए और 20, जबकि गेंदें बाकी हैं 15। और अविनाश फिर से एक बार गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद उछाला इनटू द गैप एज वेल और गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। खूबसूरती के साथ गेंद को स्कूप किया था लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग एक्स्ट्रा कवर के दरमियान और खाली क्षेत्र चुनते हुए और गेंद इस वक्त गैप पर जा चुकी है। वाइड लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। तो इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 15 रनों पर। 15 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट एंड 17 more runs required. इस बार गेंद को खेल दिया एक्स्ट्रा कवर पर। 16 for the loss of 1 wicket now. Still a ball left in this over. और इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाज की गेंद उछाला लॉन्ग ऑन पर, जी नहीं, फील्डर नहीं पहुंच पाएंगे। आफ्टर 1 बॉल्स कलेक्टेड बाय द फील्डर। 17 for 1, 2 overs completed. ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಜುಗಾರಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಇದರ ಮಾಲಕರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಪಮ್ಮಿ ಕೋಡಿ ಅಲ್ಬೈಲ್ ಇವರಿಗಾಗಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ APL ಅತ್ತಾವರ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸಂಘಟಕರ ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ತಿಲಕ್ ಗುರು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನಾವು ಸಂಘಟಕರು ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಮಗಿದು ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್. ಹರ್ಟ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಬೋತ್ ಆಫ್ ಯು ಸರ್. So 15 to get and 12 balls remaining. Still the match is now in balance. Prithvi starts a fresh proceedings. 14 to get in fact in remaining 12 balls. Prithvi पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ अराउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, बाएं हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए पहली गेंद खूबसूरती के साथ गेंद को खेल दिया ऑफ द बैक फुट, गेंद को पंच किया था स्क्वायर ऑफ द विकेट 1 रन के लिए और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 18 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर. 18 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट. 13 रिक्वायर्ड, 11 बॉल्स रिमाइनिंग. पृथ्वी अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार. यह गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई वाइड का इशारा और वाइड के रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 19 रनों पर. 12 गेंदे बाकी, 12 रन चाहिए, 11 गेंदे बाकी. 12 टू गेट फ्रॉम रिमाइनिंग 11 बॉल्स. पृथ्वी फिर से एक बार तैयार. यह गेंद बेहतर गेंद, फैंटास्टिक डिलीवरी, लेकिन विकेट कीपर गेंद को ठीक तरह से कलेक्ट नहीं कर पाए और इस बीच बाई के रूप में 1 रन उनके खाते में जुड़ चुका है. 20 रन बन चुके हैं. 20 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट. 10 बॉल्स रिमाइनिंग, 11 रन नीडेड और पृथ्वी इस बीच तैयार. रिवर्स शॉट, गेंद को खेला, नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपरली इन फैक्ट, बट ही गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 21 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर. रन सिंगल्स के रूप में जरूर बन रहा है, लेकिन खुशी की बात यह है इस वक्त अत्तावरा टाइगर्स के लिए रन इस वक्त बन रहे हैं और पृथ्वी
फिर से एक बार तैयार, बाएं हाथ ओवर द विकेट, बेहतर फैंटास्टिक डिलीवरी फ्रॉम द बॉलर, डॉट डिलीवरी. नाउ 10 रिक्वायर्ड इन रिमाइनिंग 8 बॉल्स. तो इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ ओवर द विकेट. ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा, गेंद पहुंची शॉर्ट स्क्वायर लेग पर, नॉट मोर देन अ सिंगल leg by, and with that leg by run the scoreboard moving up to 22 for the loss of 1 wicket in the over number 3 in progress. Still a ball left in this over. एक बेहतर ओवर अब तक साबित हो चुका है पृथ्वी का, अपनी ओवर की अंतिम गेंद लेकर इस वक्त तैयार. ये गेंद ऑन साइड पर स्विंग किया खूबसूरती के साथ 4 रनों के लिए. बेहतरीन स्ट्रोक, सफल होते हुए गेंद को ऑन साइड पर उछाल दिया था इस वक्त, और गेंद शायद गेंद इस वक्त टिप्पा सीमा रेखा के अंदर टिप्पा खा चुके. दोनों अंपायर इस वक्त बातचीत करते हुए कि क्या ये चौका या छक्का देखना पड़ेगा, और इस बीच बातचीत जारी है यहाँ पर. और ओवर की समाप्ति यहाँ पर हो चुकी है. 3 overs completed and it's a boundary declared by umpire. 26 now for the loss of 1 wicket. 3 overs had been bowled, 5 required from last over. So last over starts and 5 runs required from last over. और गेंदबाज भगवान गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ राउंड द विकेट, इस बार ऑन साइड पर गेंद को मुड़ना चाहा, विकेट कीपर चूके निशाना ओवर थ्रो, और बाई का इशारा, और एक की जगह रन से यहां पर मिले 3 runs added. In fact, they're looking for the 4th, but they won't get it. So funny things is going on there at the middle of the pitch. 3 runs scored because of short third man fielder's mistake. 3 runs scored. और इन 3 रनों के साथ अब सिर्फ 2 रन चाहिए और गेंदे बाकी है 5. 5 balls left, 2 runs required. और लक्ष्य इस वक्त आसान होता हुआ इस वक्त अत्तावरा टाइगर्स के लिए, और गेंदबाज भगवान इस वक्त तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अगली गेंद लेकर. दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए फ्लाइट ड्राइव कर दिया, एक्स्ट्रा कवर पर रन के लिए दौड़ पड़े, नजदीकी मामला लेकिन निशाना चूका, और इस 1 रन के साथ द स्कोर्स आर नाउ लेवल्ड. नाउ 1 रिक्वायर्ड ऑफ 4 डिलीवरीज, 4 balls and 1 run. और भगवान इस वक्त तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए. दाहिने हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद पुश किया हल्के से, सेंसिबल क्रिकेट फॉलो थ्रू में, लेकिन गेंद को फील्ड करने में सफल फॉलो थ्रू में गेंदबाज. और इसी के साथ अत्तावरा टाइगर्स रजिस्टर्ड a victory in the last over against Veera Maruti, and with that victory Attavara Tigers back the complete points. So match number 9 of the day number 1 of this prestigious cricket tournament, Attavara Premier League Season 5 2024 has been came to an end, and now the match number 10 of this tournament is now going to start within just short while. So man of the match award goes to Sushant of Attavara Tigers, who scored 13 unbeaten runs including 2 boundaries and bowled economically, conceded just 1 run in his 1 over, and because of that he adjudged the man of the match. I request Sushant of Attavara Tigers, please come on to the stage and receive the man of the match award from the organizers. So the match number 9 has been came to an end, and match number 10 is now going to start with just short while.
टिल देन वी आर टेकिंग शॉर्ट ब्रेक और एक छोटे से ब्रेक के बाद अंग्रेजी में सतीश के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे जब मैच नंबर 10 यानी अगले मैच की शुरुआत यहाँ पर होगी। तो अब वक्त है एक ब्रेक का। धन्यवाद, थैंक यू। So Sushant receiving the man of the match from one of our experienced umpire, Mr. Nazir Bajal, distributing the man of the match award for Sushant because of his brilliant batting knock of 13 unbeaten runs. So congratulations for him and best of luck for the rest of the matches of the tournament. I request opening batters please go for bat immediately. ದಯಮಾಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅಂಪೈರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಟೀಮ್ನ ಫೀಲ್ಡರ್ಸ್ ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಗ್ರೌಂಡ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಂಟರ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ಸೊ ಬಾಬುಗಢ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಆನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಫ್ Attavara ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್. The opening batters Wilson and Akhilesh. And just I surprised while seeing his jersey in the behind the jersey number 31, and that's Key, K-E-Y. I don't know what the logic which is behind this key. Maybe the Akhilesh, that K-E-I maybe makes that key for Akhilesh in his jersey, the name which is given. And here is the first ball from the commentary box end. Wilson going to take the strike. What a shot! Beautifully played that one. No need to run for that. One bounce into the fence for 4 runs. The absolutely terrific cricketing stroke came from the bat of Wilson. Nothing much wrong with the line of the delivery, but he's very confident even the ball is on the midland leg stump. Exactly the kind of stroke which is required in this power play. And Wilson knows that this is a power play. No one there in the deep. And not really having ample face in the bowling. And he didn't got adequate field for that, and Ram is got a punishment in the first ball. Good start there from Wilson, 4 without loss of 1 wicket.
Total misadvantage. I don't know why the Wilson is missing that one. Even though it's going to be wide, you need to try to get your bat into that ball because it is a power play over. You can get at least a boundary for that if you are going to make a contact with the bat. Lofted just to get over the infield. The mid outfielder going back. I don't think Sandeep is not going to get there. Ball running down to deep, wide-ish, long off boundary for 4 runs. A nice looking drive there from Wilson. Wit is offered there by Ram. Not really keeping the fielder in the long off. Pays the penalty for that. He brought one fielder in the mid wicket and one fielder down to long off. After that boundary, that long off fielder which is came inside the ring. And now again that square leg fielder is coming inside the ring. And now again Wilson seeing that gap. Will it going to be one boundary there in the mid wicket or a square leg? 8 on the board. Ram will go into ball third time in this over, fourth time in this over. Right arm over the wicket to Wilson. There's a Wilson across the line. Now going for the run and a quick run completed by both the batters. Akhilesh is the man. He's running towards the dangerous end. And ball went straight to the hands of fielder at square leg, but because of that, Akhilesh who starts the run quickly from the non-striker's end, he completes the single, then scored numbers on 9 on the board. Again wanted to go for the reverse sweep. Oh, misunderstanding. Wilson absolutely unfortunate in that occasion. Without giving any strong call for his partner. Just going for the run and pays the penalty for that. And again Wilson, disappointment finish for him. He's got a good start with the 2 boundary. And the misjudgment of a run will going to cost a huge wicket. And the team which is lost their wicket number. The first Babu Good Tigers lost their first wicket. It's 9 for the loss of 1 wicket. So Akhilesh has played a very good innings in the previous match for this team. After this match number 11 will be played between the catch. It is a call and ball will going to land it safely to the hands, and both opening batters are back into pavilion. And Akhilesh not really impressed with himself. Why he's just choosing that stroke, and of course nothing wrong with that stroke, but the timing is not proper in that occasion. Just try to get over that reverse deep long off because of the direction of the wind will going to help that stroke to get the distance. Because of that mistiming, ball went straight to the hands of the fielder. Long off fielder completes the catch. It's 9 for the loss of 2 wickets. First over completed. Both the teams has got a good start. 9 runs for Babu Good Tigers. At the same time 2 wickets for the team Attavara Strikers. I would like to call upon 2 teams captain of Attavara Tigers as well as Vaidyanath Warriors. Please be reported for the signatures for the next match. The match number 11 to be played after this match. Sachin brought into attack, ball to ball the second over of the innings of team Babu Good Tigers. 2 new batters out there in the middle, 2 fresh legs, Abhiram as well as Ashok. Abhiram will be the striker. Sachin will be the bowler. Second over. Left arm round the wicket. Nicely flicks it off his legs down to deep fine leg region. They're looking for the second. Lovely placement. And even they're looking for the third as well. But they're going against that third. And just a couple of runs here for Abhiram. And the scoreboard now moves on to 11 for the loss of 2 wickets in the over number second is in progress. Out of 2 matches, team Attavara Strikers, they won 1, they lost 1. At the same time, team Babu Good Tigers, out of 3 matches, they won 2 and they lost 1.
Sachin bowls lovely delivery, good line, strong line coming into the batter in the occasion. Leckerter, but incoming delivery for the right-hand batsman Abhiram. Didn't quite got that one from the middle of the bat, but good enough for him to get the single down to short mid-wicket. 12 for the loss of 2 wicket. Sachin going for off drive, but ball is far outside the line of off stump, and umpire rightly so no hesitation to call that wide. With that wide, scoreboard numbers on to 13 for the loss of 2 wicket in the over. Number second is in progress. This is an appeal for leg before wicket. Umpire says it's from the bat. The ball is just having a little bit bat in the last moment. Otherwise, it is going to be a very close call for the leg before wicket. It's 14 for the loss of 2 wicket in the over. Number second is in progress. Slowly and steadily, Ashoka and Abhiram must try to build some partnership for the team Babugudda Tigers. Lofted, but no power. Straight to the hands of long off. Ashir and Abhiram couldn't manage to get their power behind the stroke. Just to get that one without any power. Just got a little bit timing. And if you could put one little bit power in that stroke, ball suddenly will going to travel out of that fielder, out of the reach of that fielder. Longer fielder comfortably held that catch. It's 14 for the loss of 3 wicket. Slowly, Attavara strikers are tightening the screws here by kicking some wickets. (14) for the loss of 3 wicket. Kishan is a new batter in with the jersey number 4444. So Sachin to continue. Successful bowler. Oh, there's time flum. Absolutely flum. No way to get away from that signal from the umpire. And that is absolutely flum in front of wicket. Ball pitched in a line coming into the batter. And first ball going for the expansive drive. And Kishan pays the penalty for that. Didn't got that one from the bat. And you miss high hit. Ball right in front of middle stump, and the back leg is also right in front of middle stump. It's 14 for the loss of 4 wicket. Team Babugudda Tigers are looking in trouble. One more single there. With that single, scoreboard moves on to 15 for the loss of 4 wicket in the over number second, which is comes to an end. Good over, and very good over ball there by Sachin. Very tidy over, 2 wickets in that over. 6 runs conceded, and the kind of over which is required for Attavara strikers, and the same thing which happened in this previous over. The new bowler brought into attack. Kiran and a pity will go into ball that third over. Latish is on strike and Ashok is in non-striker's end, and Kiran will go into continue from the commentary box end. Third over. Lofted down to deep long off, but just for a single. The Vijay single scored more than 16 on the board for the loss of 4 wicket in the over. Number 3 is in progress. Deep square leg mid wicket. Long off is there, long on is there. And deep cow point, the 5 fielders outside the circle saving the boundaries. Backward point and mid off inside the ring.
Again, nicely placed that one. Ashok down to mid-on region with the single scoreboard numbers on to 17 for the loss of 4 wicket. And good line from Kiran so far. The 2 deliveries around the midland off stump. Latish is on strike. Kiran away from us. Will pass a big wide. Very good collection there from wicketkeeper Sanjay. One of the very good wicketkeeper batters diving to his right. Very good collection behind the stump. 18 for the loss of 4 wicket. In the over number 3 is in progress. Kiran Bose driven nicely down to square of the wicket. Fumble from the fielder. They're going to grab the opportunity. Come back for the second, but it's not good enough. Good return coming from the fielder from the deep. Even though slight a bit of fumble from the fielder, but recovered very quickly to return the ball to the hands of the bowler. And bowler completes the formalities. That time Ashok is finding himself short of his crease. It's 19 for the loss of 5 wicket. Good comeback here by the bowlers after that. First over was expensive. 2 boundaries came from that over. Once the wicket of Wilson as well as Akhilesh is back into pavilion. The team Attavara strikers are really back in the game with some wicket taking and some good piece of bowling. Brijesh is the new batter in. Going to be a this time both the batters are in the same end. The white call by umpire. It's not a good thinking from the striker's point of view. He is not really seeing his partner, but he's just going, just seeing back. And this is not a good to see because it's always going to be a non-striker's call. You need to respond for that because he is not running towards the danger end. The 1 more wicket is back into pavilion. Wide called, so 1 run added to total. 24 the loss of 6 wicket. Disappointment finish here for Brijesh without facing a single delivery. Is back into pavilion. Sometime we are facing first delivery and getting out. We call this a golden duck. Will it going to be a diamond duck without facing a delivery? Of course, some names which is given for ducks. We're coming back to that afterwards. Again, I wanted to go for the flick set one and no run scored. Good bowling performance. Kiran so far is enjoying his bowling. Absolutely perfect. Lofted. The fielder won't get there, but the ball is played right in the gap between long off and extra cover. And before the fielder from long off come across his left to field the ball, ample time for the batter to complete that valuable couple of runs. With that couple of runs, covered numbers on to 22 for the loss of 6 wicket. Again, upishly played and wicketkeeper behind the stump. The safest fair in the behind the stump. Sanjay completes the catch. It's a 22 for the loss of 7 wicket. Absolutely disaster for the team. The wickets are tumbling here of team. Babaguda Tigers are looking in deep trouble.
Last over remaining. Charan will go into ball that last over. Kaushik is a batter, wanted to go for the big shot. Short pitch delivery, but he just wanted to get that one onto mid-wicket region. Missed it completely. No runs scored. 5 balls remaining in the innings of Babagudda Tigers. Charan balls right arm over. This time top edge. Ball is in there. Fielder will go in. Oh, he drops the catch. Mid-wicket fielder quite hardly managed to come under the ball. But of course he came under the ball, but couldn't manage to convert that into catch. Ball just slipped out of his hand. It's 23 for the loss of 7 wicket. This time Flum in front of wicket, and no doubt at all. The Dikshit is just trying to get that one against the line, across the line. Pays the penalty for that. Charan strikes. 23 for the loss of 8 wicket. So far no team which has got all out in this day number 1. But here is team Babagudda Tigers as the danger of their getting bowled out. 3 balls remaining, 8 wickets gone. The new batter, just number 28, Neetu came into the strike. So far the great over is in progress there from Charan. 3 balls, just 1 run and picked up a wicket. This time wanted to go for the reverse sweep. They will go to complete the single in the form of inside edge of the bat. One more single. 24, 2 balls remaining. Kaushik, can he able to get one big shot here? Charan. This time top edge, opportunity for the catch. Good catch taken at extra cover. Excellent catch. The very good running catch taken there by the fielder there. It's not so easy sometimes. The very good running catch taken there by the fielder in the end. And have a look at that one. Ball well looks like will go into landed in front of the fielder, but fielder almost getting the position quickly from mid-off to extra cover to complete that catch. 9th wicket back into pavilion. Last ball remaining and last wicket remaining. Can Attavara strikers will go into bundle out. Just number 19, Sonu is on strike. Charan already picked up 2 wickets in the 5 deliveries. Last delivery, driven down to cover point. Will they come back for the second? No. That's it. They completed their innings with the 25 runs by losing 9 wickets and set a target of 26 for Babagudda, for team Attavara strikers. A very disciplined bowling performance there by Attavara strikers in this match. Bowled well, restricting their opposition for 25, picked up 9 wickets. And wait and see how well the team Attavara strikers will going to get this total, and wait and see how well the team Babagudda Tigers will going to restrict the runs. We'll take a short break, and after a short break, my friend Gopi will going to take over the microphone in our national language Hindi. Thank you. Meanwhile, I request Team Attavara Tigers as well as Vaidyanath Warriors, please come to that registration counter to sign the official chart.
ದಯಮಾಡಿ ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಅತ್ತಾವರ ಟೈಗರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯನಾಥ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು. धन्यवाद सतीश. So 26 the target. First ball, lofted that one into the gap as well. और गेंद को जब तक फील्ड किया जाता डीप मिड विकेट पर बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का. ऑफ द टॉस खूबसूरती के साथ गेंद को इस वक्त स्कूप कर दिया था संदीप ने जो बल्लेबाज थे और 2 रन प्राप्त करने में सफल. 26 रनों का लक्ष्य बाबू टाइगर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 25 रन बनाए. 26 रनों का लक्ष्य अत्तावरा स्ट्राइकर्स के सामने उन्होंने रखा है और पहली गेंद पर 2 रन बन चुके. अगली गेंद विल्सन की रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, विकेट कीपर चूके शॉट फाइन लेग फील्डर के हाथों में गेंद. रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला. स्कोर इस वक्त रुक चुका है कुल मिलाकर 2 रनों पर बिना किसी नुकसान के. और फिर से एक बार गेंदबाज विल्सन न गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार. इस बार लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई और शॉर्ट स्कोर लेग पर गेंद जब तक फील्ड हो. 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है. इट्स ऑफ द बैट और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 3 रनों पर बिना किसी नुकसान के. जबकि पहला ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर. विल्सन फिर से एक बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट. यह गेंद इस बार फैंटास्टिक डिलीवरी, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक डिलीवरी, गेट सम एक्स्ट्रा बाउंस और गेंद को ऑन साइड पर मोड़ना चाहता चूके और शॉर्ट थर्ड पर गेंद को फील्ड कर लिया गया. रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला. स्कोर रुक चुका है इस वक्त 3 रनों पर बिना किसी नुकसान के. और अगले गेंद लेग स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 4 रनों पर बिना किसी नुकसान के. इट्स 4 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस. और फिर से एक बार गेंदबाज की ओर की अगली गेंद. यह गेंद इस बार ऑन साइड पर स्विंग किया मिड विकेट पर 4 रनों के लिए. संजय के बल्ले से चौका लग चुका है. गेंद को इस वक्त फ्रंट फुट पर जाने के बाद घुटनों के बल बैठते हुए गेंद को उछाल दिया खूबसूरती के साथ डीप मिड विकेट और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के दरमियान. और इस बीच चौका बल्लेबाज संजय प्राप्त करते हुए बेहतरीन स्ट्रोक और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 8 रनों पर. पहला ओवर प्रगति पर. विल्सन एक बार फिर से तैयार, टॉप एज मौका मिड विकेट फील्डर के लिए और इसी के साथ यह विकेट गिर चुका है. थोड़ी सी उछाल अंतिम क्षण में बल्ले के अति निकट इस वक्त हुई और इस उछाल को समझ नहीं पाए बल्लेबाज. टॉप एज पर गेंद टकराई, पुल करना चाहते तो ऑन साइड पर, लेकिन गेंद टॉप एज पर टकराने के बाद आसानी के साथ मिड विकेट फील्डर के हाथों में पहुंची. पहला विकेट गिर चुका है. फर्स्ट ओवर कंप्लीटेड, 8 ऑन द बोर्ड, 1 विकेट लॉस्ट फॉर अत्तावारा स्ट्राइकर्स. So new batsman Sandeep is now comes out to the middle
और इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए दीक्षित दूसरा ओवर शुरू होता हुआ 8 रन बन चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर। और गेंदबाज अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त पहली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए संदीप के लिए दीक्षित की पहली गेंद। ये गेंद ऑन साइड पर मोड़ा खूबसूरती के साथ इनटू द गैप एज वेल और गेंद बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। Fantastically sweeps it away down to a backward square leg. In fact, it finds the gap very well between deep backward square leg and a deep fine leg. And because of that, he's got a bounty for that stroke. और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 12 रनों पर। 12 for the loss of 1 wicket in the over number second in progress. और दीक्षित एक बार फिर से गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को मोड़ा मिड विकेट पर। एक बार फील्डर मौजूद, एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा। बेहतर फील्डिंग, फैंटास्टिक फील्डिंग। सिर्फ एकमात्र रन उनके और टीम के खाते में जुड़ता हुआ और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 13 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। कोई जल्दबाजी की इस वक्त जरूरत नहीं है यहाँ पर। अत्तावारा स्ट्राइकर्स के बल्लेबाजों को लक्ष्य छोटा है और इस So 18 on the board, 1 wicket lost, second over in progress. दीक्षित एक बार फिर से तैयार। संदीप इस वक्त सामना करते हुए और अपनी ओर की अगली गेंद दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए रिवर्स शॉट खेलना चाहा। बेहतर गेंद इस वक्त और विकेट कीपर ने आगे की लाकर गेंद को फील्ड कर लिया। रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। स्कोर रुक चुका है 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर और फिर से एक बार गेंदबाज दीक्षित तक गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद फैंटास्टिक डिलीवर है। गेन अ डॉट बॉल, कंसेक्यूटिव डॉट बॉल टू एंड द ओवर। 2 overs gone, 18 on the board. Still Attavara strikers looking in a good situation. Just 8 runs to get in remaining 2 overs. अभिराम स्टार्टिंग अ फ्रेश ओवर और तीसरा ओवर उनकी पारी का शुरू होता हुआ। थर्ड ओवर स्टार्ट्स इन देयर इनिंग्स और दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। 12 गेंदें बाकी, 8 रन चाहिए विजय के लिए। अभिराम बाएं हाथ राउंड द विकेट पहली गेंद। इस बार रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा लेकिन गेंद लक्ष्य से बाहर की ओर कुछ ज्यादा नहीं निकल रही थी। सही गेंद घोषित और रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। स्कोर रुक चुका है 18 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर शुरू हो चुका। थर्ड ओवर स्टार्टेड और एक बार फिर से अभिराम गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट तैयार। ये गेंद ड्राइव किया स्ट्राइट इनटू द हैंड्स ऑफ एक्स्ट्रा कवर फील्डर एंड ही टुक द कैच वेरी वेल जस्ट इनसाइड द 20 यार्ड सर्कल एट एक्स्ट्रा कवर।
गेंद को उछाला था जरूर, लेकिन इतना ऊंचा नहीं कि गेंद एक्स्ट्रा कवर फील्डर को बीट कर सके और अपने ऊपर की ओर छलांग लगाते हुए, अपनी दाईं ओर छलांग लगाते हुए कहना पड़ेगा एक बेहतर जजमेंट के साथ इस कैच को लपका इस वक्त फील्डर ने, और इसी के साथ ये विकेट नंबर 2 यहां पर गिर चुका है। नाउ इट्स 18 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। स्टिल 10 balls रिमाइनिंग, 8 runs रिक्वायर्ड। और नए बल्लेबाज सचिन का आगमन यहां पर होता हुआ इस वक्त स्ट्राइकर एंड की ओर वो कदम बढ़ाते हुए, और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो अभिराम इस वक्त गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए तैयार। काफी तेज हवा मैदान की दाईं से बाईं और इस वक्त गुजरते हुए, और इस बीच गेंदबाज अपने ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, बाएं हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद इस बार गेंद को उछालना चाहा, नॉट करके दैट वन प्रॉपर्ली, दिस कुड बी ट्रबल एट द स्ट्राइकर एंड, और इस बार थ्रो पहुंचा लेकिन थ्रो को रिसीव करने में असफल यहां पर विकेट कीपर। स्ट्रोक को खेलने के बाद रन के लिए दौड़ पड़े थे, लेकिन अंतिम क्षण में अपने कदमों को क्रीज पर खींच लिया, देखा कि कोई रिस्पॉन्स नहीं है नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज द्वारा, और 3 लगातार बेहतर गेंदें इस ओवर में अभिराम गेंदबाज फेंक चुके हैं। अपनी ओर की चौथी गेंद लेकर इस वक्त तैयार, बाएं हाथ राउंड द विकेट। यह गेंद इस बार ऑन साइड पर मोड़ा, और इस बार चूके मिस जजमेंट और गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। मुश्किल सा मौका था लेकिन इस मौके को गवा चुके हैं, और कम से कम क्या तो छोड़ा उन्होंने, लेकिन रन से यहां पर रोक सकते थे, गेंद को रोक सकते थे, लेकिन उसमें भी नाकामयाब, और गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 22 रनों पर, 22 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट एंड नाउ 8 balls रिमाइनिंग, 4 runs टू गेट। और गेंदबाज अभिराम गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त तैयार। ये गेंद बल्ले का बाहरी किनारा, रन्स नहीं मिलेगा, डॉट डिलीवरी। द स्कोर बोर्ड स्टेज एट 22 नाउ, 4 runs रिक्वायर्ड फ्रॉम 7 balls। और अभिराम इस ओवर में अंतिम बार रिवर्स शॉट खेलना चाह चुके, रन के लिए दौड़ पड़े, 1 रन मिलेगा इस बीच लेग बाय के रूप में, और लेग बाय के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 23 रन पर। 3 overs has been came to an end and after completion of 3 overs still 23 for the loss of 2 wickets for Attavara strikers। और एक बेहतरीन ओवर अभिराम का यहां पर समाप्त हो चुका है। सो द लास्ट ओवर रिमाइनिंग, and in remaining last over still they have to score 3 runs for victory। This is the match number 10 of this prestigious cricket tournament. Attavara Premier League Season 5 2024 is now progressing here, which proudly presented by Sri Durga Friends। मैंगलोर मीडिया पर इस श्रृंखला का बेहतरीन एक्सक्विजिट लाइव टेलीकास्ट इस वक्त किया जा रहा है, और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो अंतिम ओवर शुरू होता हुआ, द लास्ट ओवर स्टार्ट्स इन देयर इनिंग्स। कौशिक मैच निर्धारित ओवर लेकर तैयार, और जहां तक का सवाल है इस वक्त बाबू गुड्डा टाइगर्स का, तो इस वक्त उन्हें कमबैक करना है, तो इस अंतिम ओवर में कुछ चमत्कारी गेंदबाजी करनी होगी जो कौशिक यहां पर शुरू करने जा रहे हैं। तो स्ट्राइक इस वक्त लेते हुए सचिन, जो कि 4 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए। 6 balls 3 runs रिक्वायर्ड। द फर्स्ट बॉल ऑफ द लास्ट ओवर ऑफ द इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप। कौशिक टू सचिन, फर्स्ट बॉल, इस बार बेहतर गेंद थी, कुछ ज्यादा तक ऑफ स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रहे थे, और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। सही गेंद घोषित, 5 गेंदें 3 रन, 5 balls रिमाइनिंग, 3 runs रिक्वायर्ड। कौशिक दाहिने हाथ ओवर द विकेट, यह गेंद टॉप एज, मौका हो सकता है मिड विकेट फील्डर के लिए, और आखिरकार यह कैच छूट चुका है, कैच छूट चुका है। न सिर्फ कैच उन्होंने छोड़ा, बल्कि 3 रन भी यहां पर बल्लेबाज प्राप्त कर चुके हैं। तो इन 3 रनों के साथ यहां पर यह मैच जीत चुका है अत्तावरा स्ट्राइकर्स। तो आसान सा मौका था इस वक्त डीप मिड विकेट पर, लेकिन इस कैच को लपक नहीं पाए, और न सिर्फ उन्होंने कैच को छोड़ा बल्कि 3 रन भी वो प्रदान कर चुके हैं, और इसी के साथ अत्तावरा स्ट्राइकर्स इस मैच में जीत दर्ज कर चुका है बाबू गुड्डा टाइगर्स के खिलाफ
8 विकेटों से 4 गेंदें बाकी रखते हुए और इस विजय के साथ वो परिपूर्ण अंक यहाँ पर प्राप्त कर चुका है। सो मैच नंबर 10 यहाँ पर समाप्त हो चुका है। और जहाँ तक सवाल है इस वक्त मैच नंबर 11 का, तो मैच नंबर 11 ऑफ दिस टूर्नामेंट इस वक्त शुरू हो गया एक छोटे से अंतराल के बाद। Man of the match of this match award goes to Sachin of Attavara Strikers, who scored a valuable 7 runs unbeaten, and also he picked up 2 wickets in his bowling department. And because of this all-rounding performance, Sachin of Attavara Strikers adjudged man of the match, and I request Sachin of Attavara Strikers to please come on to the stage and receive the man of the match award from the organizers. So next match will be the match number 11 of this tournament is now going to start, and till then we're taking a short break, और एक छोटे से ब्रेक के बाद अंग्रेजी में सतीश के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे जब अगले मैच नंबर 11 की शुरुआत यहाँ पर होगी। तो अब वक्त है एक ब्रेक का। नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक। थैंक यू, धन्यवाद। Welcome back for the match number 11 of the day number 1 of this prestigious Attavara Premier League 2024 Season 5. And all set now for the 11th match. It's a good competition now between Attavara Tigers versus Vaidyanath Warriors. Vaidyanath, out of 2 matches, they won 1, they lost 1. And Attavara Tigers also, out of 3 matches, they lost 1, they won 2 matches. And here is the first ball. Raghutis drives at one straight to the answer fielder. His partner wanted to get the single.
It's always going to be asking for trouble because the ball went straight to the answer short mid-off. And that's why Raghu is not interested for that run. And no run scored. Raghu facing his second delivery. Lofted high up in there and he will going to get the distance. What a shot. Effortless cricketing stroke there from Raghu. When he hits the ball very neatly and unbelievable struck. Never looks like the ball going to get the distance. The way that he chipped that one, just a flick of the wrist. You can see that. And he got the distance quite easily because the direction of the wind really helping that ball to travel. And even the hardness of the ball will going to get the distance. The sweet timing in that stroke there from Raghu there. 6 on the board without loss of any wicket. So Vaidyanatha strikers, warriors, they knows that how important that they wanted to get one more victory here. They played their opening matches, the inaugural match. They faced the defeat. Now their second time, they came in and they won the match. This is the third match of their league stage matches. Top edge ball will going to land it safely to the hands of mid-off. Raghu is absolutely disappointed. Just he wanted that one, flicks that one off his legs. But ball might be came late to his bat. Have a look at that one. Flicks that one. Got a top edge, leading edge, and ball building up in there. Unfortunately, the ball which is landed safely to that mid-off field, making no mistake at all. Huge wicket here for the team. Attavara Tigers, they got the huge wicket of Raghu. The danger man departs. It's 6 for the loss of 1 wicket. Shishant bowls beautifully. Absolutely perfect one there from Shishant. Just outgoing delivery, leg-cutter from him, and the batter Ajay couldn't manage to read that delivery which is going outside the line of off-stump, just defeating his bat. They want bowler's back drive, lovely catch taken there by Shishant on his follow throw. 2 wickets back in the pavilion. Good comeback here by Shishant after that 6 which just came from the bat of Raghu. Then he back strongly with some wicket taking deliveries. 2 wickets here for Shishant. It's 6 for the loss of 2 wickets. So for the Warriors continues again. The wickets are tumbling. The first over itself, even they got 6 runs. But only the 6 that runs which came from that over of Shishant. This time again, lack of placement. Ball went straight to the hands of mid-wicket. Harish, the new batter, played that dotted delivery. What a great over there from Shishant. Even the 6 deliveries conceded 1-6. And he picked up 2 valuable wickets. That shows that how well Shishant handled the pressure. After that, Raghu hits 6 for him. And he picked up same batter's wicket. And after that, 1 more wicket. He's taken 2 wickets altogether for Shishant. Great piece of bowling in this power play. So Shreyas brought into attack on behalf of Attavara strikers. Attavara Tigers, little correction. The Shreyas on behalf of Attavara Tigers will go into ball. Right up over the wicket to the right-hander batter. Again, they wanted to get that one in the square leg region. This time, cricketing stroke will going to give a couple of runs before Arun will go into return the ball to the hands of bowler. Ample time for the batters to complete that 2 valuable runs. Pradeep got his first run from the bat because he is out of the strike in the first over. With 2
runs taken. It's 8 for the loss of 2 wicket. Shreyas ball. Just time opportunity for the caught behind. Sushant wanted to get the ball. Ball off, deflected from his hand. Ball went a little bit far from his trying hands. The wicketkeeper did the rest back to bowler. Shreyas. Lovely reverse sweep. Ball went into the deep third man boundary for 4 runs. This time Pradeep got that one right from the middle of the bat. And just changing his position very quickly. Have a look at that one in replay. And just absolutely becomes a left-hander. And plays it beautiful. Switch it down to deep third man boundary for 4. 12 for the loss of 2 wicket. Going to be a wide, and frustration straight away for bowler pressure as well. This 13 for the loss of 2 wicket in the over number. Second is in progress. Appeal for leg before wicket. Very loud appeal, but umpire not interested, not impressed. It might be that line of the ball just going down the leg side. 14 for the loss of 2 wicket. In the over number, second is in progress. Good bowling performance here from Shreyas. Arish back on strike. Shreyas to continue. Ball him, cleaned him up this time. Ball has got a little bit extra bounce. The time of batsman wanted to go for the drive. Misses the line completely because of that extra turn and the bounce. Batsman completely missed out from his bat, and ball hits the stump. Have a look at that one in replay. Coming just wide of the crease. Coming into the batters. Extra bounce in the last moment. Defeats the bat. The wicket number 3 gone. It's 14 for the loss of 3 wicket. A new batter Prajwal coming to the middle. So over number second is in progress. 14 on the board. Nothing much wrong with the run which they got. They got valuable 14 runs, but they lost 3 wickets. Shreyas. Or this is going to be disaster. Absolutely. After he got a wicket and the next ball. The balls are wide, will going to release the pressure for the new batter. 15 for the loss of 3 wicket. Pushes that one down to extra coverage, and they will go to look for the second. But Pradeep rightly so not interested, sending his partner quickly back. 2 overs gone. It's 16 for the loss of 3 wicket. For the loss of 3 wicket. The Warriors, Vaidyanath Warriors, they're going exactly 8 runs per over, and they lost 3 wickets. 2 overs remaining in their innings. Attavara Premier League Season 5, which is proudly organized by Sri Durga Friends 2024 APL. The 8 teams participating in this cricket tournament. All 8 teams are really fighting hard to get the place. 7 teams, let me correction, not 8 teams. Babagutta Tigers, Good Bulls, Arusu Warriors, Team Attavara Tigers, Vaidyanath Warriors, Attavara Strikers and Veera Maruti Strikers. The teams are taking part in this cricket tournament. And all we can see that the competition is on. Tomorrow will be the final day of this cricket tournament, and the level of competition is going to be very high, the final day. This lovely delivery from in front of wicket. The batsman tried to play that one across the line without seeing the turn of the ball. Just wanted to work that on in the onside region. Pays the penalty for that. And have a look at that delivery from the bowler Tanush. And absolutely good one, the flighted delivery.
getting some extra deviation turn, and batsman absolutely flum, hitting him right in front of middle and off stump. It's 16 for the loss of 4 wicket. Team little bit under pressure now. The match number 11 is in progress. Time is exactly 5 past 32 in the evening. Santu is a new batter in, one more very quality player for the side, who can bat, who can ball, and came in such a good position where his team is wanted some acceleration of run rate. The run rate is okay, but not a big run rate for the team Vaidyanath Warriors. This time he lofted it. What are you talking about acceleration? But he couldn't manage to get the placement right. The mid-wicket fielder fields the ball after one bounce. Good collection there from the fielder in the mid-wicket. Quickly moving to the direction of the ball. And just a single here for the batter, Santosh. It's 17 for the loss of 4 wicket in the over number 3rd is in progress. Desam appeal for stump out, but we can clearly see the back foot of the batter Pradeep is right inside the line. The wicketkeeper almost flies the stumps. That he wanted to get the result here, but Shreyas, good wicket keeping, but result will not going to coming in his favor because Pradeep is right inside the line, the back foot. It's 17 for the loss of 4 wicket. So far, very tidy over there from Santosh. Dhanush triple correction. And Listen, Pradeep tries that one, wanted to put some power in that stroke, but ball went towards the mid-wicket region. Again, that fumble from the field. Ball a little bit hitting the dog there. So ball hitting his leg and then went into his front, and a couple of runs which is taken. It's 19 for the loss of 4 wicket. Again driven the same area. The mid-wicket fielder is a busy customer, and all we can see that the 3 balls came in the same direction. 20 for the loss of 4 wicket in the over number 3 is in progress. Tidy over is in progress. The last time in this over, the bowler will going to continue. Again around his legs, one more good over, very tidy over indeed. 3 gone, it's 20 for the loss of 4 wicket. The next match I request Veera Maruti as well as Good Day Bulls, please be reported here immediately for the signatures. Veera Maruti ಮತ್ತೆ Good Day Bulls ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. The last over going to start. I request the fielding team please make it fast. Dion will be the bowler, will go into ball the last over. Pradeep is on strike. He knows exactly this is the last over. His team wanted some runs in this last over. Dion to continue from the commentary box end. 4th and last over. Right arm over the wicket. To Pradeep, going for the big swing of the bat again. Shreyas. this time not a Shreyas. It's I think Sushant is the wicket keeper. Again flying the stumps. But result what we are looking for is in favor of the batter. No damage done. It's 20 for the loss of 4 wicket. Good start there from Dion. 5 balls remaining in the innings of Vaidyanath Warriors. Again driven powerfully bound to mid-wicket region.
And they're looking for the second. In comes the throw, and it's not good enough. If it is a direct hit, I think it's all over. Shreyas from the deep mid-wicket region, returning the ball very quickly to the hands of the bowler. And 22 for the loss of 4 wicket. Umpire has got a warning for the batsman running in the pitch. Last 4 balls remaining. Dion. Again, Pradeep putting some extra effort in that stroke, but just a single. With that single, Skoban moves on to 23 for the loss of 4 wicket. 3 balls left, 3 balls, 3 runs scored. 3 remaining. Santosh is on strike. And again, looking for the big shot. Opportunity of a run out. Umpire will go into refer for the third umpire. Looks like the wicket-keeper is very confident. But you need to see the level of confidence here in our commentary box. The third umpire, Roland Pinto, will go in to see whether the batter is safe or not. The opportunity of run out in the non-striker's end, but wicketkeeper tried to make the run out in the striker's end. And just have a look at that one, because you can see that the striker is not started his run. And it was an easy dismissal in the non-striker's end, but he's trying for the run out in the same end. And we'll wait and see. Batsman looking in. So far a very tidy bowling performance from the fielding side. Attavara Tigers so far bowled fantastic overs. Is gone, is out. Pradeep back into pavilion. So that's what I'm talking about. A level of confidence here you can see from wicketkeeper that looks like he got the batsman in the form of run out. Now Arun walking towards the middle. No, Arun is a non-strike, correction. He is in the opposite side, the fielding. It's a 23 for the loss of 4 wicket. Mani is the batter. Mani Kant coming to the middle. So far, very decent bowling performance here from our team Attavara Tigers. Dion so far bowled a very tidy line. Just 3 runs in 4 balls. 2 balls remaining. Young talented batsman Manikant, left-hand batter, will going to take the strike. Has got a very good batting stance. Again, he got a bat onto that. Again, ball went in the gap. Probably they're going to try for the second, and I made it quite easily. Couple of valuable runs came from the bat of Manikanta. And with that couple of runs covered, Namoz under 25, quarter century for the team Vaidyanath Warriors. Dion to continue. Lofted up in the air. The mid-on-fielder drops the catch. Oh my goodness. But run out which is taken place. Just a single run in the last delivery of the over. And the wicket as well in the form of run out. So 26, which is the score of team Vaidyanath Warriors, and they set a target of 27 to win the match. Just under 7 runs per over the required run rate for the team Warriors. And wait to see how well team Vaidyanath Warriors will go into defend this total, and wait and see how well team Attavara Tigers will go and get this total. It's a very interesting match, and again I request 2 teams please be reported here immediately for the signatures. Good Day Bulls as well as team Veera Maruti, please be reported here for the signatures. Thank you. And after a short break, my friend Gopi will go to take over the microphone. Thank you. Thanks a lot.
ಗುಡ್ಡೆ ಬುಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ ವೀರಮಾರುತಿ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವು ಈ ಎರಡು ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಗುಡ್ಡೆ ಬುಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ ವೀರಮಾರುತಿ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರು ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇಗನೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಪಂದ್ಯ ಆಡಲಿಕ್ಕಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. Right, the target is 27 and the innings of Attavara Tigers is now going to bat. 27 the target for Attavara Tigers, set by Vaidyanatha Warriors. And Ajay, the bowler, starts the fresh proceedings, and Shreyas, the batsman, is now going to face the first delivery of their innings. First and only power play of their innings is now going to begin. And the first ball of their innings is now coming up. Ajay to Shreyas. Right arm over the wicket, here he bowls. Starts off with a wide and one run added to the total. And with that single run, the runs account begin for Attavara Tigers. It's one without loss in the first over. 27 in 4 over, they have to score for victory. The first and only power play is now on. इस बार गेंद को ड्राइव करना चाहा, नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपरली इन फैक्ट, एंड ही कांट गॉट एनी रन फॉर दैट स्ट्रोक. बेहतर गेंद थी, परफेक्ट ऑफ कटर, और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 1 रन ऊपर बिना किसी नुकसान के. फिर से एक बार गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए गेंदबाज अजय अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, गेंद पहुंची शॉर्ट फाइन लेग पर, रन नहीं मिलेंगे और स्कोर इस वक्त रुक चुका है कुल मिलाकर 1 रन बिना किसी नुकसान के. फर्स्ट ओवर इन प्रोग्रेस, 1 रन ऑन द बोर्ड, येट टू लूज एनी विकेट. और 2 बेहतर गेंदें इस वक्त अजय फेंक चुके हैं. एक वाइड गेंद फेंकने के बाद अपनी ओर की तीसरी गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार ड्राइव कर दिया खूबसूरती के साथ, लेकिन स्ट्रोक्स में ज्यादा रफ्तार नहीं. और पॉइंट पर जब तक गेंद फील्ड, थोड़ी सी मिस फील्ड, रनआउट का खतरा इस बीच, लेकिन यहाँ पर जब तक डाइविंग एफर्ट डालकर विकेट कीपर गेंद को फील्ड करे, बल्लेबाज के पास मौका था दूसरा रन प्राप्त करने का. थोड़ा सा वाइड थ्रो आया था, और अगर थोड़ा सा एक्यूरेट होता थ्रो, निश्चित रूप से यहाँ पर स्ट्राइक रेट पर खतरा पैदा हो सकता था बल्लेबाज के लिए. तो इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 3 रनों पर, 3 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर. और गेंदबाज एक बार फिर से गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट तैयार. दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अपनी ओर की अगली गेंद, ये गेंद स्वीप करना चाहा, नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपरली, इट्स ऑफ द बैट. और 1 रन का इजाफा, और दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़े. 2 रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं ओवर थ्रो के रूप में. कपल ऑफ रन्स एडेड टू द टोटल, इट्स 5 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस. ವೀರಮಾರುತಿ ಹಾಗೂ ಗುಡ್ಡೆ ಬುಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು. तो यहाँ पर मैच कुछ क्षणों के लिए रुक चुका है, और जहां तक सवाल है इस वक्त अंपायर कुछ कहते हुए खिलाड़ियों से, ಅಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಪಂದ್ಯ ಆಡಲಿಕ್ಕಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು. तो अजय इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, और गेंदबाज अजय की गेंद का सामना करेंगे इस वक्त श्रेयस. राइट आर्म ओवर द विकेट, अजय बॉल्स, here he bowls. इस बार उछालना चाहा, लेग स्टंप से लाइन के बाहर टिप्पा खाती हुई गेंद, और 1 रन का इजाफा लेग बाय के रूप में. और लेग बाय के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 6 रनों पर. 6 ऑन द बोर्ड, येट टू लूज एनी विकेट. एक बेहतर गेंदबाजी का सिलसिला यहां पर जारी रखते हुए गेंदबाज अजय, और एक गेंद अभी भी इस ओवर में बाकी. और इस ओवर में अंतिम बार अजय इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार. दाहिने हाथ के बल्लेबाज सामना करते हुए, ये गेंद स्क्वायर ऑफ द विकेट, गेंद को खेला लेकिन स्ट्रोक्स में ज्यादा रफ्तार नहीं, जस्ट अ सिंगल ही गॉट.
And with that single run, the scoreboard moving up to 27 now. In fact, it's a 7 now, 27 the target. That means exactly 20 runs more. Now they have to score for victory. First over completed, 7 on the board for no wicket and 20 runs required in remaining 3 overs. That means in remaining 18 deliveries. शाम का वक्त, शाम के 5:50 यहाँ पर बच चुके हैं. धूप लगभग मैदान से गायब हो चुकी है. सूरज मैदान की दाईं ओर अपना अस्तित्व का प्रदर्शन करता हुआ धीरे धीरे समंदर की ओर अपना सफर तय कर चुका है और इसे ढलते हुए वक्त के साथ साथ यहाँ पर रोशनी मैदान पर कम होते हुए, और इसलिए मैं खिलाड़ियों से दरख्वास्त रिक्वेस्ट निवेदन करता हूं कि कृपया मैच को जल्द से जल्द आगे बढ़ाएं. प्लीज कंटिन्यू द मैच एज सून एज पॉसिबल. सेकेंड ओवर स्टार्ट्स इन द इनिंग्स. गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए और संतोष गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार. 18 बॉल्स रिमाइनिंग, 20 रन्स रिक्वायर्ड. और सामना करते हुए इस वक्त धनु. पहले ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं. पावर प्ले समाप्त हो चुका और फील्डर इस वक्त मैदान पर छा चुके हैं. संतोष. फर्स्ट बॉल कम्स धनुष के लिए. दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए 18 गेंदें बाकी और 20 रन चाहिए विजय के लिए. ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त संतोष तैयार. अले पंद्यವನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದ ಮ್ಯಾಚ್. ಫಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಸಂತೋಷ್ ಕಮ್ಸ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಹಿಯರ್ ಹಿ ಬೌಲ್ಸ್. संतोष दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए धनुष के लिए पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. Starts off with a wide and with that single run the scoreboard moving up to 8 without loss now at the start of the second over. 18 balls remaining, 19 runs required. और इस बीच विकेट कीपर कुछ बातचीत करते हुए गेंदबाज संतोष से और वापस अपने स्थान पर लौटते हुए 19 रन चाहिए, गेंदें बाकी है 18. और धनुष संतोष की गेंदों का सामना करने के लिए तैयार. दाहिने हाथों ओवर द विकेट संतोष इस वक्त गेंदबाजी करते हुए. यह गेंद इस बार चूंकि विकेट कीपर रन के लिए दौड़ पड़े, 1 रन मिलेगा. गेंद को ठीक तरह से गैदर नहीं कर पाए. विकेटों के पीछे बाई के रूप में 1 रन उनके खाते में जुड़ चुका और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 9 रनों पर बिना किसी नुकसान के. 9 विदाउट लॉस एट द स्टार्ट ऑफ द सेकेंड ओवर. और संतोष फिर से एक बार गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार. धनुष ऑफ द स्ट्राइक हो चुके हैं. श्रेयस इस वक्त सामना करते हुए ओवर की अगली गेंद लेकर, दूसरी गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए संतोष. Reverse shot, fine, he's got that one fine this time and he finds the gap as well. रिवर्स शॉट खूबसूरती के साथ गेंद को रिवर्स शॉट खेला था और गेंद को खाली क्षेत्र चुनते हुए खेल दिया. डीप थर्ड मैन पर 4 रनों के लिए. थर्ड मैन फील्डर थे लेकिन गेंद उनकी दाईं ओर से फाइन निकलती हुई सीधे डीप थर्ड मैन सीमा रेखा को पार कर गए 4 रनों के लिए. बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त श्रेयस के बल्ले से लगता हुआ और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 13 रनों पर. 13 फॉर द लॉस ऑफ नो विकेट. 14 रन्स रिक्वायर्ड, 16 balls remaining. The things getting easier a little bit for the batting side at this situation. और फिर से एक बार गेंदबाज संतोष गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार. श्रेयस से इस वक्त सामना करते हुए संतोष की गेंदों का. इस बार इंप्रोवाइजेशन करना चाहा, चूंकि गेंद के लाइन पर नहीं आ पाए और जहां तक सवाल है इस वक्त रनों का, तो रन इस वक्त नहीं मिलेंगे. तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है कुल मिलाकर 13 रनों पर बिना किसी नुकसान के. 13 विदाउट लॉस. तो तीसरे अंपायर के लिए इस वक्त मांग की गई है कि गेंद स्टंप्सों पर टकरा चुकी है या नहीं देखने के लिए.
He's bowled. And the batsman is now backing to pavilion. Again समसो पर टकरा कर इस वक्त सीधे विकेट कीपर के हाथों में पहुंच चुकी थी और बोल्ड आउट के रूप में विकेट यहां पर गिर चुका है. So the batsman dismissed is Shreyas for 8 and first wicket fallen for Attavara Tigers. It's 13 for the loss of 1 wicket. We are just waiting for the number 3 batsman of Attavara Tigers. तो नए बल्लेबाज क्रीज पर इस वक्त उतरते हुए सुशांत. The new batsman is now comes out to the middle. So 15 balls left and 14 runs required. और गेंदबाज संतोष गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार. संतोष ಅಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಮುಂದುವರಿಸಿ. तो इस बीच गेंदबाज इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट. ये गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई वाइड का इशारा. वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 14 रनों पर. 12 रन 13 रन स्टिल रिक्वायर्ड. runs 13 runs required in remaining 15 balls. दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए संतोष अगली गेंद लेकर तैयार. गुड वन. एब्सोल्युटली प्लम्ब इन फ्रंट. One more wicket fallen. Perfect off cutter delivery and the ball stuck to the batsman's leg and a plumb in front given by the umpire. 14 for the loss of 2 wickets now. 14 balls remaining and 13 runs required. प्रदीप नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए 14 गेंदें बाकी 13 रन चाहिए विजय के. 13 रन टू गेट इन रिमाइनिंग 14 बॉल्स. और प्रदीप इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. संतोष गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए. संतोष कम्स राइट आर्म ओवर द विकेट टू द राइट हैंडेड बैट्समैन प्रदीप. इस बीच अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए तैयार. Good one. Just wanted to turn steering it away. Can't succeed it and collected by wicketkeeper behind the stumps. 1 ball left. Thirteen balls remaining, 13 runs to get. Last time in this over, Santosh comes. Right arm over the wicket, here he bowls. Last time in this over, Santosh comes. Played that one. This time gone through for a quick single and get it comfortably. 15 on the board, 2 wickets down, 2 overs completed, 12 runs to get from 12 balls.
So third over starts. Raghu is now brought into the attack. 12 required from 12 deliveries. The equal battle is now continuing here. And the striker is Pradeep. Is now going to face Raghu for the first time in this match. Still some fielding adjustments is going on there. And the first ball of Raghu's over is now coming up. Right arm over the wicket here he bowls. First ball, Raghu. Here he comes, right arm over the wicket after making some fielding adjustments. First ball of his fresh over is now coming up. Right arm over the wicket, here he bowls. 12 of 12 deliveries. They have to get at this situation. Defensively played, gone for a quick single, and this time he misses. He misses and a single run added. Follow through में बेहतर फील्डिंग जरूर की थी. इस वक्त निशाना दागा था फील्डिंग करने के बाद. अपनी बाईं ओर जाते हैं फॉलो थ्रू में और यहाँ पर निशाना उन्होंने जरूर दागा था लेकिन निशाना उनका चूकता हुआ एक रन बल्लेबाज यहाँ पर पोल्ड करते हुए स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है इस एक रन के साथ 16 रनों पर. 11 रन चाहिए, 11 गेंदे बाकी. 11 बॉल्स रिमेनिंग, 11 रन्स रिक्वायर्ड. और बल्लेबाज धनुष इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. राघु अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज धनुष के लिए अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार. ये गेंद लेग कटर हल्के से गेंद को पुश कर दिया. गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट कवर पर. एक रन का इजाफा और एक रन के इजाफे के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 17 रनों पर. 17 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट. द इक्वल बैटल इज नाउ ऑन. 10 बॉल्स रिमेनिंग, 10 रन्स रिक्वायर्ड. और रघु फिर से एक बार गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार. राघु अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए. Defensively played, just wanted a single. No, says the non-striking batsman. He survived and the scoreboard stays dot delivery bowled. And now 9 balls left, 10 runs required. So Raghu once again here he comes. 3 बेहतर गेंदें इस ओवर में राघु फेंक चुके हैं. चौथी गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए और बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. प्रदीप सामना करते हुए इस वक्त राघु की गेंदों का. और 10 रन चाहिए, 9 गेंदें बाकी. राघु अपनी ओर की अगली गेंद. दाहिने हाथ ओवर द विकेट. ये गेंद हल्के से गेंद का पुश किया. इस बार रनआउट का खतरा. मिस फील्ड यहां पर. रन यहां पर बल्लेबाज पूर्ण कर चुके हैं. अगर शॉर्ट कवर फील्डर के हाथों में ठीक तरह से गेंद बैठ जाती तो निश्चित रूप से यहाँ पर नॉन स्ट्राइक रन पर बल्लेबाज के लिए खतरा पैदा हो सकता था, लेकिन ना वहाँ पर थोड़ी सी मिसफील्ड होती हुई शॉर्ट कवर फील्डर द्वारा और इसका फायदा उठाकर बल्लेबाज ने 1 रन यहाँ पर प्राप्त कर लिया. 18 रन बन चुके. 18 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट. 9 रिक्वायर्ड फ्रॉम 8 डिलीवरीज. और रघु गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट. रघु की गेंद बाउल आउट. जस्ट गॉन फॉर अ बिग वन एंड लॉस्ट हिज स्टंप्स. Important wicket for Raghu in the important stage of the match. And the batsman departs. And now things getting little bit of a stiffer now for Attavara Tigers. 9 to get from 7 deliveries. New batsman Harun is now comes out to the middle. This is the 11th match of this prestigious cricket tournament. APL Attavara Premier League Season 5 2024 is now progressing here, which proudly presented by Sri Durga Friends. And 7 balls left, 9 runs required. Raghu for the last time in this over, bowling to the right-handed batsman.
और अरुण इस वक्त सामना करने के लिए तैयार राघव की गेंद का। अंतिम बार इस ओवर में राघव की गेंद। ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को मोड़ा, स्क्वायर लेग पर फील्डर थोड़े से पीछे तैनात, एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 19 रनों पर। 8 रिक्वायर्ड फ्रॉम लास्ट ओवर नाउ, 6 balls and 8 runs। तो अंपायर ने इशारा किया कि वहां पर उनके निगदित समय समाप्त हो चुका, दे आर एक्सीड द टाइम लिमिट। तो एक खिलाड़ी को इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर बुला लिया जाएगा। 1 fielder brought inside the 20-yard circle now। अब देखते हैं अंतिम ओवर कौन से गेंदबाज यहां पर शुरू करेंगे। Harish, the bowler, is now starts the fresh proceedings from that side end। और अरुण इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलती हुई, निस्संदेह रनों की सख्त जरूरत इस वक्त अत्तावरा टाइगर्स के बल्लेबाजों को, जबकि डॉट गेंदे और विकेटों के सख्त दरकार वैद्यनाथ वॉरियर्स के गेंदबाज को। तो इस वक्त हरीश गेंदबाजी यहां पर प्रारंभ करते हुए। द लास्ट ओवर स्टार्ट्स इन द इनिंग्स। फर्स्ट बॉल कम्स, 6 balls 8 runs रिक्वायर्ड। पहली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार। हरीश अरुण के लिए ये गेंद लेग स्टंप से बाहर, विकेट कीपर चुके, वाइड का इशारा, रन के लिए दौड़ पड़े। 1+1 2 runs नाउ एडेड। 6 balls लेफ्ट, 6 runs रिक्वायर्ड नाउ। लेग स्टंप से काफी बाहर की ओर गेंद फेंकी थी इस वक्त और विकेट कीपर भी गेंद को ठीक तरह से कलेक्ट नहीं कर पाए। रघु विकेट कीपर थे और 2 रन इस वक्त वाइड के रूप में उनके खाते में जुड़ चुका है। 6 गेंदे 6 रन चाहिए और हरीश एक बार फिर से गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हैं। वेताइना तो ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार स्वीप कर दिया गेंद को। गेंद पहुंची इस वक्त स्क्वायर लेग पर, 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 22 रनों पर। 22 नाउ, 5 to get from 5 deliveries। What a match is now progressing here। और गेंदबाज इस वक्त तैयार। हरीश गेंदबाजी आगे बढ़ाते, वेताइना तो ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार गेंद को उछाला खूबसूरती के साथ लॉन्ग ऑन सीमा रेखा से बाहर। 6 रनों के लिए अरुण ने, और इस छक्के के साथ अत्तावर टाइगर्स आर won the match thrillingly in the last over with just 3 balls to spare। So what a match! Match number 11 has been came to an end and which won by Attavara Tigers, and now the match number 12 is now going to start between Good Day Bulls versus Veera Maruti, and I request all the players of the last match of today, Good Day Bulls and Veera Maruti, to please start the match immediately। ಅಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ। ದಯವಿಟ್ಟು ಗುಡ್ ಡೇ ಬುಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ ವೀರ ಮಾರುತಿ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ। ಅದೇ ರೀತಿಯ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿ ಅತ್ತಾವರ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡದ ಸುಶಾಂತ್ ರವರು ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। ತಮ್ಮ ಉತ್ತಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮೂಲಕ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಒಂದು ಓವರಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ। ದಯವಿಟ್ಟು ಅತ್ತಾವರ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡದ ಸುಶಾಂತ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಕರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ। ಅದೇ ರೀತಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಕೂಡಲೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ। ಗುಡ್ ಡೇ ಬುಲ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಬೇಕು। ಅದೇ ರೀತಿ ವೀರ ಮಾರುತಿ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಕೂಡಲೇ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ। ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದಿ ಓಪನರ್ಸ್ ಆಫ್ ವೀರ ಮಾರುತಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಟ್ immediately। So the last match is now going to start, and before that we are just taking a short break, and we'll be back right after the short break with Satish in English for the last time on day first of this prestigious cricket tournament, Attavara Premier League Season 5 2024। ಈ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂತ ಆಟಗಾರ ಸುಶಾಂತ್, ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರನೂ ಆದಂಥ ಸ್ಕೋರರ್ ಆದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಇವರು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಧನ್ಯವಾದಗಳು। ಸೊ ವಿಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ರೈಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಫಾರ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿತ್ ಸತೀಶ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದ।
Please start the match immediately. So, welcome back for the last match of the day number 1. And Good Day Bulls takes on a challenge of team Veera Maruti. And it's going to be a very, very important match for both the teams. Umpire is walking towards the middle, Roland Pinto. Akshay will going to start the proceedings from the commentary box, and Avinash is in striker's end and his partner Dhanush is in non-striker's end. So the Good Day Bulls, after their lost their first match in the league stage, they bounced back very strongly in the second match. They chased down the huge total in with the very minimum overs, and so that the level of confidence is going to be very high. Good Day Bulls, after winning the toss, selected to field first, and Akshay will go into start the proceedings from the commentary box, and Avinash will go into take the strike. First ball of the match, the final match, the 12th match of the day number 1, and he will go in bowling to left-hand batter in this power play, and Akshay will go into starts a fresh over, first over. Left arm over the wicket, starts with a wide, and it's going to be a first run for the team Veera Maruti, 1 without loss of any wicket. Time is exactly 6 past 12 in the evening, and because of the long day, this time a full toss and capitalized one quite nicely down to deep square leg boundary for 4 runs. Little margin for error when you're bowling the power play overs. Didn't got adequate field for that full toss delivery. Pays the penalty for that. Low full toss, but Avinash just ready for that delivery, and got that one right from the middle of the bat. Easy pick for the left-hand batter. He got the boundary for that. 4 without loss of any wicket. The 5 on the board. They have just 1 ball bowled and 5 runs scored. Good start for the Veera Maruti. Akshay to continue from the commentary box end. Left arm over the wicket. Beautifully bowled. Perfect delivery in the negation. But ball certainly has got a bat onto that in the last moment, saving him from the leg before wicket. Avinash picked up a single. Scoreboard now moves on to 6 on the board without loss of any wicket. That brings the Dhanush into strike now. Akshay continues. Again, a little bit making room to play the shot. Dhanush didn't quite getting that one from the middle of the bat because of a little bit early into the stroke. That ball which is came straight to the hands of the bowler on his follow through, fields the ball back to his body mark. 6 without loss of any wicket. Lovely delivery. Dhanush gone. The very good stuff there from Akshay in the negation. Ball that right on the middle stump, right on the money. The bowler absolutely bowled that very good incoming delivery as he bowled the leg cutter, but coming into the batter, right on the batsman in the negation. Dhanush wanted to play again away from his body. Tried to make a little bit room to play the shot. Have a look at that one. The intention is to get that one into the deep long on. But once he missed that one, it's always going to be dangerous. So the second time Dhanush fails to contribute. After that, he got a very good start in this tournament. And just have a look at the sun here. The cameraman of Mangrove Media covering that sun. Absolutely beautiful view. Absolutely. It was a fantastic and a delightful picture. We can see that the sun will go into finish their duty from east to west, and almost
sinking towards the sea and Arabian Sea, the right of our cricket ground. We are having a Netravati river passing. After that, sea we can see. There's a loose delivery again from Akshay. And the second full toss in this over, and both the full toss which is converted by the batters of Veeramaruti for the boundary. And now Atul has got a juicy full toss. And with that boundary scope, now moves on to double figure 10. Very quickly came here, double figure for the team Veeramaruti. Again, that ball is just around his legs, right, well within the reach of the bat of the batter after completion of over number first. It's a 10 for the loss of 1 wicket. The couple of inches that inside the line, and I'm very surprised why the non-striker is asking for the wide, but it's well within the reach of the bat. And 10 from the first over of Akshay, and you got 1 wicket. Equal start for both the teams. Wicket for Good Bulls, at the same time 10 runs for Veeramaruti. And more than the wicket, I think it's always going to be runs which comes into play when you're playing that small format of a games like a 4 overs. So Nelson brought into attack, and he will go into ball without any tension because he got a wicket in the first over. Again balls, and ball that beautiful delivery around the midland leg stump because he's bowling in the after the power play, so no tension at all here for the bowler, keeping that fielder in the deep long on, long off mid wicket, deep square like 5 fielders outside the ring. Again got outside edge of the bat. Ball will going to travel down to short third man region, and Sunil the fielder then just running across is to left to field the ball, and ample time for Avinash to complete that single. With that single, scored moves on to 11 for the loss of 1 wicket. 2 very good line ball there by Nelson in this second over, and he will go into ball third time in this over from Attavara strikers end. Now slight a bit of change in field. Now we can see that the fielder from square leg coming towards the mid wicket, and a little bit the mid wicket fielder going back to deep mid wicket region. Akshay, there is long on and long off is there. Deep cow point. Oh, that will go into be a no ball. This is a no ball. Nelson just wanted to get some experiment in the negation. By doing that, the ball is almost going out of the pitch. So that no ball called by umpire. No ball in the sense is a free hit delivery for Atul. And here is Nelson bowls. Oh, lovely delivery, good comeback. That was a free hit delivery. The batsman wanted to hit that one very freely, but missed it completely. That line which is slight a bit of outside the line of off stump, and he missed it completely. Good comeback from the bowler's point of view. Score remains on 12 for the loss of 1 wicket. Nelson bowls one more very good delivery, and off stop by the wicketkeeper Prasad behind the stump. And Prasad, the wicketkeeper batter for the side of Good Bulls. Nelson now again from the far end. Right arm over there, plumb in front of wicket, no doubt at all. Atul thought it might the ball is going outside the line of leg stump, but ball suddenly pitching in a line. And again he making a mistake of playing across the line of the delivery. And no chance at all. And he will definitely will going to see it in a replay when you are going to home, when you watching that YouTube channel of Mangalore Media. You can see that where your front foot is. Then we're going to get a wide umpire given him out. Just have a look at it on a replay. Just I want to see pitched in a line on the middle stump, and is slightly across the line of the delivery. It's backward right to in front of midland leg stump. It's 12 for the loss of 2 wicket, and the over number 3 is in progress. New batsman in, Madhu. Lofted, catch it is a call, but ball landed safely between the little bit of safely in the sense the fielder tried to take the catch, but ball landed just in front of the fielder. Good over, tidy over there from Nelson. After completion of over number 2, it's a 13 for the loss of 2 wicket. Only 3 runs conceded by Nelson. Outstanding over, the kind of over which is required for team Good Bulls, and Nelson produced that over for his team.
The experienced batter Madhu came into bat, played good innings, 2-3 good innings for his team so far. Probably very useful batsman in the number 4 position for that side for Veera Maruti. And Sunil will go into ball that third over. The condition, light condition, slight a bit of coming darker, not that much of darker, but it's a good condition because of the month of March. Probably the late darkness till 6:45 to 7 will can get good light condition here in usage cricket ground. So dotted delivery to start with Sunil. Second time in this over. This time they wanted a single there. Mix up, opportunity of run out. And a wide call by umpire, but run out taken place. Extra run will be conceded. It's 14 for the loss of 3 wicket in the over number 3 is in progress. The Madhu unfortunately is back in the pavilion. So Avinash will go into face the next delivery. The new batter Deepak is in non-striker's end. Again almost drags that one from the outside the line of off stump. Avinash picked up single down to wide long on region. 15 for the loss of 3 wicket. In the over number 3 is in progress. Bowler will go into continue from the commentary box and Sunil. This time ball is in there. Again the ball is landed safely between backup point and the cover point, and before the fielder from deep cover point will go into run to front to field the ball. Ample time for the batter to complete that single. With that single, score numbers on to 16 for the loss of 3 wicket. In the over number 3 is in progress. Avinash back on strike. 2 left-hand batters in middle. Again once again the ball is in there and it's taken. This time Avinash fails to get the timing in the stroke. Wanted to go for the lofted extra cover drive, but I think maybe the bat which is stuck in the ground, and that's why it's just missing that timing what he's looking for. Have a look at that one in the replay. Going outside the line of up, I'm absolutely right, and the bat which is hit pretty hard into the ground, so that he couldn't manage to get the ball into the middle of his bat. Face the penalty for that. It's 16 for the loss of 4 wicket. In the over number 3 is in progress. So good comeback here by the bowlers of Good Devils. After that the first over which is 10 runs. Second over only 3 runs by Nelson. And now Sunil bowling a very tidy over so far. Prashant is a new batter in. Sunil to continue. Right arm over the kick. Quicker on the faster one. Chance of run out. One more wicket is back into pavilion in the form of run out. They're throwing the wicket. Team Veera Maruti is definitely seeing there is under pressure. It's 16 for the loss of 5 wicket. Half of the batsmen are back into pavilion of team Veera Maruti. And as a cameraman is going everywhere, just catching that eagles flying very freedomly down at high in the sky. Absolutely fantastic view of the birds flying high and making this competition very interesting. 16 for the loss of 5 wicket. One more very good delivery, turning out to be a great over. One more good over, and in that over also only 3 runs came from that over. 1 wicket for Sunil. So 3 gone after completion of over number 3. 16 for the loss of 5 wicket, and we can see it in the screen. The supporters of Good Devils are shouting and cheering their favorite team, the favorite players, and we can see it in the screen. That absolutely fantastic. The cricket tournament is in progress in the name of Attavara Premier League 2024, and the Mangalore media having a live telecast of this cricket tournament.
This is our pavilion and UFCA pavilion, most beautiful constructed thanks to the European Cultural Association, because in this 47th RRP Memorial Trophy they are painted and makes this UFCA pavilion more beautiful and comfortable for officials. And here is again 16 on the board. Last over will going to start from the far end, and Punit the bowler will going to start the last over. Starts with a beautiful delivery and around the legs of the batter, and wicket keeper behind the stump did the rest, back to bowler. Now umpire Roland Pinto is asking for the third umpire to see that wide, because bowler coming right in front of umpire, so that it's not a wide. It's not a wide, and batsman himself saying that it's well within the inside the line. Very good sportsman spirit shown there by the batter. Absolutely is a big hand for the batter Deepak, because he's saving the time, and because under this bad light it takes another 5 minutes to check that wide deliveries. One more single taken there by Deepak, and warning number 2 has been given for umpire from umpire to Praneeth. Puneet will be very careful now. 17 for the loss of 5 wickets. Just changing angle. I think it's nice to do that. So that is just coming round the wicket here now. Right arm round the wicket. This time catch it is a call. One more wicket is back into pavilion. Wickets are tumbling like a house of cards of team Veera Maruti. 17 for the loss of 6 wicket. One more wicket is back into pavilion. Last 3 balls remaining in their innings. I request the batsman need to run quickly to the batting hand, and because of shortage of time. Puneet again. Balls again wide outside the line of leg stump, so that wide call by umpire. 18 for the loss of 6 wicket. Each and every run going to be bonus, because Good Bulls have to chase this run in the last session under little bit bad light. They need to chase those runs, so that they need to be very careful. This time appeal for leg before wicket, pitching outside the line of leg stump as the bowler bowling round the wicket, around the along the ground, so that it's going to be a first the impact of that line which is pitching outside the line of leg stump. It's 19 for the loss of 6 wicket. Last over is in progress. The last 2 deliveries left. Again, lovely delivery, good line to ball to the left hand batter outside the line of off stump. 19 for the loss of 6 wicket in the over number. Last is in progress. The last delivery of their innings is coming up. Again wanted to go for the drive, mistimed that one, just a single, and that's it. 20, which is the total score of Veera Maruti, and they set a target of 21 to win the match for Good Bulls. There's a good bowling performance there from Good Bulls after the captain winning the toss, elected to ball first and they bowled very well. And now wait and see. The 21 going to be a target for the team Good Bulls to win the match. In the last match and the last innings of the day number 1 will go into commence. And before that innings will go into commence, I would like to invite Mr. Gopi, the final time today in this day number 1, to take over the microphone, and target going to be a 21 for the team Good Bulls. Thank you very much. This is all we can see, the lovely spectators and watching this live watching this cricket live in the UCG cricket ground. Some senior cricketers and of course they're enjoying the game of cricket in our spectators galleries, and that was a beautiful view of UCG cricket ground. They're enjoying the game of cricket in this very pleasant evening, very cool evening. After that very hot sunny day, you are just feeling some coolness in the evening here in UCG cricket ground. And now it's going to be a target 21 for Good Bulls, and welcome for
Gopi for final time in this day number 1 of this prestigious Attavara Premier League 2024 season 5. धन्यवाद सतीश. So 21 the target for Good Day Bulls set by Veera Maruti cricketers. 21 they have to score in the stipulated 4 overs under bad light. And let's see can they reach the target or not. The openers ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡಲೇ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಬೇಕು ದಯವಿಟ್ಟು. So Puneet and Akshay the opener for Good Day Bulls and the bowling for Veera Maruti. Dhanush starts the fresh proceedings for Veera Maruti in the bowling department. The first ball of the innings is now coming up. 21 they have to score in the stipulated 4 overs. And we are just waiting for the first ball of the match. पहली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज धनुष तैयार, जबकि सामना करते हुए इस वक्त अक्षय. और जहां तक अक्षय का सवाल है, पिछले मैच में 3 या 4 छक्के उन्होंने लगाए थे और एक बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अपने टीम को विजय दिलाई थी. उस मैच के मैन ऑफ द मैच के हकदार रहे थे. यहाँ पर देखना है कि उसी लय को, उसी रिदम को यहाँ पर इस मैच में भी वो आगे बढ़ा पाते हैं या नहीं. पहला और एकमात्र पावर प्ले ओवर का यहाँ पर शुरू होता हुआ. और जहाँ तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, धनुष गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए इस वक्त अक्षय के लिए पहली गेंद इस बार टॉप एज और फील्डर जी नहीं, गेंद तक नहीं पहुंच पाए. यहाँ पर मौका जरूर था अंतिम क्षण में, गेंद को उछालना चाहते थे अक्षय मिड विकेट के ऊपर से, लेकिन ऐसा कहना पड़ेगा नॉट क्वाइट गेट दैट वन फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट. गॉट स्टॉप इट बट लकीली फॉर द बैट्समैन इट फेल जस्ट शॉर्ट ऑफ अ फील्डर एट शॉर्ट पॉइंट. 1 रन का इजाफा, 1 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर. और बल्लेबाज इस वक्त पुनीत सामना करने के लिए तैयार. और इस बीच धनुष गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए फील्डिंग में कुछ हद तक सजावट करने के बाद अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए पुनीत के लिए पावर प्ले ओवर इस वक्त जारी. ये गेंद लेग स्टंप से बाहर, गेंद कौन साइड पर उछालना चाहा, बेहतर गेंद थी, कुछ ज्यादा हद तक लेग स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रही थी और सीधे पहुंची इस वक्त विकेट कीपर के हाथों में. रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 1 रन पर. और गेंदबाज इस वक्त धनुष गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए इस बार पुनीत ने गेंद को उछाला. गेंद इस वक्त लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के अंदर लपक ली गई है और इसी के साथ यह विकेट यहां पर गिर चुका है. काफी उम्दा, काफी ऊंचा उछाला था इस वक्त पुनीत ने, लेकिन शाम का वक्त और आमतौर पर उर्वा क्रिकेट मैदान का स्वभाव ऐसा है कि शाम होने के बाद यहाँ पर हवा का रुख काफी हद तक कम हो जाता है और यहाँ पर गेंद अपनी रफ्तार को खोते हुए लॉन्ग ऑफ फील्डर के द्वारा लपक ली गई सीमा रेखा के अंदर बेहतर तरीके से. और यहाँ पर इसी के साथ पुनीत का विकेट गिर चुका है 0 पर और पहला विकेट खो चुका है यहाँ पर गुड डे बुल्स 1 रन के ऊपर. इट्स 1 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट. नए बल्लेबाज सुनील इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए इस मेगा श्रृंखला के अंतर्गत 12वां मैच इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत यहां पर खेला जाता हुआ एपीएल सीजन 5 अत्तावर प्रीमियर लीग सीजन 5 2024 के अंतर्गत. और गेंदबाज की गेंद बेहतर खूबसूरत स्ट्रोक कवर पॉइंट पर मिसफील्ड वहां पर और इस मिसफील्ड का फायदा उठाकर बल्लेबाज 1 रन दौड़कर यहां पर पूर्ण कर चुके हैं. बेहतर गेंदबाजी का प्रदर्शन जारी रखते हुए गेंदबाज धनुष यहां पर और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 2 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर. अक्षय बैक ऑन स्ट्राइक और 2 गेंदें इस ओवर में बाकी. 2 balls लेफ्ट इन दिस ओवर. पावर प्ले इज नाउ ऑन. 1 and only पावर प्ले इज नाउ ऑन. और गेंदबाज ये गेंद अक्षय के लिए बेहतर गेंद. फैंटास्टिक डिलीवरी फ्रॉम धनुष. इट वेंट जस्ट वाइड ऑफ द ऑफ स्टंप. द लास्ट मोमेंट द बैट्समैन सर्वाइव्ड इन दिस ओकेजन. और स्कोर रुक चुका है इस वक्त 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर. अंतिम बार इस ओवर में धनुष गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट धनुष के लिए. ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप से काफी बाहर, वाइड का इशारा
एक रन का इजाफा और एक रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 3 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर 3 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। और इस ओवर में अंतिम बार इस वक्त धनुष गेंदबाजी करते हुए अक्षय के लिए यह गेंद लेग स्टंप से बाहर और गेंद फाइन निकल चुकी है। इस वक्त फाइन लेग फील्डर का गेंद का पीछा करते हैं लेकिन गेंद को रोकने में असफल। वाइड 1+4 5 वाइड्स एडेड टू द टोटल 5 गिफ्टेड रन तोहफे के रूप में 5 रन प्रदान कर चुके हैं। लेग स्टंप से काफी बाहर की ओर गेंद इस वक्त उन्होंने फेंके थे। हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले। देखिए विकेट कीपर के पहुंच से बाहर और 5 रन इस वक्त अतिरिक्त के रूप में तोहफे के रूप में प्रदान कर चुके गेंदबाज धनुष। 8 रनों पर स्कोरबोर्ड पहुंच चुका 1 विकेट के नुकसान पर। अंतिम गेंद लास्ट टाइम इन दिस ओवर धनुष कम्स टू अक्षय। यह गेंद अक्षय के नो बॉल। इस बार गेंद को खेल दिया मिड विकेट पर 1 रन का इजाफा। Not connected that one properly, but he got a single for that stroke. 9 for the loss of 1 wicket. 10 in fact, 10 for the loss of 1 wicket. और फ्री हिट गेंद इस वक्त बल्लेबाज के लिए। फ्री हिट डिलीवरी फॉर द बैट्समैन। और देखना ये है कि सुनील जो बल्लेबाज है इस फ्री हिट का किस तरह से फायदा उठा पाते हैं। धनुष गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट। यह गेंद फुल टॉस पुल किया इस वक्त हवे में जरूर लेकिन फ्री हिट गेंद है। बल्लेबाज आउट नहीं हो सकते। इस बीच 1 रन बल्लेबाज को मिला और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 11 रनों पर। तो 1 विकेट खोने के बावजूद पहले ओवर के बाद एक बेहतर शुरुआत यहां पर कर चुका है गुड डे बुल्स। 11 रन छोड़ चुका है 1 विकेट के नुकसान पर। 11 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट scored by Good Day Bulls, chasing the victory target of 21 in 1 over, 21 in 4 overs. Except they lost their 1 wicket in the first over, they managed to make a good start. 11 for the loss of 1 wicket after first over. 10 runs required in remaining 3 overs. The equation seems to be a much easier for them at this situation. शाम का वक्त रोशनी मैदान पर काफी हद तक कम हो चुकी है। लगभग अंधेरा सा छाता हुआ शाम के 6:40 यहां पर बच चुके हैं। इट्स ऑलरेडी 40 इन द इवनिंग और निस्संदेह धीरे धीरे अंधेरा सा इस मैदान पर छाता हुआ। और इसलिए मैं दरख्वास्त रिक्वेस्ट करता हूं दोनों टीम के खिलाड़ियों से कि कृपया जल्द से जल्द मैच को आगे बढ़ाएं। प्लीज कंटिन्यू द मैच इमीडिएटली फॉर आई रिक्वेस्ट द प्लेयर्स। अविनाश ब्रॉट इनटू द अटैक। फर्स्ट बॉल ऑफ हिज फ्रेश ओवर कम्स। दाहिने हाथ ओवर द विकेट। यह गेंद उछाला लो बॉल पर और 6 रनों के लिए फैंटास्टिक स्ट्राइक। Exquisite timings, got that one right from the middle of the bat and lofted that one in a style over long on fence for a massive one. Absolutely fantastic strike. 17 now, just 4 more runs required. और गेंदबाज इस वक्त तैयार। अविनाश lofted, this time chance for the long off feeder and he took the catch successfully. मैच को जल्द से जल्द समाप्त करना चाहता लेकिन इस बार नॉट क्वाइट मिड विकेट और लॉन्ग ऑफ फील्डर ने कोई गलती नहीं की। तो एक बेहतर पारी पर पर्दा गिर चुका है सुनील का। ही स्कोर 8 runs in just 4 deliveries with a strike rate of exactly 200 and a second wicket lost for Good Day Bulls. It's 17 for the loss of 2 wickets. So 4 runs required for victory. और गेंदबाज अविनाश इस वक्त नए बल्लेबाज ऑलविन जो कि एक और बाएं हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार अविनाश की गेंदों का। 16 गेंदें बाकी, सिर्फ 4 रन चाहिए विजय के लिए। और अविनाश इस बार खूबसूरती के साथ ऑफ द टॉस गेंद को इस वक्त खेल दिया लॉन्ग ऑन पर ऑलविन ने 1 रन के लिए। और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका कुल मिलाकर 18 रनों पर। 18 for the loss of 2 wickets now. 3 to get from 15 deliveries. They are looking in a commanding situation. Good Day Bulls. और अविनाश फिर से एक बार गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर अराउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए अक्षय के लिए। Just gone for a mighty heave, not succeeded by Akshay. And a good delivery from the bowler. Again सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। Still 3 to get for victory. This time not quite mid wicket, but he got a single for that stroke. Long on feeder after it, and with that single, scoreboard moving up to 19 for the loss of 2 wickets. Just 2 to get now for victory. और अविनाश इस वक्त तैयार ऑलविन के लिए। ड्राइव किया, just waiting to the ball to come on to his bat, driven that one perfectly, turned to long on for a single, and with that single, the scores are now levelled. 2 overs completed. And 20 on the board.
And 2 wickets down. Just 1 run required from 2 overs now. With a record rate of exactly 0.50 runs per over. Half runs per over, in fact. And now it looks like just a formality is remaining in this match. So third over starts in the innings. पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार, सिर्फ 1 रन चाहिए विजय के लिए। ऑलविन सामना करने के लिए तैयार और गेंदबाज जो कि नया ओवर इस वक्त प्रारंभ करते हुए। पृथ्वी द बॉलर स्टार्ट्स अ फ्रेश प्रोसीडिंग्स और ऑलविन इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। फर्स्ट बॉल ऑफ हिज फ्रेश ओवर कम्स. Lofted, and he just finished the match in a style with a 6. Just drifting down the leg side, lofted that one perfectly. With one hand at the last moment, he lost his bat from his other hand, but he played the stroke with one hand. And that 6 brings a comfortable victory for Good Day Bulls against Veera Maruti. And with that comfortable victory by 8 wickets with more than 1.5 overs, that means 11 balls to spare, they back the complete point. So all 12 matches of the day number 1 of this prestigious tournament, APL, Attavara Premier League Season 5 2024 has been came to an end, and this tournament is now proudly presented by Sri Durga friends. Now tomorrow will be the second and final day of this cricket tournament, and the first match of tomorrow will going to start at exactly 8:30 a.m. And till then we're saying a goodbye right from our commentator box. Myself Gopi and my co-partner, my dearest friend Satish, right from our commentary box, along with the scorer Ratish and all 3 umpires, Mr. Roland Pinto, Mr. Suresh Mudabidri, as well as Mr. Nasir Bajal. So, man of the match of this match award goes to Sunil, who scored 8 valuable runs, and he picked up 1 wicket, conceding 3 runs from 1 over. I request Mr. Sunil of Good Day Bulls, please come on to the stage and receive the man of the match award from the organizers. Sunil of Good Day Bulls, please to be reported here to receive the man of the match award from organizer. So that's it for the day. Number 1 of this prestigious cricket tournament, APL, Attavara Premier League Season 5 2024. We'll be back right on tomorrow morning, exactly at 8:30 a.m. Till then, we are saying a goodbye right from our commentator box. Thank you. Dhanyavad.